Controlling air pollution. What is air pollution? In simple words, pollution means to contaminate, to degrade the quality and cause adverse effect on the environment or human beings. Pollution can be of different types: air, water, soil, noise, and radioactive pollution. Definition: air pollution can be defined as the change in the physical and chemical quality of the air which causes a negative effect on humans and the environment. The major sources of pollution in today's world are the industries of various types and vehicles. However, there are various other sources that contribute to air pollution, like burning of garbage, brick kilns, forest fire, construction work, etc. Air pollution from burning of fuel wood. Domestic combustion is a source of air pollution in the rural areas of developing countries like India, where fuel wood is used for burning the chula. The burning of wood is currently the largest use of energy derived from a solid fuel biomass. Wood fuel can be used for cooking and heating. Environmental impact of burning fuel wood. Let us discuss the environmental impacts of burning fuel wood. It can be summarized as following. The heavy removal of wood from forest can cause loss of habitat for flora and fauna, affects biodiversity of the area. Deforestation for fuel wood cause soil erosion. Burning of wood release carbon dioxide, which is a greenhouse gas, into the atmosphere, resulting in global warming. Inefficient and incomplete combustion of wood can result in elevated levels of greenhouse gases other than carbon dioxide, which may result in positive emissions where the byproducts have greater carbon dioxide equivalent values. Burning of fuel wood releases oxides of sulfur and nitrogen, which interact with atmospheric moisture to cause acid rain. Cutting down trees for fuel wood disturbs the water cycle and reduces the amount of rainfall. Temperature of the place rises as there are less or no trees that cool the surroundings by the process of transpiration and also by absorbing carbon dioxide. The instance of flood increases as there are no trees that help in percolation of water. The groundwater level decreases because of the absence of trees, and also there is decreases the soil moisture. Scarcity of forest products deteriorate the economy of the people dependent on it. Effect of burning fuel wood on the health of rural women. Burning fuel wood is considered as health hazard for the rural women who are exposed for a long period of time to the smoke and particulate matter released. Following are the health effects on the health of rural women. Wood combustion products can include toxic and carcinogenic substances which may cause cancer of lungs. Particulate air pollution can contribute to human health problems and increased hospital admissions for asthma and diseases. The smoke evolved cause irritation and redness of eyes. Can also cause cataract in long run. Alternatives to fuel wood. Use of efficient wood stoves which use dried wood and animal dung or cow dung cakes. Use of biogas is another effective alternative to fuel wood. The sludge residue can be used as manure in the agricultural fields. Solar cooker can also be encouraged. Use of pellets made of cow dung, sawdust or waste from the saw milling can reduce the dependence on fuel wood. Rice husk pellets can also be used. Use of kerosene rationed by the government may also help to reduce the uses of fuel wood. Pellet made from oil cakes, corn or wheat can be another substitute for fuel wood. Bagasse briquettes are in high demand in the market for its features as eco-friendly and renewable energy fuel.
These briquettes are economical and cheaper than other solid fuels, that is coal and wood. In addition to this, these are pollution free because there is no release of sulfur or any hazardous material. Air pollution from industries. As said earlier, industries are one of the major contributors to air pollution. They not only release gases that affect the environment but also release toxic gases and particulate matter. They contribute to health problems like chronic bronchitis, asthma, emphysema, and may even cause death. Bhopal gas tragedy is an industrial accident which released gaseous pollutant MIC, that is methyl isocyanates, turned fatal to as many as 30,000 people. Besides, air pollutants damage material like leather, corrode metals, discolor paints, and interference with photosynthesis. Taj Mahal and many other monuments have been damaged due to acid rain. There is a great depth of data on concentration of air pollutants emitted by individual industries. This is due to lack of proper air quality monitoring equipments and in prohibitive cost. It is a great idea to incorporate the monitoring equipments into the process in the design stage itself. The pollutants can be divided into two categories. First, gaseous pollutants. Second, suspended particulate matter, that is SPM. The gaseous pollutants released by the industries vary according to the type of industry. Major polluting gases are carbon dioxide, carbon monoxide, oxides of sulfur and nitrogen, hydrocarbons, etc. Almost 10% of the man-made air pollutants exist in the form of particles. The particle size may be as low as 0.001 micron for fumes and as high as 1000 microns for grinding operations. Particulate matter is a health hazard to lungs, reduce visibility, and solar radiation. Control of particulate pollutants. The control of particulate depend on a number of factors such as size of particle, that is particle size, physical and chemical properties, concentration and volume of particle, the temperature and humidity of gaseous medium in which particulates are present. Technological measures to control air pollution. Depending on the size of the particles, their weight and distribution in the gas, different devices may be employed to control air pollution. First is preliminary separation of coarse particles that can be achieved by slowing down the velocity of the effluent gases and changing their direction of flow on plates or channels. Second, gravity settling chambers slows down the flow of gases so that the particles can settle down. Now, this figure 1.1 shows a simplified representation of a gravity settling chamber. The stream of gas containing particles enters the chamber from one end and flows horizontally at small velocity, usually between 1 to 2 meters per second, to enable the settlement of particles by gravity. Advantages: low initial cost, low maintenance cost, easy to design and operate. Disadvantages: requires large space, only large particles can be separated, particle collection efficiency is low. Second method is bag filters or bag house. In industries such as cement plant, ore, stone crushing units, mining industries, dust is generated and thrown into the atmosphere. To control the dust generated, a common arrangement of vertical tubular bag filter, that is fabric type dust collector, is used. The dust bearing gas is intercepted by a permeable fabric in such a manner that the gas passes through the fabric while the dust particles are restrained on the fabric. The separation of particles happens on the external surface of filters.
Cyclone filters or cyclone separators. Cyclones are used to remove particles which have size within the range of 10 to 50 micrometer. It makes use of the centrifugal force for the separation of particles. A tangential velocity is imparted to the gas by tangential entry or by vanes, which convert the axial into spiral flow. The particle strikes the wall of the cylindrical cyclone body and exits through the narrow conical exit. The particles fall down due to the force of gravity and the clean air flow out through the gas outlet tube. Advantages of cyclone filters. Efficiency is 90% for particles of 10 micron and 95% for 20 microns. Widely used in cement industry. Disadvantages. Used only for high dust loads. Need continuous electric power. Third measure is wet scrubber. In wet scrubber, flue gas is made to push up against a downcoming, that is water, liquid counter current. It is used to control the acidic gases. The polluted gas stream is sprayed within the lime water to neutralize the acid gas. The gas is passed through the moisture absorber. The dry gas is free from the acidic gases. The inlet also has a filter to trap the SPM. Advantages. Low capital cost. Require less space. Can be used for both gaseous and particulate pollutants. It can remove acidic corrosive gases, capable of handling high temperature and moisture. Disadvantages. High maintenance cost, more pressure drop, high pressure requirements. Electrostatic precipitator. Electrostatic precipitators work on the principle of charging the solid particles suspended in the gas. Flue gas is made to pass through a high ionized zone where the particles get electrically charged and are separated out from the gas by electrostatic field effect. The particles stick to the oppositely charged metal plates. Knocking on these plates make the particles fall into the hopper tray. They are highly efficient and capable of separating particle sizes as low as 0.05 microns. It is capable of handling very large volumetric flow. Advantages. Low pressure drop, low maintenance cost, high efficient for trapping the fine dust particles, consumes less energy as it imparts only charges to the dust particles, can handle large amount of dust particles. Disadvantages. High capital cost, large space requirement, energy efficient devices. The industries use large amount of energy to power their manufacturing processes. Let us study some examples how the industries save energy. Various industries generate steam and electricity for use within their facilities. When electricity is generated, the heat that is produced as a byproduct. This heat can be captured and used for process steam, heating or other industrial processes. Advanced boilers and furnaces can operate at high temperatures while burning less fuel. Motor coils made of superconducting materials can also reduce energy losses. Proper maintenance of the machines and the devices saves energy. Star energy appliances use less energy. Clean technologies. Clean technology is a general term for technology that aims to reduce reliance on non-renewable resources and promote sustainability. For example, switching an energy sources from coal or other fossil fuels to something like solar, wind or hydropower could be described as clean technology initiative. Clean technologies include the use of recycling, use of renewable energy, green transportation, green chemistry, etc.
Clean technology represents a diverse range of products, services, and processes, all intended to first, provide superior performance at lower cost while greatly reducing or eliminating negative ecological impact at the same time as improving the productive and responsible use of natural resources. Biogas. Biogas, typically referred to as a gas produced by the breakdown of organic matter in the absence of oxygen. It is an eco-friendly biofuel. Biogas is produced by fermentation of biodegradable materials such as cow dung, sewage, plant waste, crop, etc. Biogas comprises mainly of methane, carbon dioxide, and may have a small amount of hydrogen sulfide. Biogas is one of the alternative renewable sources of energy. Production of biogas. Cow dung is mixed with water to form a slurry and introduced into the digester tank and allowed to ferment with the help of microorganisms under anaerobic conditions. This results in the breakdown of the organic matter, thereby releasing biogas. The gas is released through the outlet pipe and stored or directly used in the chula in rural houses. The residue is removed after the formation of gas stops. This residue can be used as a biomanure. Advantages of using biogas. It is low cost, eco-friendly, non-polluting fuel. The raw material is easily available in rural areas. Conserves and reduces dependence on fossil fuel. Reduces the use of firewood in rural areas. Converts waste organic matter into a useful product. The gas produced has a good calorific value and can be used for burning chula. Produces enriched organic manure which can supplement or even replace chemical fertilizers. Saves women and children from drudgery of collection and carrying of firewood, exposure to smoke in the kitchen, and time consumed for cooking and cleaning of utensils. Disadvantages. Not feasible at all the locations, especially in the urban areas. The process is not very attractive economically as compared to other biofuels on a large industrial scale. It is very difficult to ensure the efficiency of biogas systems. Biogas contains some gases as impurities which are corrosive to the metal part of internal combustion engines. Solar energy. It is the energy of the sun that sustains all life on earth. Harnessing the light and heat of sun using ever-evolving technologies is called solar energy. It is a renewable form of energy. Solar power is the conversion of sunlight into electricity either directly using photovoltaic cells or indirectly using concentrated solar power, that is CSP. It can be used for working of devices like water heaters, solar cookers, electricity production, and street lighting. Lenses or mirrors are used to focus the sun's light into the device to produce heat. This is the working principle of above mentioned devices. A solar cell or photovoltaic cell is a device that converts light into electric current using the photoelectric effect. The first solar cell was constructed by Charles Fritz in 1880s. The photovoltaic cells are used to light up the street lamps. Advantages. It is a renewable source of energy. Helps in conservation of non-renewable fossil fuel. Non-polluting source of energy. Once the installation cost is met, the energy production is free of cost. Reduces the electricity consumption cost of the household. Transmission cost reduces as electricity is consumed at the place of production itself.
more affordable than fossil fuel. Disadvantages: initial cost of equipment and installation is high. There can be shortage of space for installing large solar panels for electricity generation. Solar energy storage technology has not reached its potential yet. It works well only when the sun is shining. When there is no solar energy to be collected, you will have to have adequate battery backup to get you through these nights and rainy days. Solar panels do not work well in warm temperatures. Solar panels degrade with time. Wind energy. The energy obtained from the wind is called wind energy. Wind power is the conversion of wind energy into useful form of energy, such as using wind turbine to produce electricity or for mechanical power which can be used for pumping water. A wind farm is a group of wind turbines in the same location used for production of electricity. A large wind farm may consist of several hundred individual wind turbines distributed over an extended area. India too has started wind farm projects in Maharashtra, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh and some states. Advantages: consumes no fuel, emits no air pollution, no significant impact on environment. In other terms, it is eco-friendly source of energy, reduces the dependence on fossil fuel, saves fossil fuel. Once the installation cost is met with, the energy is free of cost, renewable source of energy. Disadvantages: wind farm need large area for installation, dependence on fast moving wind, hence cannot be set up at all places, may use valuable agricultural land, bird and bat mortality increases. Tidal energy. Tidal energy is a form of hydropower that converts the energy of tides into useful forms of power, mainly electricity. It is the energy produced by the rise and fall of ocean water, that is tides. It is a renewable source of energy and non-polluting source. Limitations. Limitations of tidal energy are its relatively high cost, limited availability of sites with sufficiently high tidal range or flow velocity, thus constricting its total availability. Tidal power can have effects on marine life because turbines can accidentally kill swimming sea life with the rotating blades. Advantages: renewable source of energy, non-polluting source of energy, saves fossil fuel. Geothermal energy. Geothermal is a thermal energy generated and stored in the earth. It is being used to generate geothermal power. Geothermal power is cost effective, reliable, sustainable and environmentally friendly. Meteorological control. The degree to which the air pollutants discharged from the different sources concentrate in a particular area depends largely on meteorological conditions. Even if the amount of pollutants discharged remains same, the degree of pollution may vary due to the meteorological conditions. The knowledge of dispersal theory and the local weather conditions is required to determine the stack height. Meteorological information is necessary to set up the future industries. On the humid day, sulfur dioxide is more corrosive. The variation of the horizontal wind speed with the height of the stack is important in evaluating the dispersal from the stack. The meteorological conditions that influence air pollution are as follows: wind direction and speed, temperature, atmospheric stability, precipitation, humidity, solar radiation. Just as weather affects the air pollution also affects the weather conditions in several ways. The behavior of plume emitted from any stack depends on localized air stability. The industries must be set up in such a way that plume does not move towards the city. This can be done if we know the direction of the wind. The release of air pollutants must be minimized on a cold winter night
which often cause smog. Smog is a mixture of smoke and fog which is usually formed in winter. The smog causes respiratory problem in humans and may sometimes lead to asphyxiation. Zoning strategy. Zoning is a land use planning practice common in most developing countries where land is assigned for particular land use. Zoning may include regulation of the kinds of activities which will be acceptable on particular land, such as open space, residential, agricultural, commercial or industrial. Proper planning and zoning of industrial and residential areas play an important role in controlling air pollution. Residential areas and the industry should not be close and a green belt must be planted in between. It has been found that certain trees like tamarind and mango are capable of absorbing gases and dust. Such trees can be planted in the green belt. While zoning the land, factors like direction, speed and frequency of wind and topography should be kept in mind. Certain smokeless zones in residential areas can be created. Penalties and subsidies. The Government of India has formulated laws to sustain a healthy environment. These laws helps the government to keep a check on the polluting industries and also provide ambient air quality standard and emission standards. The Air Prevention and Control of Pollution Act 1981 of the Government of India came into force from May 16, 1981. The Act to provide for the prevention, control and abatement of air pollution. The Central Pollution Control Board and State Pollution Control Board have been constituted to look after the matter pertaining to it. The Central Pollution Control Board has notified the ambient air quality standard for major parameters like SPM, sulfur dioxide, carbon dioxide and nitrogen dioxide. The failure to comply with the specific provisions of the Act attract penalties. The court at district level and high courts are the courts where offences can be tried on written complaint by the Pollution Control Board. The violation may lead to fine or cancellation of license or even imprisonment. The government also provides subsidies in form of financial support by the government for activities believed to be eco-friendly. Subsidies include grants, low interest loans, favorable tax treatment. Numerous states offer favorable tax treatment for the construction and installation of pollution control equipment. Case study: the Taj Trapezium. The beauty of Taj Mahal, one of the wonder of the world, is threatened by the gaseous pollutions or the gaseous pollutants emitted by 512 industries surrounding it. Effect of acid rain on Taj Mahal. The gaseous pollutants result in the formation of acid rain, which is responsible for the yellowing of the Taj Mahal and even cracking and chipping of its marbles. The Taj Trapezium Zone, that is TTZ, is a defined area of 10,400 square kilometer around the Taj Mahal to protect the monument from pollution. The TTZ comprises over 40 protected monuments including 3 World Heritage Sites, the Taj Mahal, Agra Fort and Fatehpur Sikri. TTZ is so named since it is located around the Taj Mahal and is shaped like a trapezoid. Court of India delivered a ruling on December 30, 1996 regarding industries covered under the TTZ in response to a PIL seeking to protect the Taj Mahal from environmental pollution. Number 1. It banned the use of coal or coke in industries located in the TTZ with a mandate for switching over from coal coke to natural gas. Number 2. Relocating them outside the TTZ or shutting down. 3. Creation of a green belt around the Taj Mahal.
The Mathura oil refinery located close to Agra is also said to be a major source of sulfur dioxide affecting the marble stones of Taj Mahal. The Mathura oil refinery on its part has taken up the following steps to reduce sulfur dioxide emission. First, use of only low sulfur fuel oil. Use of only low sulfur fuel oil in its furnaces and boilers. Installation of sulfur recovery unit and continuous improvement in its efficiency. State-of-art instruments for emission control and monitoring devices. Continued emphasis on energy conservation measures. The above measures taken by Mathura oil refinery have reduced the sulfur dioxide emission level to nearly 500 kg per hour, which is much under the stipulated limit of 700 kg per hour. Chapter name is Vehicle Emission Control. Now, the increase in population coupled with increase in the living standard has increased the number of vehicles on road. More automobile is required to transport goods and carry people. The number of vehicles per family has also increased. These are leading to an increase to vehicle pollution, which have a considerable effect on human being as well as on environment. जैसे जैसे human population बढ़ती जा रही है, वैसे ही लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ रहा है और उसी के साथ साथ रोड के ऊपर बहुत सारे व्हीकल्स आ गए हैं, चाहे वो 2 व्हीलर्स हो, 4 व्हीलर्स हो या हेवी व्हीकल्स हो, तो नंबर ऑफ व्हीकल्स पर फैमिली भी बढ़ गए हैं. इसी वजह से पोल्यूशन भी, जो व्हीकल एमिशन पोल्यूशन है, वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है. नाउ नेक्स्ट इज पॉल्यूटेंट्स. एनवायरमेंटल पोल्यूशन बाय व्हीकल इज कॉज्ड ड्यू टू टेल पाइप एमिशन. नाउ व्हाट इज टेल पाइप? टेल पाइप इज अ रियर सेक्शन ऑफ द एग्जॉस्ट पाइप ऑफ अ मोटर व्हीकल. हमारे मोटर व्हीकल में जो पीछे की तरफ एक पाइप जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, जिससे कि जो फॉसिल फ्यूल यानी कि डीजल पेट्रोल जब बर्न होता है तो वो एमिट होता है. द मेन गैसेस रिलीज्ड आर, अब जो मेन गैसेस रिलीज होती हैं फॉसिल फ्यूल के कंबशन से, वो है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज VOC, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड, SPM, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर. वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो गैसेस होती हैं दैट आर एमिटेड इनटू द एयर फ्रॉम प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस. जब भी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है या जब भी कोई प्रोसेस होती है, जैसे ये एमिशन की प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस में वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिलीज होते हैं एंड सम आर हार्मफुल बाय देमसेल्व्स इंक्लूडिंग सम दैट कॉज कैंसर. इसमें से कुछ ऐसे वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं जो कैंसरस होते हैं and they also react with other gases and form other air pollutants and they are suspended in the air. Now coming to the effects of pollutants, the oxides of sulfur and nitrogen cause acid rain. जैसा कि हमको पता है कि acid rain का जो formation होता है उसका main reason होता है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, जिसमें सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स रिलीज होते हैं and inhalation of such particles may cause worsened respiratory diseases such as emphysema and bronchitis. कुछ ऐसी critical respiratory diseases भी हो सकती हैं जब हम इन ऑक्साइड्स को, सल्फर के और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को इनहेल करते हैं. Volatile organic compounds are the primary ingredient in smog. जो smog है उसमें जो main ingredient या जो main compounds होते हैं वो volatile organic compounds होते हैं. Carbon dioxide is a greenhouse gas and responsible for climate change. जैसे कि हमको पता है कि carbon dioxide is a major greenhouse gas and it is responsible for the climate change, global warming, increase in the temperature. Carbon monoxide combined with hemoglobin, जो हमारे blood में red pigment होता है which is due to the hemoglobin, वो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे blood में जब हम inhale करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को, तो वो हमारे blood में combine हो जाता है और हमारे जो hemoglobin part है उससे वो join हो जाता है and cause carbon monoxide poisoning which is often fatal. इस प्रोसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन से मिक्स होता है तो एक पॉइजनस कंपाउंड बना देता है जो कि फेटल होता है, यानी कि बहुत ही डेंजरस होता है. द हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ इनहेलिंग एयरबॉर्न पार्टिकुलेट मैटर इंक्लूड एस्थमा, लंग कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज एंड प्रीमेच्योर डेथ. लेड अटैक्स द ब्लड, kidney,
and central nervous system. It can cause anemia, kidney failure, permanent brain damage and finally death also. जो पेट्रोल में लेड होता है वो हमारे ब्लड में किडनी को अटैक करता है, ब्लड सेल्स को अटैक करता है और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी अटैक करता है और जिसकी वजह से एनीमिया हो सकता है. एनीमिया का मतलब होता है जब हमारे ब्लड से आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड कार्पसेस की कमी हो जाती है, किडनी फेलियर हो जाता है, परमानेंट ब्रेन डैमेज भी हो सकता है और इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पेट्रोकेमिकल स्मॉग. पेट्रोकेमिकल स्मॉग को समर स्मॉग भी कहते हैं एंड इट इज अ टाइप ऑफ स्मॉग दैट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सन इंटरैक्ट्स विद द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. Now, petrochemical smog is a lower atmospheric air pollutant found in urban and high industrial area. ये थोड़ा low level पर pollutants जो हैं atmosphere में जो air suspended pollutants होते हैं वो दिखाई देते हैं और ये urban area या जो बहुत ही industrial dense industrial area होते हैं वहां पर ये phenomena पाया जाता है. And it is caused by reaction between sunlight, nitrogen oxide and volatile organic compound इन द एटमॉस्फेयर. अब ये पेट्रोकेमिकल स्मोक किस तरह से क्रिएट होता है? जब सनलाइट, दिन के समय जब बहुत सनलाइट होती है, समर टाइम में हम कह सकते हैं कि जब बहुत गर्मी होती है तो सनलाइट और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं ऑटोमोबाइल एग्जॉस्शन से निकलते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो एटमॉस्फेयर में होते हैं, इन सब की रिएक्शन होती है और कंबाइंड करके ये पेट्रोकेमिकल स्मोक बनाते हैं. And nitrogen oxide is released by the exhaust of automobile, thermal power plant and industries. Volatile compounds जो होते हैं they are vapor released from the auto exhaust, paint, solvents, pesticides. So this phenomena is known as petrochemical smog. ये जो petrochemical smog है एक ये बहुत ही complex कह सकते हैं कि सीरीज होती है of chemical reactions जिसमें sunlight, oxides of nitrogen और volatile organic compounds जो atmosphere में होते हैं वो mix हो जाते हैं और जो air pollution को क्रिएट करते हैं. Now next is Asia brown haze. The Indian Ocean brown cloud और Asian brown haze, इसको हम Asia brown haze को Indian Ocean brown cloud भी कहते हैं और Asian brown haze भी कहते हैं. And it is a layer of air pollution that recently covers parts of South Asia. South Asia के जो कुछ parts हैं जैसे कि Northern Indian Ocean है, India है, पाकिस्तान है, इसको ये cover करती है. And when viewed from satellite, जब हम सैटेलाइट से देखते हैं तो द क्लाउड अपीयर्स एज अ जाइंट ब्राउन स्टेन हैंगिंग इन द एयर ओवर लार्ज पार्ट ऑफ साउथ एशिया एंड द इंडियन ओशन एवरी ईयर बिटवीन जनवरी एंड मार्च. जब हम सैटेलाइट इमेजेस देखते हैं तो हमको जो हमारा नॉर्दर्न इंडियन ओशन पार्ट है, इंडिया पाकिस्तान वाला जो पूरा पार्ट है, साउथ एशिया वाला, वहां पर हमको एक बहुत ही जाइंट ब्राउन क्लाउड टाइप का एक स्ट्रक्चर दिखता है अगर हम सैटेलाइट इमेजेस देखें. और ये नॉर्मली जनवरी और मार्च के बीच में एशियन ब्राउन हेज ये इस तरह का फिनोमेना क्रिएट होता है. द एशियन ब्राउन क्लाउड इज क्रिएटेड बाय एयरबॉर्न पार्टिकल्स एंड पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम कंबशन, दैट इज फ्यूल वुड, कार एंड फैक्ट्रीज, बायोमास बर्निंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस विद इनकम्प्लीट बर्निंग. बट द मेन कॉजेज फॉर दिस क्लाउड इज मेनली द डोमेस्टिक वुड एंड डंग फायर प्लस स्मोक फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट एंड फील्ड्स फॉर एग्रीकल्चर. Aerosols consisting of sulfates, aerosols जिसमें sulfates होते हैं, nitrates होते हैं, black carbon है and hundreds of organic compounds, fly ash when absorbed sunlight and scattered creates a brown colored haze. तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि जब सनलाइट होती है, जब बहुत ही गर्मी होती है, सनलाइट में जो एरोसोल्स होते हैं जिसमें सल्फेट्स होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, ब्लैक कार्बन होता है और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, फ्लाई ऐश भी होता है. जब ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो ये स्कैटर्ड हो जाते हैं और एक बहुत बड़ा सा क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और इसी को एशियन ब्राउन हेज कहते हैं. नाउ कमिंग टू द इफेक्ट्स ऑफ एशियन ब्राउन हेज, मिलियंस ऑफ पीपल गेट अफेक्टेड. देयर इज एन इंक्रीज
increase in cardiovascular effects, pulmonary illness and chronic respiratory problems. तो इसकी वजह से बहुत लोग में कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, पल्मोनरी इलनेस हो सकती है या बहुत ही क्रॉनिक या एक्यूट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. एंड दिस एशियन ब्राउन हेज किल्स मेनी पीपल इन अ ईयर. इसकी वजह से बहुत सारे लोग उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है. एंड चेंज इन रेनफॉल पैटर्न कॉजिंग वीकनिंग मॉनसून इन इंडिया एंड ड्रॉट कंडीशन इन चाइना. इसकी वजह से रेनफॉल पैटर्न में चेंजेस होते हैं. जैसे हम कह सकते हैं कि मॉनसून वीक हो जाता है इंडिया में और चाइना में ड्रॉट भी हो सकता है, सूखा भी पड़ जाता है. तो इस तरह की कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं. नाउ जस्ट बिकॉज ऑफ द एशियन ब्राउन हेज इट कॉज ग्लोबल वार्मिंग एज इट ट्रैप्स द ग्रीन हाउस गैसेज. जो मेजर ग्रीन हाउस गैसेज हैं, बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, पर कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन और सल्फेट के ऑक्साइड्स हैं. ये सारी चीजें उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी हो जाती है, क्योंकि एशियन ब्राउन हेज में जो क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेज भी ट्रैप हो जाती हैं. इंक्रीज इन द टेम्परेचर विच इज कॉजिंग द मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर. इस एशियन ब्राउन हेज की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हिमालय के जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो जाते हैं. दिस एशियन ब्राउन हेज ऑल्सो रिड्यूसेस फोटोसिंथेसिस दैट डिक्रीज द क्रॉप यील्ड. फोटोसिंथेसिस कम हो जाती है क्योंकि सनलाइट जो है, फोटोसिंथेसिस एक फिनोमिना है जहां पर प्लांट्स अपने फूड को मैन्युफैक्चर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो इनका फूड फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है वो कम हो जाती है और इसकी वजह से जो क्रॉप यील्ड है या जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है. जितनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी उतनी ही ज्यादा क्रॉप यील्ड होगी या उस क्रॉप की प्रोडक्टिविटी होगी. एंड दिस एशियन ब्राउन हेज ऑल्सो क्रिएट्स एसिड रेन. इसकी वजह से एसिड रेन भी हो जाता है क्योंकि नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एयर में, एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर होता है उससे रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं. नाउ नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल ऑप्शंस फॉर रिड्यूसिंग व्हीकुलर पॉल्यूशन. अब कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल ऑप्शंस हैं हमारे पास जिससे हम अब व्हीकल पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं. तो बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल ऑप्शंस हैं. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस आ गए हैं जिससे हम व्हीकुलर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं. अब जैसे कि मॉडिफिकेशन इन इंजन डिजाइन, जो हमारे कंटेम्प्रेरी इंजन थे उनकी डिजाइन में हम अगर मॉडिफाई कर दें, मॉडिफिकेशन कर दें तो भी एयर पॉल्यूशन या व्हीकुलर पॉल्यूशन कम हो सकता है. एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन, जो गैस एग्जॉस्ट हो रही है, एमिट हो रही है, अगर हम उसको रीसर्कुलेट कर दें तो इसकी वजह से भी व्हीकुलर पॉल्यूशन रिड्यूस हो सकता है. कैटालिटिक कन्वर्टर को हम यूज करें या यूज ऑफ पार्टिकल ट्रैप्स, इनको भी अगर हम यूज करें. यूज ऑफ अनलेडेड गैसोलीन है, यूज ऑफ लो सल्फर डीजल है, यूज ऑफ लो स्मोक ल्यूब ऑयल फॉर टू स्ट्रोक एंड मिक्स लुब्रिकेटिंग इंजन है. यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव एंड क्लीनर फ्यूल्स. क्लीनर फ्यूल्स मतलब कि जो हमारे सीएनजी हैं, एलपीजी हैं या मेथनॉल हैं, अगर हम इनको यूज करें इन द प्लेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल तो भी हम व्हीकुलर पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं. एंड एडॉप्टिंग स्ट्रिक्टर एमिशन स्टैंडर्ड, हम बहुत ही स्ट्रिक्ट एमिशन स्टैंडर्ड्स को अगर हम अडॉप्ट करें. एंड रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेशन, जो ट्रैफिक जैम है विच इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन मोस्ट ऑफ द सिटीज, अगर हम उस ट्रैफिक कंजेशन को रिड्यूस करें तो हम व्हीकुलर पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज मॉडिफाइंग इंजन डिजाइन, जो अभी हमने यहाँ पे बात की कि ये भी एक टेक्नोलॉजिकल ऑप्शन है कि हम इंजन डिजाइन को मॉडिफाई कर सकते हैं. कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं? अ कैटालिटिक कन्वर्टर इज अ डिवाइस दैट यूजेस अ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट बेसिकली वो अगर हम केमिस्ट्री में बात करें तो कैटलिस्ट वो केमिकल्स होते हैं which can enhance or which can increase the rate of reaction and they remain unchanged after the completion of reaction and they are needed in a small amount. तो इसी तरह से हम कुछ इस तरह के कैटलिस्ट को यूज कर सकते हैं to convert 3 harmful compounds in car exhaust into harmless compounds. तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि कौन से हार्मफुल कंपाउंड्स को हम हार्मलेस कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं by the use of catalyst. Now these are the 3 harmful compounds which are hydrocarbons, carbon monoxide and nitrogen oxides. Now there are 3 harmful compounds: hydrocarbons, carbon monoxide and nitrogen oxide.
So in a catalytic converter, the catalyst in the form of platinum and palladium, catalyst हम किस तरह के यूज कर सकते हैं, प्लैटिनम के फॉर्म में यूज कर सकते हैं या पैलेडियम के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, and is coated onto a ceramic honeycomb or ceramic beads that are housed in a muffler like package attached to the exhaust pipe. तो इस तरह से कुछ उन्होंने डिवाइस बनाई है यहाँ पे कि जो हनीकॉम्ब या सिरामिक बीड्स के फॉर्म में हम इनको यूज कर सकते हैं, और ये जो कैटलिस्ट होते हैं इसको एक मफलर की तरह हम एग्जॉस्ट पाइप के ऊपर हम अटैच कर सकते हैं, एंड द कैटलिस्ट हेल्प टू कन्वर्ट. अब कैटलिस्ट का रोल क्या होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा, एंड इट कन्वर्ट्स द हाइड्रोकार्बन्स, जो हाइड्रोकार्बन्स यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं उसको ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट करेगा, and it also converts the nitrogen oxide back into the nitrogen and oxide. तो यहाँ पर हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जब भी ऑटोमोबाइल एग्जॉशन या ऑटोमोबाइल एमिशन होता है तो 3 हार्मफुल कंपाउंड्स रिलीज होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड. तो ये जो कैटलिस्ट है जो हम पैलेडियम या प्लैटिनम के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, वो क्या करते हैं कि इन हाइड्रोकार्बन्स को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसके बाद जो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो वापस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो इस तरह से कैटालिटिक कन्वर्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर. नाउ कमिंग टू द 4 स्ट्रोक इंजन विच इज ऑल्सो नोन एज 4 साइकिल. अब 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है कि एक सिंगल थर्मोडायनेमिक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 4 डिफरेंट स्ट्रोक्स होते हैं, और ये कौन कौन से स्ट्रोक्स होते हैं. द 4 स्ट्रोक साइकिल यूज्ड इन गैसोलीन पेट्रोल इंजन आर इनटेक, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट. इन अदर वर्ड्स, अ 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन इज एन internal combustion engine that utilizes 4 distinct piston stroke, that is intake, compression, power and exhaust, to complete one operating cycle. And these engines are eco-friendly because they are fuel efficient, thus save energy and they cause less pollution. और जो इस तरह के 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं वो इको फ्रेंडली होते हैं. किस तरह से इको फ्रेंडली होते हैं कि ये फ्यूल एफिशिएंट होते हैं, एनर्जी सेव करते हैं और पॉल्यूशन को, एयर पॉल्यूशन को कम करते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्लीन फ्यूल्स, दैट इज ऑल्टरनेट फ्यूल्स. अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि इनकी डेफिनेशन क्या है. सो क्लीन फ्यूल्स आर नॉन कन्वेंशनल फ्यूल अदर देन कन्वेंशनल फ्यूल. तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कन्वेंशनल फ्यूल्स और नॉन कन्वेंशनल फ्यूल्स क्या होते हैं. जो हम फॉसिल फ्यूल्स यूज करते हैं, पेट्रोल है, डीजल है, ये कन्वेंशनल फ्यूल्स होते हैं क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी इनके ऊपर बहुत ज्यादा है. कन्वेंशनल फ्यूल्स यानी कि हम इनको ये भी कह सकते हैं कि ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं या नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स होते हैं कि अगर ये एक बार एग्जॉस्ट हो गए तो वी कैन नॉट गेट बैक विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. बट ऑन द अदर हैंड जो नॉन कन्वेंशनल फ्यूल्स होते हैं, नॉन कन्वेंशनल फ्यूल्स मतलब कि जो हम नॉर्मली यूज नहीं करते हैं, उनको अगर हम यूज करें, जैसे कि हाइड्रोजन है, नेचुरल गैस है, बायोफ्यूल्स हैं, न्यूक्लियर फ्यूल है, अगर हम इनको पेट्रोल और डीजल की जगह यूज करें एज एन ऑल्टरनेटिव, एज अ सोर्स ऑफ क्लीन फ्यूल, तो हम पॉल्यूशन को, एयर पॉल्यूशन को काफी हद तक कम कर सकते हैं. नाउ क्लीन फ्यूल इन व्हीकल हेल्प इन रिड्यूसिंग द vehicular air pollution through the promotion of lead free, low sulfur fuel and cleaner vehicle standards and technologies. अब ये जो क्लीन फ्यूल्स होते हैं वो व्हीकुलर पॉल्यूशन को किस तरह से कम कर सकते हैं, क्योंकि ये लेड फ्री होते हैं या बहुत ही मिनिमम लेड होता है, लो सल्फर फ्यूल्स होते हैं, इनके जो व्हीकल के स्टैंडर्ड्स हैं या टेक्नोलॉजीज हैं बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजीज होती हैं, क्लीन टेक्नोलॉजी होती है. द मोस्ट फेमिलियर ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल आर गैसोलीन एंड डीजल फ्यूल, बट एनी
नंबर ऑफ एनर्जी सोर्सेज आर केपेबल ऑफ पावरिंग मोटर व्हीकल्स। जो नॉर्मली हम यूज करते हैं उसके अलावा भी बहुत सारे एनर्जी सोर्सेज हैं जिनको हम मोटर व्हीकल्स में यूज कर सकते हैं। एल्कोहल, ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि नॉन कन्वेंशनल फ्यूल्स हैं। एल्कोहल्स, फ्यूल फ्रॉम बायोमास, बायोमास से जो फ्यूल मिल रहा है, बायोमास इलेक्ट्रिसिटी से, या नेचुरल गैस है, प्रोपेन है। इन जनरल दे प्रोड्यूस लेस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, लेड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम इनको इन अ नटशेल हम ये कह सकते हैं कि जो नॉन कन्वेंशनल फ्यूल्स हैं वो लो पॉल्यूटिंग होते हैं, एनर्जी सेवर होते हैं, फ्यूल एफिशिएंट होते हैं, इनमें हाइड्रोकार्बन्स बहुत कम रिलीज होते हैं, लेड बहुत कम रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम रिलीज होता है। A large variety of alternative fuel and additives have evolved as a choice to be used in the vehicles. Some of them are. अब यहाँ हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं और एडिटिव्स हैं। एडिटिव्स मतलब कि हम उनको दो फ्यूल्स का मिक्सचर भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये कौन कौन से इस तरह के ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं या एडिटिव्स हैं? सबसे पहले है ऑक्सी हाइड्रोजन, which is methane and methanol, burn effectively and are low polluting fuels. अब जैसे ऑक्सी हाइड्रोजन है, मीथेन है, मिथेनॉल है, ये बहुत ही एफिशिएंट होते हैं और लो पॉल्यूटिंग फ्यूल भी होते हैं। सेकेंड है हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन एज अ फ्यूल डज नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा कि हमको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक मेजर ग्रीन हाउस गैस है एंड इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कंबशन। जब फॉसिल फ्यूल का कंबशन होता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत रिलीज होती है, बट हाइड्रोजन में ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती एंड देयरफॉर डज नॉट कंट्रीब्यूट टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। अ हाइड्रोजन कार इज एन ऑटोमोबाइल विच यूजेस हाइड्रोजन as its primary source of power for locomotion, and these cars generally use the hydrogen is one of the two methods, combustion और फ्यूल सेल कन्वर्टर। अब यहाँ पे दो मेथड्स हम यूज कर सकते हैं, मतलब हाइड्रोजन को अगर हम यूज कर रहे हैं तो या तो उसका कंबशन कर सकते हैं या फ्यूल सेल कन्वर्जन एक टेक्निक होती है उसमें भी हम यूज कर सकते हैं। अब जैसे इन कंबशन द हाइड्रोजन इज बर्न इन इंजन्स is fundamentally the same method as traditional gasoline car। जैसे कि नॉर्मली हम कार में पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, तो उस तरह से उनकी बर्निंग होती है। तो जब हाइड्रोजन का कंबशन होता है तो वो उसी तरह से बर्न होता है। इन फ्यूल सेल कन्वर्जन द हाइड्रोजन इज टर्न इनटू इलेक्ट्रिसिटी थ्रू फ्यूल सेल विच देन पावर्स इलेक्ट्रिक मोटर्स। अब फ्यूल सेल कन्वर्जन में क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है, जो उसमें फ्यूल सेल्स होते हैं उसके थ्रू वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। एंड विद आइदर मेथड द ओनली बाय प्रोडक्ट फ्रॉम द स्पेंट हाइड्रोजन इज वाटर। हम हाइड्रोजन को दोनों में से किसी भी तरह से यूज करें, या तो उसका कंबशन करें या फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी यूज करें, तो जो भी बाय प्रोडक्ट या जो भी चीज लास्ट में बचती है वो क्या होता है? वाटर। नाउ होंडा इंट्रोड्यूस इट्स फ्यूल सेल व्हीकल। यहाँ पे ये बताया कि होंडा ने 1999 में एक फ्यूल सेल व्हीकल यूज किया था, उसको FCX का नाम दिया था। उसके बाद उन्होंने सेकेंड जनरेशन यूज की। BMW ने भी क्लीन एनर्जी इंटरनल कंबशन हाइड्रोजन कार इंट्रोड्यूस की है। Now next is the use of CNG. CNG as a clean technology reduces the emission of hydrocarbon. अगर हम CNG यूज कर रहे हैं तो हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब का एमिशन रिड्यूस हो जाता है एंड ट्रोपोस्फियर, ओजोन एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस, तो इनका एमिशन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। Now next is alcohol vegetable oil is being tried as cleaner fuel. तो एल्कोहल को, वेजिटेबल ऑयल को भी हम क्लीन फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इथेनॉल एंड मिथेनॉल हैव बीन यूज्ड एज एन ऑटोमोटिव फ्यूल व्हाइल बोथ कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। इथेनॉल हैज attracted more attention because it is considered a renewable source। क्योंकि मिथेनॉल और इथेनॉल रिन्यूएबल सोर्स हैं, इसीलिए इनकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। इजिली ऑब्टेन फ्रॉम शुगर और स्टार्च इन क्रॉप एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सच एज ग्रेन, शुगर केन, शुगर बीट्स और इवन लैक्टोज। सो सिंस इथेनॉल अकर्स इन नेचर whenever yeast happen to find a sugar solution such as overripe fruit, most organisms have evolved some tolerance to ethanol,
whereas methanol is toxic. तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे इथेनॉल जो है वो it is quite a safer option, and other experiments involve butanol. अब हम butanol भी use कर सकते हैं, which can also be produced by the fermentation of plants. Support for ethanol comes from the fact that it is a biomass fuel. इथेनॉल को हम इसीलिए भी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये बायोमास फ्यूल है, which addresses climate change and greenhouse gas emission. जो क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस गैस में को रिड्यूस करने में, क्लाइमेट चेंज के लिए और ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दो दीज बेनिफिट्स आर नाउ हाईली डिबेटेड, मतलब अभी भी इनके ऊपर एक डिबेट चल रही है, अभी भी एक दिस इज अ मैटर ऑफ डिबेट, शुड वी यूज इथेनॉल, मिथेनॉल और ब्यूटेनॉल और अदर बायोमास फ्यूल. नाउ इथेनॉल हैज अ हायर ऑक्टेन रेटिंग which is beneficial to high compression rate engine. Now next is biodiesel, that is fatty acid methyl ester, is commercially available in most oil seed producing state in United States as well as in India. As of 2005, it is somewhat more expensive than fossil diesel, though it is still commonly produced in relatively small quantities, that is in comparison to petroleum products and ethanol. So many farmers who raise oil seed use a biodiesel blend in tractor and equipment as a matter of policy to foster प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल एंड रेज पब्लिक अवेयरनेस. तो बहुत सारे फार्मर्स जो हैं वो बायोडीजल का यूज कर रहे हैं, एंड इट इज समटाइम्स इजियर टू फाइंड बायोडीजल इन रूरल एरियाज देन इन सिटीज. So biodiesel has low energy density than fossil diesel fuel. So biodiesel vehicles are not quite able to keep up with the fuel economy of fossil fuel diesel vehicles. So अभी भी इसके ऊपर एक research हो रही है. Now next is oxyhydrogen, is another fuel that can be used in existing internal combustion engine originally developed for using gasoline. Now this oxyhydrogen allows the engine to eliminate emission, though fuel energy is reduced rather than improved, since the energy required to split water exceeds the energy recouped by burning it. Next is liquid nitrogen car, and it is a method of storing energy. Energy is used to liquefy air, then LN2 is produced by evaporation and distributed. So LN2 is exposed to ambient heat in the car, and the resulting nitrogen gas can be used to power a piston or turbine engine. The maximum amount of energy that can be extracted, अब यहाँ पे कितनी energy extract हो सकती है, 1 kilogram of liquid nitrogen car is 213 watt per hour or 173 watt per hour per liter. And now coming to the advantages of using alternative fuels. So जितने भी हमने alternative fuels यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, CNG, ऑक्सीहाइड्रोजन, तो इनके एडवांटेजेस क्या हैं? तो कॉमन एडवांटेजेस हैं सारे ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स के. तो दीज आर क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी. क्लीन सोर्स का मतलब है कि लेस पॉल्यूटिंग है, एनर्जी सेविंग है, एंड नो हार्मफुल और टॉक्सिक एमिशंस लाइक लेड एंड हाइड्रोकार्बन, एंड दे आर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. दे हेल्प इन कंजर्विंग फॉसिल फ्यूल. पर कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके, जैसे कि इट कवर्स द कॉस्ट ऑफ मॉडिफाइंग द इंजन, मतलब कि इंजन को मॉडिफाई करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, एंड इट माइट नॉट बी एज एफिशिएंट ऑन रोड. अगर ये जितना फॉसिल फ्यूल जैसे पेट्रोल डीजल से एफिशिएंसी आती है, उतनी एफिशिएंसी इन ऑल्टरनेटिव या क्लीन फ्यूल से नहीं आ सकती है, एंड जनरली गिव्स लेस माइलेज. जो क्लीन फ्यूल्स हैं उससे माइलेज भी कम होता है, एंड ऑफन कॉस्टलियर देन द फॉसिल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल से कभी कभी ये बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाते हैं, एंड इट इज नॉट इजीली अवेलेबल इन द ऑल सिटीज. नाउ नेक्स्ट इज हाइब्रिड व्हीकल. हाइब्रिड व्हीकल का मतलब ये है कि जहां पर हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल जो फ्यूल्स हैं उनका कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, या हम दोनों ही क्लीन टेक्नोलॉजी या क्लीन फ्यूल का यूज कर रहे हैं. तो हाइब्रिड व्हीकल इज अ व्हीकल दैट यूजेस 2 or more distinct power sources to move the vehicle. 2 या उससे ज्यादा पावर सोर्सेज होते हैं, एंड द टर्म मोस्ट कॉमनली refers to hybrid electric vehicles, that is HEVs, which combine an internal combustion engine and one
और मोर इलेक्ट्रिक मोटर्स। अब यहाँ पे एक से दो से ज्यादा पावर सोर्सेज का यूज हो रहा है। तो ये जो पावर सोर्सेज हैं हाइब्रिड व्हीकल में जो हम यूज कर रहे हैं वो किस तरह के होते हैं? ऑन बोर्ड और आउट बोर्ड रिचार्जेबल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, दैट इज रेस, RESS, कंप्रेस्ड एयर, कोल, वुड और अदर सॉलिड combustibles, electricity, electromagnetic fields, radio waves, compressed or liquefied natural gas, human powered, that is pedaling or rowing, hydrogen, liquid nitrogen, petrol or diesel fuel, solar, wind, waste heat from internal combustion engine। तो ये इस तरह के भी कुछ alternative fuels हो सकते हैं। Now public transport option. The transport sector is a source of greenhouse gases. Our transportation needs produce 30% of all carbon dioxide gas emission. जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इमिशन होता है उसका 30% जो है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आता है, यानी कि जो व्हीकुलर इमिशन होता है उसके थ्रू प्रोड्यूस होता है। वन श्योर वे टू रिड्यूस दिस इज थ्रू द यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इसको इस चीज को रिड्यूस करने का एक श्योर शॉर्ट ऑप्शन है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करें। स्टडीज शो दैट द पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोड्यूसेस 95% लेस कार्बन मोनोऑक्साइड and nearly 50% less carbon dioxide and nitrogen oxide per passenger mile than a private। मतलब अब आप यहाँ पे देखिए कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन होता है कितना डिफरेंस है। The trains are probably the most efficient public transport system because they carry a higher number of passengers and use less fuel than buses. The buses, ferries, taxis are also public transport options. तो अब ये public transport के क्या advantages हैं? It is efficient way of transporting large number of people, saves fossil fuel, reduces vehicular pollution, एंड कॉस्ट इफेक्टिव। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो कॉस्ट इफेक्टिव है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट रिड्यूसेस द एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज GHG, ग्रीन हाउस गैसेस कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस ऑल्सो रिड्यूसेस ट्रैफिक कंजेशन। तो यहाँ पर देर इज अ नीड टू स्विच फ्रॉम प्राइवेट ट्रांसपोर्ट टू द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। Now coming to the traffic management as a measure to control air pollution। अब यहाँ पे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तो बात कर रहे हैं, पर जब तक ट्रैफिक मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो एयर पोल्यूशन कैसे कंट्रोल होगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस तरह से हम इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ट्रैफिक विदाउट डिलेज एंड स्मूथ मूवमेंट वुड कंसिडरेबली रिड्यूस एयर पोल्यूशन। जब इफेक्टिव ट्रैफिक मैनेजमेंट होगा, स्मूथ होगा, डिले कम होगा तो ऑब्वियसली एयर पोल्यूशन भी रिड्यूस होगा। द एडवांटेज ऑफ इफेक्टिव ट्रैफिक मैनेजमेंट दैट इट रिजल्ट्स इन सब्सटेंशियल फ्यूल सेविंग एंड रिड्यूस एमिशन। तो अब उससे हम फ्यूल सेविंग भी होगी, एमिशन भी रिड्यूस होगा। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि जो प्रॉपर ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। Signalization and intersection improvements including use of computerized area-wise traffic control। अब यहाँ पे ये क्या है कि जो भी ट्रैफिक कंट्रोल है उसको पूरी तरह से कंप्यूटराइज कर देना चाहिए। Prohibition of turning movement to maintain smooth flow of traffic। जो unnecessary cuts होते हैं, U-turns होते हैं, उनको prohibit कर देना चाहिए जिससे कि ट्रैफिक का फ्लो स्मूथ होता रहे। Use of one-way street and reversible lane। वन वे स्ट्रीट होनी चाहिए और लेन्स जो है, जो साइड लेन्स है वो रिवर्सिबल होनी चाहिए। एंड स्पेशल लेन्स फॉर बसेस एंड अदर हाई ऑक्यूपेंसी व्हीकल्स। बसेस के लिए और जो हाई ऑक्यूपेंसी व्हीकल्स होते हैं, जो बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं, उनके लिए अलग से लेन्स होनी चाहिए। सेग्रीगेशन ऑफ मोटराइज एंड नॉन मोटराइज ट्रैफिक थ्रू प्रोविजन ऑफ एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज फॉर pedestrians, bicycle and human and animal drawn vehicles। तो अब यहाँ पे ये भी एक प्रोविजन है कि जितने भी अलग अलग तरह के व्हीकल्स हैं, जैसे कि जो पैदल चलने वाले हैं, जो साइकिल चलाने वाले हैं, जो ह्यूमन और एनिमल ड्रिवन व्हीकल्स हैं, उनके लिए अलग अलग ट्रैफिक्स होने चाहिए, अलग अलग ट्रैफिक प्रोविजन होने चाहिए, अलग अलग लेन्स होनी चाहिए, अलग अलग रूल्स होने चाहिए। Special routes and time restriction for trucks and other commercial vehicles।
तो जो बड़े बड़े ट्रक्स हैं या कॉमर्शियल व्हीकल्स होते हैं उनके लिए स्पेशल रूट्स होने चाहिए या टाइम रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए. एंड यूज ऑफ सिटी बाईपास रोड बाय द ट्रक एंड लॉन्ग डिस्टेंस बसेस टू अवॉइड कंजेस्टेड सिटी एरिया. तो नॉर्मली आजकल ऐसा हो भी रहा है कि बहुत बड़े जो भी सिटीज हैं बाईपास लेन निकाल देते हैं, जिससे कि जो बड़े बड़े व्हीकल्स हैं वो एक सिटी से दूसरे सिटी में अपना बाहर से ही बाईपास लेन से ही चले जाते हैं बिना मेन सिटी में एंटर किए हुए. एंड पार्किंग कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शंस. तो जो व्हीकल्स हैं उनके लिए पार्किंग कंट्रोल होना चाहिए और कुछ रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए. Now next is economic policy measures. Now effective economic measures are necessary to safeguard acceptable living condition. The government should frame suitable economic policies to reduce the vehicular pollution. अब देखिए कौन कौन सी economic policies या measures हैं. Lower taxes and duties for fuel efficient vehicles. जो fuel efficient vehicles हैं उनके लिए taxes भी कम होने चाहिए, duties भी कम होने चाहिए. लोअर टैक्सेस एंड ड्यूटीज ऑन परचेज ऑफ लो पॉल्यूटिंग व्हीकल्स. अगर हम लो पॉल्यूटिंग व्हीकल्स को यूज कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो भी हमारे लिए टैक्सेस कम होनी चाहिए, ड्यूटीज कम होनी चाहिए. एंड हायर लाइसेंस फी एंड टैक्स ऑन ओल्ड एंड नॉन कंफर्मिंग व्हीकल्स. जो बहुत पुराने व्हीकल्स हो गए हैं, जो पॉल्यूटिंग है, जिससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, उनके लिए लाइसेंस फी बहुत ज्यादा हाई कर देनी चाहिए, टैक्सेस बहुत ज्यादा हाई कर देने चाहिए, जिससे कि वो धीरे धीरे रोड से हट जाएं. लोअर टैक्स ऑन क्लीन फ्यूल लाइक सीएनजी एंड अल्कोहल. जो सीएनजी ड्रिवन व्हीकल्स हैं, अल्कोहल ड्रिवन व्हीकल्स हैं, उनके लिए टैक्सेस लोअर होने चाहिए. डिफरेंट टैक्सेशन फॉर लेड एंड लेड फ्री पेट्रोल. जो पेट्रोल लेडेड पेट्रोल हैं और अनलेडेड पेट्रोल हैं, उनके लिए अलग अलग प्राइस होना चाहिए या अलग अलग टैक्सेस होने चाहिए. Now fuel price surcharge based on the lead content of petrol or sulfur content of oil. तो जो फ्यूल प्राइस का जो डिटर्मिनेशन होता है वो भी इसी तरह से होना चाहिए. Mandatory use of low or non-polluting vehicles in government fleet as in Delhi state government. अब यहाँ पे एक ये प्रोविजन दिया है कि नॉट ओनली इन दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है उनको अपनी जो उनकी फ्लीट होती है, उनका जो कारों का एक काफिला होता है, उसमें नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल्स को यूज करना मैंडेटरी होना चाहिए. Now taxes on CFC chlorofluorocarbon based air conditioning system in automobile and concession for installing non-CFC based system. तो अब यहाँ पे ये भी एक प्रोविजन है कि नॉन CFC बेस्ड जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स होते हैं उनके ऐसे व्हीकल्स पे कंसेशन देना चाहिए और जो CFC बेस्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स हैं उन पे ज्यादा टैक्स लगाने चाहिए. नाउ व्हाट आर यूरो 1 एंड यूरो 2 एमिशन नॉर्म्स. तो यूरो 1 एंड यूरो 2 जो नॉर्म्स हैं बेसिकली ये यूरोपियन कमीशन ने डिटरमाइन किए हुए हैं ना. यूरो नॉर्म्स जो होते हैं ये किस चीज को रेफर करते हैं, ये परमिसिबल एमिशन लेवल को रेफर करते हैं. ये पेट्रोल और डीजल दोनों के लिए होते हैं, मतलब कि पेट्रोल और डीजल में कितना परमिसिबल एमिशन लेवल होना चाहिए इसको ये डिटरमाइन करते हैं या कंट्रोल करते हैं. तो अब जैसे यूरो 1 में गैसोलीन ड्रिवन व्हीकल्स हैं यहाँ, तो यहाँ पे ये डेटा दिया हुआ है कि इनमें कितना एमिशन होना चाहिए पर किलोमीटर पर, जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड का, हाइड्रोकार्बन्स का या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का, कार्बन मोनोऑक्साइड हैं, तो इस तरह से किस तरह से उनका एमिशन होना चाहिए, ये सारी चीजें उन्होंने पहले से ही डिटरमाइन कर रखी हैं. सो सेम वे एज यू कैन सी द यूरो 2 नॉर्म्स में जो गैसोलीन ड्रिवन व्हीकल्स हैं उसमें कितना कार्बन मोनोऑक्साइड होना चाहिए, जैसे कि 2.20 ग्राम्स पर किलोमीटर में एमिट होना चाहिए, इतना एमिशन होना चाहिए. हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का एमिशन इतना होना चाहिए 0.50 ग्राम्स पर किलोमीटर. मतलब कि जब गाड़ी 1 किलोमीटर चले तो उसमें हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं उनका सिर्फ 0.50 ग्राम्स का ही एमिशन होना चाहिए. So from the above data, it can be observed that there is substantial reduction in emission as per EU norms compared to existing Indian standard. तो इसके लिए एक इंडियन स्टैंडर्ड भी बने हुए हैं, EU norms के साथ साथ इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्म्स भी बने हुए हैं.
Population explosion. The number of organisms of same species constitute its population. The rapid increase in the number of individuals of a species, especially in human beings, after the World War II can be termed as population explosion. The current rate of population growth is now a significant burden to human well-being. Factors for population increase. The factors responsible for this population explosion are accelerating birth rate, decreased infant mortality, increased life expectancy, increase in food production and distribution, improvement in public health, advancement in medical technology, that is vaccines and antibiotics. Some effects of population explosion. The unprecedented rise in population is one of the most important cause of resource depletion. The rise in population increase the demand for food, shelter, clothing, water, electricity, transportation, healthcare, educational institutions, etc. Increase in demand for food leads to intensive cropping, leading to decrease in soil fertility and conversion of forest into cropland. Infrastructure development leads to change in land use pattern. There is increase in demand of fossil fuel and more generation of waste. UN's population projection for 2050. According to the UN news sources, the current world population is 7.8 billion in October 2020. Population projections are attempt to show how the human population living today will change in the future. These projections are an important input to forecast of the population's impact on this planet and humanity's future well-being. The major findings of these research are: the global population is getting older. The slowdown in population growth due to the overall reduction in fertility causes the proportion of older person to increase over time. The number of people of age 65 and older is projected to be more than double by 2050 and more than triple by 2100. According to this report, some developing countries, especially in Africa, are still growing rapidly. The population of developed region will remain largely unchanged at around 1.3 billion from now until 2050. In contrast, the 49 least developed countries are projected to double in size from around 900 million people in 2013 to 1.8 billion in 2050. While there has been a rapid fall in the average number of children per woman, in large developing countries such as China, India, Indonesia, Iran, Brazil, and South Africa, rapid growth is expected to continue over the next few decades in countries with high levels of fertility such as Nigeria, Niger, the Democratic Republic of Congo, Ethiopia, and Uganda. The report notes that India is expected to become the world's largest country, passing China around 2024, when both countries will have populations of 1.45 billion. After that, India's population will continue to grow and China's is expected to start decreasing. Meanwhile, Nigeria's population is expected to surpass that of the United States before 2050. Overall, life expectancy is projected to increase in developed and developing countries in future years. At the global level, it is projected to reach 76 years in the period of 2045 to 2050 and 82 years in 2095 to 2100. By the end of the century, people in developed countries could live on average around 89 years, compared to about 81 years in developing regions. The UN has given three types of projections for population growth by 2050. Medium projection is 10 billion. The low projection is only 7.5 billion, that is 2.2 billion less than the medium one. We could achieve the low projection if we place in high priority on population control activities and on human development focused on women. The high projection is no less than 12.5 billion, a massive 4.7 billion more.
This gap is equal to whole extra world as it was in 1984. This would happen if we continue to neglect women's need. Population growth and climate change. Population growth has aggravated the climate change. The increasing population needs more food, fuel, shelter, for which the forests are being destroyed rampantly. The forests are the greatest natural carbon sink. They regulate the rainfall and temperature of the place. Deforestation leads to climate change. The increasing population needs more fossil fuel for automobiles. The excess use of fossil fuel leads to accumulation of greenhouse gases, which leads to global warming. Growing population needs more of essential consumer products. The demand for these products escalate the production by industries, leading to more industrial pollution. This in turn leads to global warming. By 2050, we can achieve the low projection. It could mean emitting 9.3 billion tons of less carbon dioxide than under the median projection of population. Recent studies have indicated that global warming may increase the number of hungry in the world. If the carbon dioxide level doubles and population follow the median projection, then the number of malnourished would increase to 823 million by 2050. But with low projection, only 481 million people would go hungry. Population trends in developing countries. The world population of 7.2 billion in mid-2013 is projected to increase by almost 1 billion people within the next 12 years. According to official United Nations population estimates, it is projected to reach 8.1 billion in 2025 and to further increase to 9.6 billion in 2050 and 10.9 billion by 21st century. The population of developing countries is projected to rise from 5.9 billion in 2013 to 8.2 billion in 2050 and to 9.6 billion in 21st century. Much of the overall increase would take place in high fertility countries, mainly in Africa, as well as countries with large populations such as India, Indonesia, Pakistan, Philippines, and the United States of America. Growth is expected to be particularly dramatic in the least developed countries of the world between 2013 and 21st century. The populations of 35 countries could triple or more. Among them, the populations of Burundi, Malawi, Mali, Niger, Nigeria, Somalia, Uganda, United Republic of Tanzania, and Zambia are projected to increase at least fivefold by 21st century. North-South divide on resource use and consumption. Often it has been found that the economic growth in real terms may be far less than the cost of restoring the lost environment. It is absolutely necessary to use all the natural resources efficiently and use renewable resources rather than non-renewable resources. It also needs support of eco-friendly technologies. It is here that the divergence between the northern and the southern views on environmental problems and development arise. North-South divide. The northern or the developed countries and southern or the developing countries are always lock-horn when it comes to the concern of resource use and environment degradation. Both of them blame each other for the plight of the constant deterioration of the earth, the only habitat of the human beings. The views of the developed or the northern countries. The developed countries are of the opinion that the uncontrolled population growth in the developing countries is the major cause of the environment degradation.
Population growth increases pressure on all sectors to increase output, which in turn increases the demand of resources and increases pollution. It also needs more food for the growing population, which leads to the exploitation of soil to increase food production. This leads to degradation of soil, rendering it unproductive after a few years. To increase the food production, forests are cleared and converted into agricultural lands. This accounts for the loss of forest resources. Thus, the northern countries suggest urgent need for effective population control as prerequisite for environmental protection. Views of the developing or the southern countries. The developing countries express their dissatisfaction over the views of the north, pointing out that the high population growth is the major cause for the resource depletion and the environmental degradation. This is disputed by the southern countries on two major grounds. The southern countries debate that the environmental impact of population growth in the high-income developed countries far outstrip the impact of population growth in the low-income developing countries. They argue that the North must reduce the level of consumption. It has been calculated that every 1,000 babies born in developed countries of the world consume 3 to 4 times as much of the earth resources as 9,000 born in the developing countries due to its high purchasing power. The South feels that the high rate of deforestation is not only due to the extension of agricultural activities but more because of national debt servicing necessities and the high demand of forest products from the developed countries. The financial assistance extended by financial institutions like World Bank and International Monetary Fund of the North are on two terms. First, the borrowing countries can sell the wood to the developed countries initially and then obtain a financial loan to reforest and repair the environmental damage. To pay back the loans, invariably more forest is cleared. The South also points out that developed countries consume most of the forest fuel resources. US alone consumes a major share of world's transport energy, whereas all the developing countries together do not consume as much. Demographic transition. Demography is the statistical study of human population, spatially with reference to size and density, distribution and vital statistics. Demographic transition is used to represent the transition from high birth rate to low birth rate as the country develops from a pre-industrial to an industrial economic system. The stages of demographic transition are: in stage 1, pre-industrial society, death rates and birth rates are high and roughly in balance. All human populations are believed to have had this balance until the late 18th century, when this balance ended in Western Europe. Birth and death rates both tend to be very high in this stage. In stage 2, that of developing country, the death rates drop rapidly due to improvements in food supply and sanitation, which increase lifespans and reduce diseases. Other improvements generally include access to technology, basic health care and education. In stage 3, birth rates fall due to availability of contraception, increases in wages, urbanization, and increase in the status and education of women, reduction child labor, and increase in parental investment in the education of children and other social changes. Population growth begins to level off. During stage 4, there are both low birth rates and low death rates.
Death rates may remain consistently low or increase slightly due to increases in lifestyle diseases. Due to low exercise levels and high obesity and an aging population in developed countries, by the late 20th century, birth rates and death rates in the developed countries got leveled at lower rates. Population control strategies. Various strategies can be adopted to control population. Family planning programs should be made people's movement. Educational campaigns should be carried out to make people aware of the benefits of a small family and the methods of family planning. Population should be made a part of school and college curriculum. Electronic media should be made responsible for spreading message amongst masses. Women should be given proper education. People should be made aware of various contraceptives and surgical methods to control birth. Reducing infant mortality so that parents do not increase their family size tenure, at least some survive to adulthood. Facilities offered by government to its employees are limited to 2 children only. Government is offering incentives for family accepted for sterilization. Moreover, India was the first country to take measures for family planning back in 1951. Women-centered human development. This is much stress upon enhancing the roles and status of women in developing countries as well as its revitalizing programs for reproductive health and family planning. Women-centered human development program has been modulated for this purpose. Women-centered strategies concentrate on specific areas that improve the quality of life of women and girls. The focus is not on gender equality or equity outcomes per Women-centered strategies concentrate on specific areas that improve the quality of life of women and girls. The focus is not on gender equity or equality outcomes, although these may be achieved as a result of implementation of women-centered strategies. Women-centered strategies typically focuses on the following. Number 1, improving women's and girls' education. Number 2, increasing their knowledge of health choices, especially in the area of reproductive health and family planning. Number 3, increasing their decision making and empowering women to have more control over resources at their disposal. Number 4, increasing their economic power by increasing their incomes. Number 5, reducing their exposure to various forms of violence, especially gender-based violence and domestic violence. Managing the urban environment. Urbanization. Today, over 50% of the world population lives in urban areas. The migration of people from rural areas to urban areas in search of job and better living conditions resulted in concentration of population in cities. This is known as urbanization. Impact of urbanization. The main impact of urbanization on plants and animals is loss of habitat. Urbanization increased the demand of resources and more consumption of energy, increased pollution and more generation of waste. It has resulted in the development of slums where the poor migrants settle. It also created sprawls, which refer to dispersed development unit outside compact urban and village centers along highways. Urbanization leads to food and water shortage, poor sanitization leading to health problems and spread of diseases, increase in demand for jobs in the cities and increase in crime rate, increase in unemployment leads to poverty and illiteracy. Sustainable cities need of the hour. A sustainable city or eco-city is designed
keeping in mind environmental impact inhabited by people with a goal to minimization of required inputs of energy, water and food and waste output of heat, air pollution, carbon dioxide, methane and water pollution. Richard Register first coined the term eco-city in 1987. Generally, developmental experts agree that a sustainable city should meet the needs of the present without sacrificing the ability of future generations to meet their own needs. Such a city should have a minimum ecological footprint. It should produce least pollution, use renewable energy, recycle waste, composting of organic material to manure. Thus, the city's contribution to climate change should be minimum. Renewable energy sources should be used, such as wind turbines, solar panels, or biogas can be created from sewage. Eco-friendly buildings can be designed which will have proper light and ventilation, thus would save energy on lighting and air conditioning. Use of public transport like city buses, local trains, metro and carpools reduces the vehicular emission. Use of clean fuel like CNG in the government vehicles reduces the air pollution and also conserves fossil fuel. Zoning of city into different categories like city area, industries, etc. Planning green belt to prevent pollution and cooling the temperature. Planning sustainable urban drainage system. Plans should be made for proper disposal of waste. Auroville in South India is a model of sustainable city which is eco-city. Migration is the movement of people from the rural areas to urban areas in search of jobs and better lifestyle. The migration of people add an additional demand on the city to provide for shelter, food, infrastructure, service and employment. Migration leads to congestion and pollutions. Planning environmental improvement. Efficient land use. Land is used for many purposes. It is used for housing, industry, services, transport and infrastructure. Proper planning and assessment of the land use should be done before taking up any project. The efficiency of land use can be increased by appropriate settlement planning and development. Land use planning is the term used for a branch of public policy consisting of various disciplines which intend to order and regulate land use in an efficient and ethical way. It is the systematic assessment of land and water potential, alternatives for land use and economic and social conditions in order to select and adopt the best land use options. A land use plan gives a vision for the future possibilities of development. Planning energy. Energy planning is the process of developing long-range policies to help guide future of local, regional or even the global energy system. It is the government who plans out the energy requirements of the cities. The energy must be sufficient for the number of people living in the urban area, affordable and non-polluting. It must also be able to supply energy to the industries in the urban areas. India has a large deficit of energy as growing population needs more energy. At present, about 70% of India's energy is obtained from fossil fuel, that is coal. India is largely dependent on fossil fuel imports to meet its energy demands by 2030. India's dependence on energy imports is expected to exceed 53% of the country's total energy consumption. Hence, India would be looking towards alternative energies which are cheaper, less polluting and easily available like solar energy, wind energy, tidal energy, biomass energy, nuclear energy, etc. Shelter. Sustainable urban development means achieving social equity and environmental protection while minimizing the cost of urbanization. Sustainable urban development means achieving a balance between the development of the urban areas and protection of the environment with a concern for equity in employment, shelter, basic services, social infrastructure and transportation in the urban areas.
With rapid expansion of urban population around the world, there is an appreciable concern about minimizing the environmental cost of urbanization. Environmental damages and depletion of non-renewable resources and rising level of pollution in urban areas are becoming a matter of concern. In recent times, cities have become places of urban environmental degradation and wasteful use of resources, which is proving to be costly to the present generation as well as future. While planning a sustainable city, we must be aware of the climatic change factors. The migration of people adds to the deterioration of the environmental health of the cities. Urban sprawls and slums develop due to the migration of people to the urban centers. They must be avoided, and rather a small, well-planned city can come up with all basic facilities. Poor migrating people do not have enough money to afford a proper housing and start living in slums. Urban sprawl is the spreading of urban developments like houses and shopping centers on undeveloped areas near a city or along the highways. Overcrowding is common in urban areas, and the urban poor cannot afford a decent housing. This results in development of slums. Slum is defined as a densely populated, usually urban area marked by crowding, dirty housing, poverty, and social disorganization. The government must provide shelter for people living below poverty line at a subsidized rate with all essential amenities like clean drinking water, sanitization, power supply, healthcare center, etc. Urban transport. Urban transport can be in many forms ranging from simple bicycle to metro rail. The use of public transport should be encouraged. The government has the responsibility to provide for the public transport. In India, public transport is the important mode of motorized local travel in cities. This is predominantly by road, since commuter rail services are available only in the 7 metropolitan cities of Mumbai, Delhi, Chennai, Kolkata, Bangalore, Hyderabad and Pune, and other modes of transport can be auto rickshaw and taxis. The two-wheelers and car account for major part of urban transport. The government should plan the roads and signals in such a way that the traffic congestion can be minimized. The use of alternative fuels like CNG should be encouraged. Delhi state government has set an example by converting the state-owned public transport buses into CNG driven. Soon many of the private buses, auto and car also converted to CNG. The main aim should be to reduce vehicular pollution, which is the cause for global warming, acid rain, smog and many other health problems. Water supply management, wastewater and sanitary waste management. The urban population is growing rapidly and is exerting a great pressure on the existing urban services. The local urban government are entrusted with the task of providing the basic services like water supply, wastewater management, sanitation and solid waste management. Studies have shown that the management of water supply, wastewater and sanitation is better in metropolitan cities than the small cities. This is the main reason for the flocking of the people from rural areas and small cities to the metropolitan cities. More fund is allocated and is spent in the metropolitan cities in this respect. The water crisis is related to improper distribution system. Also, the sources of water are depleting due to the increasing population, wastewater and the pollution of the sources. Constant supply of water can be maintained by fixing the above mentioned problems. Proper water distribution system has to be planned out considering the number of households. Water has to be allocated to centers other than household, for example, industries, offices, hospitals, educational institutions, marketplace, etc. The water should be treated and should not contain any health threatening substances or pathogens. The water bodies should not be polluted. Sewage must be treated before it is let out into the water bodies.
The industry should be given strict instructions against water pollution, and the effluent discharge should be regularly monitored. Contamination of water bodies with sewage containing detergents and runoff containing fertilizers supply excesses of nutrients like nitrates and phosphates. The water bodies which help the phytoplanktons to multiply rapidly and cause algal bloom. This further leads to eutrophication, a condition in which the water bodies become devoid of oxygen. Water tariff should be rationalized and made a deterrent to wastage of water. Water meters have to be fixed for the purpose. People should be encouraged to harvest rainwater. It is general practice to use groundwater by individual households where there is a water deficit. Water disposal and treatment is a major problem in India. Non-collection of wastewater and discharge of untreated water into the water bodies cause land and water pollution. Most of the cities have a planned sewage system. Wastewater generated is usually 80% of the water consumption. People have their own water sources such as borewell, which adds up to the unaccounted wastewater generation. However, survey indicate that the wastewater treatment situation is quite alarming. While the smaller size urban centers with sewage system treat less than 1/4 of the wastewater generated, even the metropolitan cities treat only about 2/5 of the wastewater generated. Wastewater disposal is done both on hand and in water bodies by most urban centers. Following steps could be taken. The number of wastewater treatment plants should be increased to ensure the complete treatment of the urban wastewater. Collection of wastewater should be improved. Rehabilitation of sewage system must be taken up in all the cities where the existing system have become non-functional. Separate stormwater drains should be constructed to decrease the volume of wastewater treatment. Recycling and reuse of wastewater should be encouraged. Currently, recycled wastewater is used for irrigation and cleaning purposes. It is mandatory for the industries to treat their effluents before it is discharged into the water bodies. Pollution of land or water body with untreated wastewater should be made punishable. Solid waste management in India had always remained a problem. The per capita waste generation has a correlation to the size class of urban centers, that is, the larger the urban center, the most the waste generated. The collection efficiency of solid waste is much better in larger cities than the smaller urban cities. The municipal corporation has the responsibility to provide for a proper waste disposal system. The waste bins are placed in the community areas for the collection of solid waste. The main method of waste disposal in India continues to be open dumping in most urban centers. It is not a very good method of waste disposal because the waste keep rotting, attract vectors of diseases and contaminate land and water. Many urban centers have landfill sites and often waste is not disposed in these landfill sites because the sites are far away from the city and the transportation costs become high. Hospital waste should be collected separately and incinerated with other hazardous waste. People should be taught segregation of waste and separation bins should be placed for degradable, non-biodegradable waste and recyclable waste. Composting is a good option for degrading the organic waste. The municipal corporation is often in shortage of trained staff for handling solid waste, and even the number of vehicles might be less than the actual requirement. Transportation fleet need to be maintained well and need to be modernized to improve collection and transportation efficiency. The 3 R's of solid waste management, that is reduce, reuse and recycle, must be adopted by all urban centers. This will help in reducing the quantity of solid waste
to be disposed of. People's participation must be encouraged to keep cities clean. Construction activities, buildings, infrastructure, and the environment are inextricably interlinked. These concrete structures become part of our living environment, affecting our living conditions, social well-being, and health. It is therefore important to explore environmentally and economically sound design and development techniques in the designing buildings and infrastructure that are sustainable, healthy, and affordable. The concept of sustainability in building and construction has evolved over many years. Initially, the focus was on how to deal with the issues of limited resources like energy and how to reduce impacts on the natural environment. However, in the recent times, the socio-economic and cultural aspects are also considered important along with environmental. Green buildings are designed to reduce the overall impact of the building environment on human health and the natural environment by efficiently using energy, water, and other resources, protecting occupant health and improving employee productivity, reducing waste, pollution, and environmental degradation, using eco-friendly construction material. The construction should allow enough of light and air to save energy. Rainwater harvesting and water recycling units would add up to the eco-friendliness. Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) is a set of rating system for the design, construction, operation, and maintenance of green buildings, homes, and neighborhoods. Rural development to counter migration. Counter urbanization is moving from city back to rural areas. A majority of the poor in rural areas depend mainly on the wages they earn through unskilled labor. They are often on the brink of subsistence and are vulnerable to chronic poverty. In case of inadequate labor demand or in the face of unpredictable crises like natural calamities, natural disaster, or personal like ill health, all of which adversely impact their employment opportunities. In a context of poverty and unemployment, wage employment programs provide unskilled manual workers with short-term employment on public works such as irrigation, infrastructure, reforestation, soil conversion, road construction, etc. These programs generate income for poor households during critical times. The government has implemented wage employment programs that offered wage employment on public works on minimum wages. The wage employment program started at National Rural Employment Program (NREP), Rural Landless Employment Guarantee Program, Jawahar Rozgar Yojana. The Jawahar Rozgar Yojana was merged with Jawahar Gram Samriddhi Yojana and National Food for Work, a same of the government scheme to provide wage employment. The step that could be taken to counter migration can be summarized as follows. Provision of basic infrastructure in the rural areas like school, healthcare, roads, sanitization, safe drinking water. Improving agricultural productivity. Implementing government schemes to increase agricultural productivity, assistance to individual families living below poverty line, helping the poor, especially the farmers, in obtaining credit, loans, and subsidy, helping the skilled laborers and artisans market their product, empowering rural women, self-employment training programs. Secondary cities. These are the cities which are developed a few kilometers away from the main urban center to reduce the pressure of migration. It has a population between 5 lakh to 3 million inhabitants. It is well planned and has all the facilities of the main city, which is the primate city like healthcare, educational institutions, shopping centers, transportation, etc.
Secondary cities have their own socio-economic and political culture that may differ from other cities such as private cities. Many developing countries view it as a way to strengthen the economy and promote the growth of secondary cities to stimulate the economics of surrounding rural areas. It helps to slow down migration to large urban areas. The main idea is to reduce the migration of population to the bigger cities. Let us study the steps that can be taken to reduce large-scale migration to the cities. Setup of large-scale industries that can provide employment to large number of people in secondary cities. Industrial incentives to the industries in special industrial zones near the secondary cities. Provision of adequate infrastructures in the secondary cities like educational, institutional, training centers, hospitals, marketplaces, transport facilities, recreational areas, etc. Development of efficient transport facility connecting the secondary cities to the major cities. Strengthening the economy of the secondary cities. Government housing at a subsidized rate could facilitate the movement from major urban centers to the secondary city. Strengthening the local government to plan, implement and monitor the programs for sanitation, water and electricity and other basic amenities effectively. Some examples of secondary cities in India are Mumbai with a string of secondary cities like Navi Mumbai, Bhayandar, Mira Road, Thane, Kalyan, Bhiwandi. NCR of Delhi includes the neighboring cities of Alwar, Bagpat, Gurgaon, Sonipat, Faridabad, Ghaziabad, Noida, Greater Noida and nearby towns. Community participation. Naik Waits defined community as a group of people sharing common interest and living together in a geographically defined area. The word participation is defined as an act of being involved in something. Community participation means involvement of people with similar goals and needs in decisions affecting their lives. Charles Abraham defined community participation as the theory that the local people should be given active role in programs and improvements directly affecting it. Community participation brings many lasting benefits to people are, it promotes sense of ownership and control amongst people. It leads to improved outcome in relation with healthcare, employment, education, income, life satisfaction, etc. It improves the economy and living standards of people as everyone shares the benefits. It lessens the cost of labor as people themselves participate in the activities to be conducted. It creates better network amongst people and encourages social participation. It encourages sharing of ideas, knowledge and innovations. Community participation in keeping surrounding clean. Community participation in rural water supply and sanitation projects provides members of the community the opportunity to influence the decision-making processes. It is especially important because poor sanitation leads to several diseases like diarrhea, jaundice, typhoid, malaria, etc. The first thing that could be done is that the community as a whole should pledge to keep the surrounding clean. An awareness program could be conducted for the community to explain the importance of keeping surrounding clean and how can it to be achieved. Constant dialogue between the planners and community help in planning of the activities as the local people have the best location, specific knowledge and indigenous knowledge. The community can take up cleanliness drive to keep the surroundings, build community toilets, help in safe disposal of garbage, converting organic waste into manure or biogas, etc. Some countries like Ghana and Nigeria celebrate Sanitation Day where people get together and clean the roads and drains. In Lagos, Nigeria, the authorities hold a monthly cleanup day
By law, the last Saturday of every month is Sanitation Day in Lagos. The entire city comes to a stop as people spend hours sweeping the streets and cleaning up trash. Participation of private enterprises in city improvement. The private sector is the part of the country's economic system that is run by individuals and companies rather than the government. Most private sector organizations are run with the intention of making profit. They derive their profit from the consumers in the cities. Let us evaluate how can the private enterprises help in city improvement. The private sector create job opportunities for the people. They bring economic prosperity to the city as well as its people. Some private enterprises work for the city in partnership with the government, including waste management, water management, healthcare, transport, and security services. Private sector, as part of their social responsibility, allot funds for carrying out awareness campaigns on issues like environmental issues, literacy programs, social evils like child labor, helping the poor families and destitute, etc. Measures to increase private enterprise participation. Following measures could be taken to increase the private enterprise participation in urban development. Tax incentives must be given to the industries who build housing, schools, hospitals, playground, roads, etc. The Government of India gives tax rebate to the private enterprises that take up social responsibilities in the field of literacy, empowering women, creating environmental awareness, etc. Tax incentives should be given to the private enterprises who grant loans to its employees for building houses. Different electricity and water tariff for the industrial sector enables the government to collect more revenue. Managing soil and land. The air, water, and soil are our most important resources. Rapid population growth, industrialization, and urbanization are the main factors that put a strain on the natural resources. Conservation does not mean that we should not use them. It means use of natural resources rationally and equitably, keeping in mind their respectability without degrading them. In other words, it means wise, sustainable use of them. Soil supports the growth of plants which give us food. It also provides us with other basic requirements of life, that is clothing, shelter, medicines, etc. Hence, soil is one of the most important life supporting resource. Soil erosion. It is the removal of the top soil, which is fertile layer of the soil, due to agents like rain, wind, human activities like deforestation, wrong agricultural practices, developmental activities, etc. Let us have a look at the soil profile. A horizon is a layer of soil which had different characteristics from the layer above and beneath. It is differentiated on the basis of physical feature, texture, and color. Now, layer O, which is the topmost layer, this horizon consists of organic matter. It has lot of leaf litter. Next is layer A. This horizon is the mineral layer with the most organic matter and soil life. This is the top layer, also known as the fertile layer. Horizon B, which is the subsoil layer with maximum of iron and clay. Next is the bottommost layer, which is horizon C, consists of large unbroken rocks. During the erosion, the O and A horizon are worn out or removed. Causes of soil erosion. Human activities that cause soil erosion, and the second is natural activities or natural causes for soil erosion. Now, coming to the human activities, first is deforestation. The roots of the trees hold and bind the soil. It also helps the soil in absorbing rainwater as the water percolates through the sides of the roots. Thus, when the trees are cut down, the soil becomes loose and exposed to erosion by agents like water and wind.
Now, second cause is overgrazing. The cattle graze on the piece of land repeatedly, uprooting or eating away even the roots. The grasses have no scope to regenerate, rendering the land to become completely inundated. The soil is thus susceptible to erosion by water and wind. Third cause, wrong agricultural practices. These includes injudicious use of inputs like water, fertilizers, pesticides, etc., which renders the soil unfertile, which support no vegetation, farming on unsuitable terrains, and soil compaction by agricultural machineries also make the topsoil vulnerable to erosion. Next cause is overuse of land for growing crops. The growing population needs more food to satisfy the hunger of the people. The growing demand of food leads to intensive farming. The soil gets exhausted of all its nutrients after few years and eventually does not support any vegetation. This may lead to soil erosion. Next method is use of chemical fertilizers and pesticides. In large quantities and for a long period of time, degrades the soil quality, making it unfit for vegetation. Next reason is improper land use and mining activities. Without land reclamation or afforestation also can account for soil erosion. Second category of natural causes for soil erosion are torrential rains loosen and remove the soil particles by the impact raindrop splash. It creates a small crater in the soil, ejecting soil particles. Runoff when the rate of rainfall exceeds the rate of absorption of the water by soil. The water flows as surface runoff carrying with it loosened soil particles. Gully erosion is when soil is washed away by the fast flowing rainwater on the hill slope, cutting deep channels. Wave action, this can also be called shoreline erosion, which occurs due to the action of waves during changing tides. Movement of snow or glaciers causes erosion of soil underneath by abrasion, plucking and ice thrusting. Movement of rivers cause bank erosion, carrying the soil particles downstream. Meandering or changing of the course of the river also cause erosion. Flood cause soil erosion when large volume of water flow rapidly. Movement of winds cause soil erosion mostly in arid and semi-arid region where the soil particles are already dry and loose. The wind carries away these loose particles, leading to soil erosion. Effects of soil erosion. The effects of soil erosion can be enumerated as follows. When the top fertile layer is removed, there is loss of fertility of soil, thus affecting the emergence, growth and yield of the crop. Textural change affect the water holding capacity of the soil, making it susceptible to drought. Soil carried away by rain or wind end up in drains, streams, river, canals, irrigation and hydroelectric reservoir. This may reduce irrigation, electricity generation and the navigation of waterways. The silting of the water bodies is one of the reasons for flood because the floor of the water body rises due to the deposition of soil. It is able to contain less water now and may lead to floods during heavy rains. Generation of wasteland and desertification. The soil supports a large species of insects, earthworms, worms, snakes, microorganisms. Soil erosion means a loss of habitat for them. Many of them die and perish, leading to loss of biodiversity. Now coming to the erosion control techniques. First is terrace farming. This is practiced in hilly region to prevent soil erosion during the farming processes.
Fields are cut at right angles to the slope and agriculture is carried on the flat surface. This type of land scrapping is called terracing. The rice terrace of the Philippines have been designed as UNESCO World Heritage Site because of the significance of this technique. Advantages of terrace farming: reduces soil erosion, minimizes the chances of landslide in hilly region, reduces surface runoff, reduces wastage of irrigation water. Second method is contour farming. This is the practice of tilling sloped land along lines of elevation in order to conserve rainwater and to reduce soil losses from surface erosion. These objectives are achieved by means of furrows, crop rows and wheel tracks across slopes. This structural arrangement acts as reservoir to catch and retain rainwater, thus permitting increased infiltration and more uniform distribution of the water. Contour farming has been practiced for centuries in parts of the world where irrigation farming is important. Advantages of contour farming: it has proved to reduce fertilizer loss. It reduces power and time consumption, also reduces wear and tear on machines. It increases crop yield, reduces erosion and reduces surface runoff. Now the next method is dry farming. This is a type of farming practiced in arid and semi-arid areas without irrigation by planting drought-resistant crops and maintaining a fine surface tilth or mulch that protects the natural moisture of the soil from evaporation. The choice of crop is influenced by the timing of the predominant rainfall. For example, winter wheat is more suited to regions with higher winter rainfall, while areas with wet summer may be more suitable for growing summer crops such as sorghum, sunflowers or cotton. Advantages of dry farming: it is suitable for places with low annual precipitation. It also protects the soil from erosion and retains soil moisture. Now next method is tree planting. It refers to the process of transplanting tree seedlings, generally for forestry, land reclamation or landscaping purposes. It involves planting seedlings over an area of land where the forest has been harvested or damaged by fire or diseases. Tree planting is carried out in many different parts of the world and strategies may differ widely across nations and regions and among individual reforestation companies. Tree planting creates instant forest. Advantages of tree planting: it reduces soil erosion as the roots hold and bind the soil. It reduces the runoff of surface water, also reduces pollution. It increases the biomass content of the soil, absorbs carbon dioxide which is greenhouse gas and thus helps in reducing global warming. 1 acre of tree can remove up to 2.6 tons of carbon dioxide each year. Provides life essential oxygen. An average size tree creates sufficient oxygen in 1 year to provide oxygen for family of 4 and natural habitat for wild flora and fauna. Next method is bunds. Bunds are small earthen barriers provided in agricultural land with slopes ranging from 1 to 6%. It is a common technique to collect rainwater where it falls, increase water infiltration and prevent soil erosion. Bunds are made of stone or soil or sometimes even crop remains. The number of bunds and the distance between them depends on the slope and the soil type. Advantages of bunds: by building the bunds along the contour line, the runoff reduces, leads to increased water infiltration, enhance soil moisture. It also reduces soil erosion. Now next method is gullies. A deep ditch or channel cut in the earth by running water after a prolonged downpour. Gully formation increases the water flow rate substantially, which causes the significant deep cutting action into soil, causing soil erosion.
The same concept of gullies can be used in agriculture, where gullies can be dug which would be used for irrigation and channelize rainwater. It can be used as an advantage to reduce soil erosion by rainwater. And the next method is wind breaks. A windbreak or shelter belt is a plantation usually made up of one or more rows of trees or shrubs planted at right angle to the prevailing wind. They provide shelter from the wind and to protect soil from erosion. Usually they consist of alternate rows of trees and shrubs which reduce the velocity of the prevailing wind. They are also planted along the edges of fields or farms. Windbreaks around a home can reduce the cost of heating and cooling and save energy. Other benefits include providing habitat for wildlife. Use of organic fertilizer. These are natural fertilizers derived from dead plant or animal matter. These are manure or compost made by decomposing the waste with the help of microorganisms. The farmers often use cow dung, agricultural residue, compost, etc. that are easily available on the farm. Advantages of organic fertilizer. It helps prevent soil erosion. Organic fertilizer increase physical and biological nutrient storage mechanism in soil. It helps to retain soil moisture. It is eco-friendly and non-polluting. It also improves soil structure, and its costs are low than the chemical fertilizer if it is locally available. Now next is soil management and soil conservation. Soil management refers to the process of adjusting soil factors in such a way that it ensures maximum crop production at the lowest cost. Soil conservation refers to the process of checking soil erosion by protecting the land surface from the impact of rainfall and wind by using cover crops like the grasses, for example, alfalfa and leguminous crops. Increasing infiltration of rainwater by afforestation and improving soil structure. Decreasing the volume and velocity of overland flow. Reducing soil erosion by modifying physical and chemical properties of the soil. Soil conservation strategies. The major soil conservation strategies are land use management, then vegetative and mechanical practices. First is land use management. The first and foremost consideration in soil conservation is the land use within its capabilities. Land use can be mainly classified into cropland, pasture land, woodland, wildlife and recreational land. A land suitable for single use when converted to another use becomes susceptible to erosion. For example, grasslands which provide soil cover, if overgrazed by livestock, become exposed to erosion. Land management is the process of managing the use and development of land resources in the rural and urban areas. Soil and land use management is not only important for protecting the undervalued resources soil, but also critical to balance food production and food security with biomass production for energy and carbon sequestration, and should be considered as an important option for water management. Vegetative and mechanical practices. The vegetative and mechanical practices of soil management include indigenous practices like crop rotation, alternate cropping, windbreak, vegetative terraces, barrier to stiff stemmed grass, control sheet and rill erosion and trap sediment, barriers to gully formation. Field borders of vegetation around field reduces the amount of sediment carried outside the field. Land reforms. The term land reform is used to discussing the various changes made in the cultivator's relation to land in a land tenure system. Land reforms in India broadly refers to abolition of intermediary tenures, tenancy reforms, sealing and land holding, and distribution of surplus land, consolidation of holding and compilation and updating of land records.
Land tenure system explains the traditional or legal rights individuals or group of individuals have on land and the social relationship among the rural population that emerges from such land rights. Definition: land reform usually refers to redistribution of land from the rich to the poor. More broadly, it includes regulation of ownership, operation, leasing, sales, and inheritance of land. Indeed, the redistribution of land itself requiring legal changes in an agrarian economy like India and great scarcity and an unequal distribution of land coupled with large masses of rural population below the poverty line. There are compelling economic and political arguments for land reforms. Not surprisingly, it received top priority on the policy agenda at the time of independence. In the decades following independence, India passed a significant body of land reform legislation. Land policy in India has undergone broadly 4 phases since independence. First phase, the first and longest phase, that is from 1950 to 1972, consisted of land reforms that included 3 major efforts: abolition of the intermediate, tenancy reform, and the redistribution of land using land ceiling. The abolition of intermediaries was relatively successful, but tenancy reform and land ceiling met with less success. The second phase, that is from 1972 to 85, shifted attention to bringing uncultivated land under cultivation. The third phase, that is from 1985 to 1995, increased attention towards water and soil conservation through the watershed development, drought prone area development, that is DPAP, and desert area development program, that is DADP. A central government waste land development agency was established to focus on wasteland and degraded land. Some of the land policy from this phase continued beyond its final years. The fourth and current phase of policy, that is from 1995 onwards, centers on debates about the necessity to continue with land legislation and efforts to improve land revenue administration and in particular clarity in land records. Next is integrated rural development, that is IRDP, is a rural development program of the Government of India launched in the year 1978 and extended throughout India by 1980. It is self-employment program intended to raise the income generation capacity of the poor. The target group consists largely of small and marginal farmers, agricultural laborers, and rural artisans living below the poverty line in the form of subsidy by the government and term credit by financial institutes. The major objectives of the rural development program is to improve the economic condition of the rural poor. This can be achieved by all-round development and economic viability of agriculture, horticulture, livestock, fisheries and sericulture. Following are some of the schemes undertaken under the IRDP, that is training of rural youth for self-employment, that is TRISEM. Second scheme is for rural artisan, then development of women and children in rural area, Council for Advancement of People Action in Rural Technology, Jawahar Rozgar Yojana, Rural Sanitation Program, National Food for Work Program. Next is role of women in rural development. Rural women have many roles and responsibilities in rural development. As farmers, they plant, weed and harvest crop. Many women earn extra money by working as daily wages laborers, producing and selling vegetables and fruits or engaging in small scale trade and industries. In developing countries like India, they spend lot of time in fetching water and collecting fuel wood. The entire community is benefited socially and economically if the women are empowered. World Bank studies show that many sub-Sahara African countries could increase their food production
by 10 to 20% if women are empowered. Women should be encouraged financially with the microfinancing and saving schemes. Literacy of women is also an important aspect of the rural growth. A well educated women can look after the family better in terms of nutritional needs, healthcare, hygiene, family planning, managing their own finances. Thus, rural women are key agents for development. They play a catalytic role towards achievement of transformational economic, environmental and social changes required for sustainable development. Poverty eradication is key challenge for rural women. Now, community forestry. Community forestry is a branch of forestry where the local communities play a significant role in forest management and land use decisions. It involves the participation of local communities, government and NGOs at time. India has developed its own models of community forestry in form of joint forest management, social forestry and agroforestry. The success of community forestry depends on the following aspects: capability of land to support plantation, villagers' choice of land use and plantation, nature of support by government and non-government organization and local ecosystem. Next is social forestry. It is conversion of wasteland and common government land, including planting of trees or pasture, development on village common land, roadsides, along railways and canal bridges, into forest with the help of local people. The local people have to say in deciding the type of plantation. Aims and advantages of social forestry. It reduces the pressure on the forest for wood and other forest products, caters to the need of local community for wood and minor forest product. It reduces poverty by providing employment to local people. It also take part in development of cottage industries with the availability of forest products, utilization of land according to its productive capacity, increases the forest cover by afforestation of wasteland and unutilized common land, aesthetic and landscape important, stabilization of land by checking soil erosion and improvement of ecological conditions. Combating deforestation. Fight to save forest is combating deforestation, and it means to control loss of forest, replanting of native vegetation and restricting grazing and overuse to rejuvenate land to support local agriculture. Combating deforestation means we can make difference in the fight to save forest by consuming less, by avoiding single-use packaging, by eating sustainable food, etc. Deforestation is the complete destruction of indigenous forest or woodland for its economic value or conversion into other land uses like agriculture, pasture, industries, urban development, mining, dams, etc. Deforestation may also occur for obtaining fuel wood or timber. Causes of deforestation. Forests are an asset for the country. 33% of the land should be covered with forest. Unfortunately, the forest cover of our country is only 21% of the country's total land. Now, forests are destroyed mainly for industrialization, acquire a lot of forest land and use up a lot of timber. Conversion of forest into agriculture land to cater to the demands of the growing population. It means to meet the demands of an ever increasing population. Forest area is being converted to agriculture land. Next is urbanization is also grabbing up a lot of forest land. It means that a lot of forest land is being taken up by the urbanization. So urbanization is the process through which cities grow and high percentage of the population comes to
live in the city. Shifting agriculture or slash and burn agriculture is a practice destroying the forest cover. Shifting agriculture is a system of cultivation in which a plot of land is cleared and cultivated for a short period of time, then abandoned and allowed to revert to producing its normal vegetation while the cultivator moves on to another plot. Mining activities harm the forest by clearance of land surface for open cast mining or quarrying. Mining is one of the main causes of deforestation. The environmental impact of mining includes soil erosion, formation of sinkholes, loss of biodiversity, and contamination of soil. Groundwater and surface water also contaminated by chemicals from mining processes. Infrastructure developments like dams, reservoirs, roads, railways often need clearing of forest. Fires, accidental or deliberate, destroy forest in dry seasons and is very prevalent in Australia. Combating deforestation. It is estimated that more than 90 acres of forest is destroyed every day world over. This is an alarming rate which will lead to ecological imbalance. Thus, it is important to combat deforestation and save the earth from major disasters. Now, let us look at some steps that can be taken to combat deforestation. The first and foremost step would be to stop deforestation. One football field of forest gone every second. Since 2016, 28 million hectares of forest have been cut down every year, which is the one football field of forest lost every second of every day. Now the question is, why deforestation? The main drivers for the loss of forest are production of timber and the clearing of land for cattle, soy and palm oil production. So this is the reason why we should stop deforestation, and we can stop deforestation by practicing community forestry programs which involve the local people in forest conservation program, help in increasing the forest cover. Practicing joint forest management in partnership with local people conserves the forest. Banning the practice of slash and burn, which is also known as jhuming cultivation, where a piece of forest is burned to grow crop and then abandoned after a few years when the land becomes unproductive. Now the next step to stop deforestation is celebrating Van Mahotsav, that is the tree planting festival, to drive tree consciousness amongst people, and using alternatives to fuel wood, timber and other wood products, and avoiding the use of forest for other land uses like agriculture, building dams, roads, railways, industries, mining, etc. Now we can also contribute in combating deforestation by going paperless at home and in the office, and plant a tree where we can. By recycled, we can purchase recycled product and then recycle them again, and buy only what you will use, that is no wastage of wood or no wastage of commodities, and raise awareness in your circle and in your community. Reforestation. The term reforestation is similar to afforestation, that is the process of restoring and regenerating areas of woodlands or forests that may have existed long ago but were deforested or otherwise removed at some point in the past. Reforestation of large areas can be done through the use of measuring row for properly measured plant spacing and dibbers for making the hole in which a seedling or plant can be inserted. Reforestation is a process of planting trees in a forest where the number of trees has been decreasing, and afforestation is where new trees are planted or seeds are sown in the area where there were no seeds or no trees before, creating a new forest. There is one more difference between afforestation and reforestation. Afforestation is defined as a planting of forest in a land which was formerly infertile.
On the other hand, deforestation is defined as a depletion of the forest for human and commercial uses. Afforestation helps in converting a waste barren land into a green land. A database of the species of trees in original forest is required if indigenous forest has to be developed. If the forest is replacing with the only one species of tree and all other vegetation is prevented from growing back, a monoculture forest similar to agricultural crop would be the result. However, most reforestation involves the planting of different feedlots of seedlings taken from the area, often of multiple species. Energy plantation. Energy plantation is the practice of planting trees purely for their use as fuel. Terrestrial biomass, that is the wood plant, has been used since long time to generate fire for cooking and other purposes. In recent years, to meet the demand of energy, plantation of energy plants has been re-emphasized. Energy plantation means growing selected species of trees and shrubs that can be harvested in a short period of time and can be directly used as firewood or boilers, or they can be converted into methanol, ethanol or producer gas. These plantations help provide wood either for cooking in homes or for industrial use, so as to satisfy local energy needs in a decentralized manner. The two forms of energy forestry are short rotation coppice and short rotation forestry. Now in first type, that is the short rotation coppice, these are the crops of poplar or willow, and they can be grown for 2 to 5 years before harvest. And in short rotation forestry, where the crops of elder, ash, birch, eucalyptus, poplar and sycamore grown for almost 8 to 20 years before harvest. Now coming to the advantages of energy plantation. Now heat content of wood is similar to that of Indian coal. Wood is generally low in sulfur and not likely to pollute the atmosphere. Ash from the burnt wood can be used as valuable fertilizer. Utilization of erosion prone land for raising these plantations helps to reduce wind and water erosion, thus minimizing occurrence of floods. Minimized siltation and loss of nitrogen and minerals from soil help in rural employment generation. It is estimated that an hectare of energy plantation can provide employment for at least 7 persons, and selection of multi-purpose species provides a number of byproducts like oils, organic compounds, fruits, forage for livestock, etc. Now there is another example of advantage of energy plantation, that energy plantation is a method in which there is the cultivation of certain species of the plants can be used as a source of energy, and they can be used as an alternatives to the fossil fuel. This reduces the pressure on the fossil fuel, and due to the plantation there is the decrease in the problems like soil erosion. The pollution caused due to the decrease in the number of trees is also reduced. So these are the advantages of energy plantations. Forest harvesting of non-timber products. The United Nations Food and Agriculture Organization FAO defines non-timber forest products as products of biological origin other than wood derived from the forest, other wooded land and trees outside forest. They may be gathered from the wild or produced in forest plantations, agroforestry schemes, and from trees outside forest. In other words, NTFPs or the non-timber forest products, these are the any product other than timber that is naturally produced in forest and can be harvested for human use without cutting down trees. Think food items like nuts, berries, mushrooms and seeds, or non-food items such as oils, perfumes and medicinal plants.
So these are the very good examples of non-timber forest products. What are the uses of non-timber forest products? NTFPs include plants used for food, beverages, forage, fuel, medicines, fibers and biochemicals. Animals, birds and fish for food, fur and feather, as well as their products such as honey, lac and silk. Bamboo tree is also considered a non-timber forest product under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Act. What is the role of NTFP, that is the non-timber forest products, in sustainable development? NTFPs contribute to local economics, household food security and dietary risk minimization of forest dependent communities. Let us discuss the examples of non-timber forest product. Non-timber forest products include fruits, nuts, fungi, fibers, medicinal and ornamental plants, mosses, dyes, resins, gum, fuel wood, charcoal, leaves as fodder, poles for local constructions, honey, syrup, fish, as well as other animal products. Exploring alternative sources of livelihood. Most of the tribals living in and around the forest derive most of their basic requirements such as food, fodder, fuel, fruit and fibers from the forest. Extraction, processing and marketing NTFPs are still a major source of employment and income to the vast majority of these tribal people. Therefore, it is important to provide the tribal people with alternative sources of livelihood to save their forest from being overused and degraded. They can be given some land for agriculture or provided opportunities as daily wages employment. Forest-based activities provide a cushion to absorb surplus labor forces in the family and provide them with employment. They can be taught some skills like masonry, carpentry, pottery, handicrafts, etc., which would decrease the economic dependence on forest. Change in consumption pattern. Now, what are the causes of changing consumption patterns of consumer? Or in what way do our changing lifestyle and consumption pattern lead to biodiversity loss? Now, the changing consumption patterns have enormous implications for biodiversity. For example, a more meat-based diet requires more resources, that is land, water, energy, than a plant-based diet, thus affecting more habitat area and emitting more carbon dioxide. Now, question may arise, how does the consumption pattern affect the environment and climate change, or we can say the deforestation? Now, consumption leads to the direct creation of environmental pressure from the use of products and services. For example, through driving a car or heating a house with fossil fuel. Tourism is a fourth area caused high and growing environmental impact. Both every year 33 million acres of forest are cut down. Timber and harvesting in the tropics alone contributes 1.5 billion metric tons of carbon to the atmosphere. That makes up 20% of human-made greenhouse gas emissions. Now, improved agricultural practices along with paper recycling and forest management, balancing the amount of wood taken out with the amount of new trees growing could quickly eliminate the effects of deforestation. While purchasing wood products such as furniture or flooring, buy used goods or wood certified to have been sustainably harvested. Now, consume less. The easiest way to cut back on greenhouse gas emission is simply to buy less stuff made of wood. Think green when making purchases. When purchasing essentials such as groceries, buying in bulk can reduce the amount of packaging, plastic wrapping, cardboard boxes and other unnecessary materials. Sometimes buying more means consuming less. Managing forest grazing. Many studies have shown that properly managed forest grazing does not affect seedling establishment or growth in regenerating forest. Proper management of livestock can prevent trampling and browsing
of seedlings, and when seeded vegetation is grazed, its competition with tree seedlings is reduced. Overgrazing is a condition which occurs when plants are exposed to severe grazing for extended period of time or without sufficient recovery period. It is either caused by domesticated livestock or by overpopulations of native wild animals. Overgrazing occurs when plants are unprotected to intensive grazing for extended period of time or without enough recovery period. It can be result of either livestock in poorly managed agricultural applications or by overpopulation of native or non-native wild animals. And overgrazing reduces the usefulness, biodiversity and productivity of the land and is one cause of desertification, soil erosion and deforestation. And it is also considered to be a cause of the spread of invasive species of non-native plants and weeds. Overgrazing represents an environmental hazard. So, as far as causes of overgrazing are concerned, so overgrazing occur due to the number of increase in the number of livestock like cattle, goat, sheep. The grazing land can sustain. It means when the number of livestock is more than the green area. Now the next reason is when the livestock is grazed over the same patch of land again and again without giving it sufficient time to regenerate. The unavailability of food drive the cattle to eat away all the available grass and even uproot the grasses. The cattle owners might be so poor that they might not be able to stall feed the cattle. Now what is stall feeding or stall grazing? Zero grazing is also called stall feeding. The animals are kept in an animal house called a stall. The farmer harvests the pasture or green land or fodder and takes it to the animals. It is very popular in keeping dairy cows for milk. The other cause of overgrazing is the lack of knowledge and awareness of the consequences of overgrazing amongst people, especially the cattle owners. Now coming to the consequences or results or impact of overgrazing. Now overgrazing leads to heavy environmental consequences. Some of them are given below. Now here the overgrazing reduces the usefulness and productivity of land. It decreases the biodiversity of the place. It leads to soil erosion. Overgrazing leads to desertification. Overgrazing may also cause the spread of invasive species of non-indigenous plants and weeds, and overgrazing ultimately leads to decline of livestock rearing due to non-availability of fodder grasses. Now one indicator of overgrazing is that the animal run short of pasture or green land. Overgrazing by cattle reduces plant cover, eliminating the most desirable forage species first. This opens up the land to undesirable weeds, brush and trees and leads to increasing soil erosion and lower soil fertility. The end result of overgrazing is barren land, windstorms, erosion and floods. Now control of overgrazing is a simple method of soil conservation, and it is to restrict the grazing of cattle, sheep and goats on grasslands and within forest. There are other ways to control of overgrazing. The cattle should not be left to overgraze in a particular area. Instead, rotation of grazing area should be practiced. Sustainable grassland production is based on grass and grassland management. Social fencing is the practice of voluntary self-restraint on grazing of their cattle by the people. Stall feeding. Rearing small herd of good breed can also help to control overgrazing. Now why is controlled grazing important? Controlled grazing result in increased amount of forage harvested by animals, improved forage quality, extended grazing seasons, reduced fertilizer and herbicide applications, reduced labor and feed cost, fewer weeds and environmentally responsible grazing areas. National Forest Policy 1988.
The principal aim of forest policy must be to ensure environmental stability and maintenance of ecological balance, including atmospheric equilibrium, which are vital for sustenance of all life forms, human, animal, and plant. The National Forest Policy in 1988 made a very significant and categorical shift from commercial concern to a focus on the ecological role of the forest and participatory management. According to this, the forest management should include provision of sufficient fodder, fuel, and pasture, especially in areas adjoining forest, which is necessary in order to prevent depletion of forest beyond the sustainable limit. One of the strategy is development of massive need-based and time-bound program of afforestation and tree planting with particular emphasis on fuel, wood and fodder development on all degraded and denuded lands in the country. The rights and concessions including grazing should always remain related to the carrying capacity of the forest. The capacity itself should be optimized by increased investment, silviculture research and development of the area. Stall feeding of cattle should be encouraged. The requirement of the community which cannot be met by the rights and concessions so determined should be met by development of social forestry outside the reserved forest. Grazing in forest areas should be regulated with the involvement of the community. Special conservation areas, young plantation and regeneration areas should be fully protected. Special conservation areas, young plantations and regeneration areas should be fully protected. Grazing and browsing in forest area need to be controlled. Adequate grazing fees should be levied to discourage people in forest area from maintaining large herd of non-essential livestock. Alternatives to timber. Now, use of efficient wood stoves which use dried wood and animal dung or dung cakes. Use of biogas is another effective alternative to fuel wood. The sludge residue can be used as manure in the agricultural field. Solar cookers can be encouraged. Use of pellets made of cow dung, sawdust or waste from the sawmilling can reduce the dependence on fuel wood. Rice husk pellets can also be used. Use of kerosene rationed by the government may also help to reduce the uses of fuel wood. Pellet made from oil cakes, corn, wheat or bagasse can be other substitute for fuel wood. Alternatives to timber in building industry. Timber is extensively used to construct houses mainly in the cold countries. Prefabricated concrete and metals unit with appropriate thermal treatment could be used instead. The door and window panels can be replaced by metal frames. These days, polyvinyl doors and windows are also being used. Alternatives in the railways. The wooden railway sleepers can be replaced by concrete sleepers and metal sheets could be replaced by plywood and timber in wagon fabrication. Alternatives in furniture industry. The use of iron, steel and plastic furniture. These days, eco-friendly office furniture is being used which are made of eco-friendly materials like bagasse. Fixed seating can be made of concrete or marble and mattresses can be placed over it to make it comfortable. Alternatives in paper industries. Material containing natural cellulose such as bagasse, marsh reed can be beaten, pulped and made into paper. Recycling of paper also saves millions of trees. Timber recycling or wood recycling is the process of turning waste timber into usable products. Recycling timber was popularized in the early 1990s as issues such as deforestation and climate change became important concerns. It reduces the pressure on forest. Recycling timber is the environmentally
friendliest form of timber production and is very common in countries where supplies of old wooden structures are plentiful. Timber can be chipped down into wood chips which can be used to power houses or power plants. The most common use for recycled timber is as a raw material for chipboard manufacture. Horticulture mulch can also be made from recycled wood. Animal bedding is another option. Surfacing for landfill cover and compost are other options for wood waste. Paper recycling is the process of turning waste paper into new paper products. Recycling 1 ton of paper saves roughly 17 trees. There are 3 categories of paper that can be used as feedstock for making recycled paper. Number 1, millbroke, that is the pre-consumer waste and post-consumer waste. Millbroke are paper trimming and other paper scrap from the manufacturer stage of paper and is recycled internally in the paper mill. Pre-consumer waste material are the one which left the paper mill but was discarded before it was ready for consumer use. Post-consumer waste are material discarded after consumer use like old magazines, old newspapers, office papers, old telephone directories and residential mixed paper, that is RMP. Paper suitable for recycling is called scrap paper. It can be used to make handmade recycled paper and cardboard. Recycled paper is often used in the packaging industry. Recycling of paper reduces the load of waste collection and disposal. Sustainable agriculture, integrated pest management or IPM, also known as integrated pest control, that is IPC, and is a broad based approach that integrate practices for economic control of pest. The UN's Food and Agriculture Organization defines IPM as the careful consideration of all available pest control techniques and subsequent integration of appropriate measures that discourage the development of pest populations and keep pesticides and other interventions to level that are economically justified and reduce or minimize risk to human health and the environment. It includes managing insects, plant pathogens and weeds. Perry Atkinson and Ray F. Smith received the 1997 World Food Prize for developing and spreading IPM worldwide. IPM is an effective and environmentally sensitive approach to pest management that relies on combination of available pest control methods used to manage pest damage by the most economical means and with the least possible hazard to people, property and the environment. Aims. The aims of integrated pest control are as follows. First, set action threshold. Before taking any pest control action, first sets an action threshold, that is a point at which pest populations or environmental conditions indicate that pest control action must be taken. Monitor and identify pest. Not all insects, weeds and other living organisms require control. Many organisms are not harmful and some are even beneficial. Prevention. Prevention is better than control, hence IPM aims at prevention of pest as a first line of pest control. IPM programs work to manage the crop, lawn or indoor space to prevent pest from becoming a threat. Control. Once monitoring and identification is done and it is confirmed that pest control is required and preventive methods are no longer effective or available, IPM programs then evaluate the proper control method in terms of effectiveness and risk. Biological control. It uses biological control in form of microorganisms and predator insects or pheromones. Advantages. Let us analyze the advantages of IPM. It manages pest damage by the most economical means, least possible hazard to people and property, least possible damage to environment, reduces the application of pesticides,
can be applied to both agricultural and non-agricultural settings such as the home, garden and workplace. Monitoring and identification removes the possibility that pesticides will be used when they are not really needed, or that the wrong kind of pesticides will be used. Control methods can be very effective and cost efficient, does not kill non-target organisms, reduces health problems of the workers. Disadvantages of IPM. Integrated pest management system are extremely complex and require a high level of understanding to utilize. An IPM system of pest control involves a lot more time. It's sometimes more costly than the traditional method of spraying pesticides to eliminate pests. Needs constant monitoring by trained person. Now coming to the new variety of crops, first is genetically modified organism, that is GMO, is an organism whose genetic material has been altered using genetic engineering techniques. They include microorganisms such as bacteria and yeast, insects, plants, fish and mammals. Genetic modification involves the mutation, insertion or deletion of genes. When genes are inserted, they usually come from a different species whose desired characters are inserted. Uses of GMO. GMO are used in biological and medical research, production of pharmaceutical drugs, experimental medicines like gene therapy and agriculture. Transgenic plants have been engineered or scientific research to create new colors and flavor in plants. Nutrition value produce disease resistant plant and high yielding variety crops. The first transgenic, that is a genetically modified animal, was produced by injecting DNA into mouse embryo, then implanting the embryo in female mice. Genetically modified animals currently being developed can be placed into 6 different broad categories based on the purpose of the genetic modification. And the categories are: to research human diseases, to produce industrial or consumer products like fibers and multiple uses, to produce product intended for human therapeutic use like treatment of hemophilia and sickle cell anemia, to enrich or enhance the animal's interactions with human, example hypoallergic pets, to enhance production or food quality traits like faster growing fish, featherless hen, pigs with less saturated fat, dairy cow genetically modified to produce more milk, etc. To improve animal health to make them disease resistant. Environmental risk of genetically modified crops. In a study in the early 1990s, rats were fed genetically modified, that is GM tomatoes. The rats refused to eat them. When force fed, several of the rats developed stomach lesion and 7 out of 40 died within 2 weeks. Agency scientists warned that GM foods in general might create unpredicted allergies, toxins, antibiotic resistant diseases and nutritional problems. High yielding variety crops, that is HYV seeds played vital role in the progress of agriculture. They are considered as miracle seeds. The yield of traditional variety of seed is low. High yielding varieties seeds are developed to get higher yielding of crops. The main advantages of high yield variety seeds are yielding of form is high as compared to the use of traditional seeds. HYV seeds give better quality yield. The maturity time of crop is less. Multiple crops can be grown easily. Seeds are mostly flood and drought resistant. Net agricultural income increases many-fold. HYV seeds helps socio-economic transformation for farmers. Paddy, wheat, maize, jowar, bajra and other crops utilized HYV seeds. Disadvantages of HYV seeds. HYV seeds yield more under irrigated conditions. They need higher doses of fertilizer and they are highly susceptible to pest. Now hybrid seeds. Hybrid seeds are the one produced by cross-pollinating desired varieties of plants. Farmers and gardeners have been cultivating new plant varieties for thousands of years through selective breeding. They did so by cross-pollination to different but related plants
over 6 to 10 plant generations, eventually creating a new plant variety. By selectively cross-pollinating related plants in this way, farmers could create varieties that were healthier and stood up to the farmer's microclimate, their soil, their weather pattern, their predatory insects, has desired color and flavor. Disadvantages of hybrid seeds. The biggest disadvantages are hybrid seeds is that they don't reproduce true in the second generation. That means that if you save the seeds produced by F1 hybrid plants and plant them, the plant variety that will grow from those seeds may or may not share the desired traits you selected for when creating the first generation hybrid seed. Mixed cropping. Growing two or more crops simultaneously on the same field is known as mixed cropping. It is also known as multiple cropping. Generally, the one line of main crop is alternated by leguminous crop, which balances the nitrogen content of soil. Example, wheat and chickpea works well. The classic example of mixed cropping is that of the American three sister, that is maize, bean and cucurbits, squash and pumpkins. Advantages of mixed cropping. It reduces risk and gives some insurance against failure of one of the crops. Mixed cropping do not allow the growth of weeds and keeps down pests. Mixed cropping balances soil nutrients like nitrogen, and there is no need to pay extra attention to any of the crop as all the crops are of same duration and similar nutrient requirements, so each crop receive equal care. Disadvantages of mixed cropping. If the crops are not chosen properly, there are chances of competition between the crops for nutrients, and it reduces the fertility of soil as many crops are grown in the field at a time. Next is regenerative farming techniques. First is intercropping. Farming techniques in which two or more crops are grown together. Each must have adequate space to maximize cooperation and minimize competition between the crops. The goal of intercropping is to produce a greater yield in a given piece of land by making use of resources that would otherwise not be utilized by a single crop. Example of intercropping strategies are planting a deep-rooted crop with a shallow-rooted crop, or planting a tall crop with a shorter crop that requires partial shade. An example is the tropical multi-tier system where coconut occupies the upper tier, banana the middle tier, and the pineapple, ginger or leguminous fodder, medicinal or aromatic plants occupy the lowest tier. Second is crop rotation. It is the practice of growing a series of dissimilar crops in the same area in sequential seasons. Usually, main crop is replaced by leguminous crop, which has the ability to fix nitrogen, for example, corn and soya bean, rice and oats, etc. Advantages of crop rotation. By using crop rotation, farmers can keep their field under continuous production instead of letting them lie fallow. Reduce need the artificial fertilizers, prevents soil erosion as the soil is not kept fallow, adds nutrients to the soil, controls pest by breaking the pest cycle. Agroforestry. Planting trees along the agricultural fields increases the tree cover. Agroforestry is a community forestry where agriculture is practiced along with tree plantation and animal husbandry. Aims and advantages of agroforestry. Reduces pressure on the forest for obtaining timber and non-timber forest product. Proper utilization of farm resources. Best utilization of resources at a place like land, manpower, livestock, ecological factors, etc. The trees help in checking soil erosion by wind. It is a self-sustaining system where the humans, agriculture, forest, trees and livestock fulfill each other's need. The agricultural waste and trees provide fodder to livestock and they in turn provide manure. Polyvarietal cultivation. Planting a plot of land with several varieties of the same crop. It can be compared to alternate cropping.
Advantages of polyvariety cultivation: it provides crop insurance against crop failure due to unpredictable weather conditions or epidemics. Increase in total land productivity per unit of land area. Judicial use of resources like land labor and agricultural inputs. Disadvantages of polyvarietal cultivation: yield may decreases as crop differ in their competitive ability. Improved machines cannot be used due to difference in crops. Different amounts of fertilizers and irrigation is required. Harvesting is difficult. Next is polyculture. So polyculture is the practice of growing multiple crops on one farming site, imitation of a natural ecosystem. It is opposite of monoculture, where only one crop is planted on the farm. Advantages of polyculture: the diversity of crops avoids the susceptibility to disease, encourages biological pest control. The greater variety of crops provides habitat for more species, increasing local biodiversity. Less chances of crop failure as there are multiple crop plantation. Less depletion of soil nutrients as every plant has different nutritional requirements. Disadvantages of polyculture: it requires a lot of labor and no single crop is cultivated in large amount. Conservation tillage: as its name implies, conservation tillage conserves soil by reducing erosion, both erosion by wind and water. It is an important part of sustainable agriculture system. In other words, conservation tillage is any method of soil cultivation that leaves the previous year's crop residue such as corn stalk or wheat stubble on field before and after planting the next crop to reduce soil erosion and runoff. The Conservation Technology Information Center, that is CTIC, defines conservation tillage as any tillage and planting system that leaves at least 30% of the soil surface covered by residue after planting. Conservational tillage like moldboard plowing leave the soil surface bare and loosen soil particles, making them susceptible to the erosive forces of wind and water. Conservation tillage practices reduce erosion by protecting the soil surface and allowing water to infiltrate instead of running off. Conservation tillage practices are grouped into three types. First is no-till, second is ridge-till, and third is mulch-till. As no one conservation tillage method is best for all fields, the farmers may choose one of these methods. Decisions should be based on the severity of the erosion problem, soil type, crop rotation, latitude, available equipment, and management skills. No-till leaves the soil undisturbed from harvest to planting. Planting is done in a narrow, that is 6 inches or less, seedbed or slot. Ridge-till involves planting into a seedbed prepared on ridges. Mulch-till is any other reduced tillage system that leaves at least 1/3 of the soil surface covered with crop residue. Advantages of conservation tillage: reduces soil erosion up to 60 to 90% and susceptible for erosion prone areas. Reduces the need of fertilizers as the plant residue decompose and add nutrient to the soil. Reduces the water requirement. Crop residue reduces the evaporation loss from the soil, facilitates infiltrations and reduces runoff. Infiltration of more water increases the groundwater. Groundwater and surface water contamination due to use chemical fertilizer and pesticides is reduced. Economical to the farmers as it requires less labor, no use of chemical fertilizers and pesticides, less irrigation, less use of energy, etc. Disadvantages: fungi and bacteria. Conventional till buries crop residue which destroy many fungal and bacterial pathogens, but under conservation tillage, severity of some diseases can increase, potentially requiring more use of chemicals. Tillage is widely used to control weeds directly and by burying their seeds. There is particular concern about perennial weeds becoming a problem after a few years of conservation tillage. In addition, there are concerns that more of the herbicides will be absorbed
on the crop residue rather than reaching the soil where it is effective at killing weeds. Deep plowing destroys many insects by exposing them to birds and weather and can physically hinder their emergence. This doesn't happen under conservation tillage. Trickle drip irrigation, and this method of irrigation has been developed to conserve water. Water is supplied to the plants without any wastage, and it is also known as micro irrigation. Trickle drip irrigation is a controlled method of irrigation where water is slowly provided to a very specific area close to the roots of the plant by a network of drip emitters. Tiny nozzles about the size of a quarter doesn't hang above the plant and drip but are laid along the ground. Linked to a feeder hose, they provide a slow and steady flow of water. A control box regulates the water pressure. Advantages of trickle drip irrigation: it is a controlled method of irrigation that saves gallons of water per minute. Flow of water is so slow that it is easily absorbed into the ground. Reduces wastage of water through runoff as in case of normal irrigation. No chance of water logging. Weeds cannot absorb water, hence no weed growth. Operational cost less. Fertilizers can be used with maximum efficiency and energy cost is reduced. Now, disadvantages of trickle drip irrigation: high initial cost. The heat of sun can cause damage to pipes, can cause clogging of pipes if water is not filtered properly. Moisture may not be distributed evenly. Salinity problem may occur. Sometimes there might be germination problem. New organic fertilizers. Integrated nutrient supply program. The basic concept of integrated nutrient supply management is adjustment of plant nutrient supply to an optimum level for sustaining the crop productivity. It involves proper combination of chemical fertilizers, organic manure, crop residue, nitrogen fixing plants and biofertilizers suitable to the system of land use and ecological, social and economic conditions. Integrated plant nutrient management first operates at plot level, optimizing the utilization of plant nutrients from different sources which are locally available in order to improve agronomic efficiency of nutrients and at the same time reduces the loss of nutrients. The main aims of the integrated plant nutrient management are to maintain soil productivity, to ensure productive and sustainable agriculture, to reduce cost of purchase of inputs by using farm manure and crop residue, to use biofertilizers, green manure, leguminous plants, to prevent degradation of environment, social and economic aspiration of the farmers. Now, common consideration faced by the farmers in the implementation of integrated plant nutrient programs are non-availability of farmyard manure in sufficient quantity, difficulty in growing green manure, non-availability of soil testing facilities, non-availability of water, lack of knowledge of integrated plant nutrient program, non-availability of new improved seeds and credit facilities not available to the farmers. Organic manure. Organic farming is the need of the hour to get rid of all the ill effects of chemical fertilizers and pesticides. Plant removes a large quantities of plant nutrients in form of NPK, that is NPK resulting in the depletion of the nutrient reserve. The regular recycling of organic waste in the soil is the most efficient way of maintaining the required level of soil organic matter. Now, organic manure is derived from plant or animal matter. Naturally occurring organic matter include worm casting, peat, seaweed, guanolumic acid, etc. And processed organic manure include compost, vermicompost, blood meal, bone meal, fish meal and sewage sludge are also widely used as organic manure. Advantages of organic manure. Organic manure provides all the nutrients required by the plants in a small quantity. It helps in maintaining CN ratio, that is carbon and nitrogen ratio in the soil, helps in increasing soil fertility and productivity, improves physical, chemical and biological properties of the soil, improves structure and texture of soil, increases water holding capacity of the soil
and due to increase in biological activity, the nutrients at the depth of the soil are made available, and it also minimizes the loss of moisture. Green manure. Green manure refers to the crop residue left after harvesting and buried under the soil. These are often the cover crops grown especially for this purpose, for example, sweet clover, alfalfa, vetch, berseem, clover, etc. These are leguminous plants grown for a specific period of time and then plowed under the soil. Advantages of green manure: they are leguminous and fix atmospheric nitrogen in the form that can be absorbed by the soil, and it acts as soil acidifying matter because that decreases the alkalinity of the soil. The nutrients in the green manure decompose, are released and made available to the next crop. It improves soil structure and biomass, and it also improves water infiltration. Cover crop suppresses the weeds, controls soil erosion, reduces instance of pest and disease infection. Biofertilizers are the living microorganisms that are used to enhance nutrient availability to the plants. When applied to the seed, plant surface or soil, promotes the growth of plants by increasing the supply of availability of nutrients to the host plant. They help plant by nitrogen fixing, solubilizing phosphorus, and by synthesizing growth promoting hormones. Some examples of biofertilizers are rhizobium, azobacter, azospirillum, and blue-green algae, that is BGA. Advantages of biofertilizers: reduces the use of chemical fertilizers and pesticides. Microorganisms restore the soil's natural nutrient cycle, builds organic matter in soil, enhances soil fertility, eco-friendly and cost-effective. Sewage sludge. It is a semi-solid residual matter left after the treatment of wastewater from various sources, and these are decomposed by microorganisms to produce biosolids that can be used as fertilizers. Domestic sludge add organic matter to the soil. Industrial sludge is often used as a source of micronutrients like zinc and molybdenum, but the main disadvantages lies in the fact that it may contain heavy materials or heavy metals which are potential health hazards, and these may be on account of leaching of these chemicals into groundwater, runoff into fresh water, and biomagnification in the food chain. However, it can be used in non-crop lands like public gardens, golf course, house lawn, etc. Gene bank. Gene banks are the type of biorepository which preserve genetic material. It is a place where scientists store DNA information from plants and animals so that they can use it to reintroduce desired genes back into a gene pool when required. It is a type of ex situ conservation of organisms, seeds, tissue or reproductive cells. Plant genetic material in a gene bank is preserved at -196 degrees Celsius in liquid nitrogen and can be unfreezed and used. Different types of gene banks are seed bank, tissue bank, cryo bank, pollen bank, field gene bank, etc. Objectives of gene banks: conservation of genetic material of organism, preservation of biodiversity, store accession or over long period of time, duplicate and regenerate the material required from the preserved genes, offer resource for breeding of hardier, improved pest and disease resistant crops, improve quality and yield rates of the crops, documents and store information about the plant material in collection. ICSE Hyderabad gene banks serve as a world repository for the germ collection of 5 crops: sorghum, pea, millet, chickpea, pigeon pea and groundnut, and 6 small millets with germ plasm accession from 144 countries. It is one of the largest international gene bank. Now next topic is global food security. Food security refers to the availability of food and one's access to it. A household is considered food secure when its occupation do not live in hunger or fear of starvation.
The Food Agriculture Organization of the United Nations, FAO, is a specialized agency of United Nations that leads international efforts to defeat hunger. Serving both developed and developing countries, FAO acts as a neutral forum where all nations meet as equal to negotiate agreements and debate policy. FAO is also a source of knowledge and information and helps developing countries and countries in transition to modernize and improve agriculture, forestry, and fisheries practices, ensuring food nutrition and food security for all. The World Food Summit of 1996 defined food security as existing when all people at all time have access to sufficient, safe, nutritious food to maintain a healthy and active life. Commonly, the concept of food security is defined as including both physical and economical access to food that meets people's dietary need as well as their food preferences. In many countries, health problems related to dietary excess are an ever-increasing threat. In fact, malnutrition and food-borne diarrhea are become double burden. Food security is built on three pillars. First is food availability, that is sufficient quantities of food available on the consistent basis. Second is food access, having sufficient resources to obtain appropriate food for a nutritious diet. And third is food use, appropriate use based on knowledge of basic nutrition and care as well as adequate water and sanitation. There is a great deal of debate around food security, with some arguing that there is enough food in the world to feed everyone adequately. The problem is distribution. Future food need can or cannot be met by current level of production. Nutritional food security is permanent. Nutritional food security is paramount or no longer necessary because of global trade. Globalization may or may not lead to the persistence of food insecurity and poverty in rural communities. Issues such as whether household get enough food, how it is distributed when the household, and whether that food fulfills the nutrition need of all members of the household, and whether show that food security is clearly linked to health. Now, how to achieve food security? Rapid economic growth, more rapid growth in agricultural sector, slower population growth by boosting agricultural sciences and technology, securing poverty rights and access to finance, enhancing human capital through education and improved health. Food aid and right answer. Food aid in general is about providing food and related assistance to tackle hunger, either in emergency situation or help with deeper, longer term hunger alleviation and achieve food security, where people do not have to live in hunger or fear of starvation. Now, food aid in times of natural calamities like famine, flood, earthquakes, etc. is always a welcome gesture, but dependence on food aid by an overpopulated, hunger-stricken, poor nation is not appreciated. They should find a solution to become self-sufficient and not rely on other countries. The countries would only support them in case of surplus food to their own citizens' need. Also, chances of adulterated, low grade, low nutrient food reaching them is often high. Biodiversity. What is biodiversity? Biological diversity or biodiversity is a term we use to describe the variety of life on Earth. It refers to the variety of living organisms, that is plants, animals, their habitat, their genes, and even the ecosystems. Biodiversity is the foundation of life on Earth. It is crucial for the functioning of ecosystems, which provide us with products and services without which we cannot live. It is the measure of the health of the ecosystems. Greater the biodiversity, better is the health of the ecosystem. The term biodiversity was used first by wildlife scientist and the conservationist Raymond F. Deschman in the year 1968. A biodiversity hotspot is a region
with a high level of endemic species, while hotspots are spread all over the world. The majority are forest areas and most are located in the tropics. The oceans, especially the coral reefs and the wetlands, are the hottest spots of aquatic biodiversity. Biodiversity can be divided into three kinds: species biodiversity, ecosystem biodiversity, and genetic biodiversity. The Convention on Biological Diversity, that is CBD, known informally as the Biodiversity Convention, is an international legally binding treaty and initiated by United Nations Environmental Programme UNEP. The convention was opened for signature on 5th June 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development, that is the Rio Earth Summit. The convention has three main goals. First, conservation of biological diversity. Second, sustainable use of its components. And third, fair and equitable sharing of benefits arising from genetic resources. Biodiversity at risk due to human activities. Extinction has been natural routine even in the past from a geological perspective. There has been episodes of mass extinction like that of dinosaurs in modern times due to human activities. Species and ecosystems are threatened as never before. Let us study the human actions that lead to loss of biodiversity. First, overpopulation. The loss of a species and ecosystem can be attributed to accelerating transformation of Earth due to the growing human population. Second, overuse of resources. The growing population consume more resources. We have degraded or destroyed roughly half of the world forest. We are fast depleting the fossil fuels. Consumerism is leading to overuse of minerals too. Fresh water resources are being overused and polluted. We even overharvest the ocean resources. These are definitely leading to disappearing of species and destruction of ecosystem. Overhunting and poaching has been a significant cause of extinction and threatening of a number of species. Tigers, rhinos, passenger pigeon, snowy ergot are few examples. Over-harvesting for food, medicine, fashion and other potential uses over the past year is also a cause of extinction of species. Habitat loss, degradation, fragmentation is an important cause of extinction. Every species has a specific food and habit need, which when altered or destroyed make them vulnerable to extinction. Deforestation is the major reason for habitat destruction. Habitat destruction occurs due to conversion of forests to other land use like agriculture, infrastructure development, human settlements, dams, etc. Invasion by the non-native species is another important cause of extinction. Endemic species often cannot compete for food and become prey for the introduced species. Pollution. The industrial development and transportation has increased the pollution of air, water and soil to such a level that many of the sensitive species perish. Climate change. Changing global climate is a threat to species and ecosystem. Distribution of species is largely determined by the climate, and if the climate changes, the species are not able to adjust. Man, the super consumer. Impact of his action on the earth's resources, reason for concern, economic, ecological and aesthetic. The word resources is used to describe the materials present in large quantities and held in reserve for future use. If these resources occur in nature, they are called natural resources. Natural resources are derived from the environment and are usually distributed. The resources can be living like forest, wildlife, microorganisms, or non-living like land, water, air, fossil fuel and minerals, ores. Types of natural resources. Natural resources can be divided on the basis of renewability or renewable and non-renewable resources. Renewable natural resources.
These are those resources which have the capacity to replenish or renew by themselves naturally. Water, soil and living organisms are some examples of renewable resources. They are continuously available and their quantity does not decrease considerably due to overuse by humans. Non-renewable natural resources. These resources which cannot be renewed or take a long time to renew are called non-renewable resources. Coals, petroleum, minerals, ores, etc. are examples of non-renewable resources on earth. Resources are renewable when their rate of consumption exceeds the rate of replenishment. A good example of this are fossil fuels, which are in the category because their rate of formation is extremely slow. That is, it takes millions of years for formation. Therefore, they are considered non-renewable resources. Factors that lead to depletion of resources: overuse or irrational use of resources. The greed of human beings lead to the overexploitation and overuse of the natural resources. Overfishing leads to decline in fish resources. Continuous agriculture leads to decrease in soil fertility. Irrational use means not using our resources. That is, we must use our resources wisely and without wasting them. Using shower for bathing instead of bucket is irrational use of water resources. Using car to transport single individual is another example of wasting precious fossil fuel. A carpool or public transport can be an alternative option. Non-equitable distribution of resources. Natural resources are not equally distributed throughout the Earth's surface. Hence, there is an overexploitation of the resources where it is found to supply them to the place where they are not found. In addition, there lies cost of transportation of these resources to the place of demand. Technological and industrial development. Development in science and technology has led to development of new products and establishment of more industries. The newly set up industries raise the demand of resources like minerals, fuel, water, land, etc. These industries not only deplete the natural resources but also contaminate the air, water and soil with the pollutants they release. Overpopulation. The unprecedented rise in population is one of the most important causes of resource depletion. The rise in population increases the demand for food, shelter, clothing, water, electricity, transportation, healthcare, educational institutions, etc. Increase in demand of food leads to intensive cropping, leading to decrease in soil fertility and conversion of forest into cropland. Infrastructure development leads to change in land use pattern. There is increase in demand of fossil fuel and more generation of waste. Major consequences of resources depletion. Resource depletion adversely affect the ecological balance. Natural resources are interconnected and so impact created by one resource affect the human being in numerous ways. Imbalance in nature. Due to human activities like industrialization, transportation, mining and deforestation, etc., the ecological balance has been disturbed. For example, increased in deforestation leads to an increase in the temperature and change in rainfall pattern. Due to changes in climate and overuse of land, desertification has taken place in many areas. Deforestation leads to soil erosion, floods, drought, less absorption, storage and release of gases like carbon dioxide and oxygen. Due to increase in the temperature, wildlife which is sensitive to climate. Shortage of material. Nature takes its own time to replenish its resources. Depletion of resources causes shortage of material. This is caused by industrialization, urbanization and overpopulation. The demand exceeds the supply. The process of soil formation is a slow process. The inch of soil is formed in about
200 to 1000 years. Fossil fuels like coal, oil, etc. take millions of years to form. Wood can be obtained from trees. After about 15 to 20 years, saplings grow into a tree. As a result of growing demand, fossil fuels are being depleted at a rate of 1 lakh times faster than they are being formed. At the present rate of uses, the coal resources and likely to last for about 200 years. Similarly, crude oil reserves would be exhausted in just 50 years. These resources are non-renewable and takes millions of years to form. It is therefore necessary to reduce the dependence on such energy sources and look for alternative sources of energy like solar energy, tidal energy, wind energy, geothermal energy, which are renewable and eco-friendly. Struggle for existence. There would be a struggle between human beings and animals for the available resources. Most of the time, human beings win. They destroy the natural habitat of the species living there and they may become extinct. Slacking of economic growth. The economic growth of a country is dependent on the amount of resources it has. More the amount of resources, more is the number of goods a country can produce and export, leading to an increase in the economic growth. In countries like India, which are overpopulated, there is overconsumption of resources for satisfying the needs of its own citizens. Therefore, only a little is left for export, thereby causing the slackening of economic growth. Other effects related to depletion of resources. Removal of topsoil. Topsoil is the upper layer of the soil which is most productive and fertile layer of the soil. It is important for agricultural productivity and growth of vegetation. Topsoil may be removed due to deforestation, faulty agricultural practices, runoff due to heavy rain, construction activities, etc. Deforestation results in rise in temperature, less rainfall due to less transpiration, soil erosion, decrease in forest productivity, loss of habitat for large number of species of flora and fauna. Desertification is a desert-like condition created due to soil pollution, soil erosion, intensive cultivation, salinization of soil due to excessive addition of chemical fertilizers and pesticides. There is no scope of growth of any vegetation on such lands until soil conditioning is done. Depletion of groundwater. The water that seeps into the ground is very important water resources. It is a source of drinking water for the cities with no water bodies nearby. This water fills up the space in the aquifer. Excessive use of groundwater for fulfilling the needs of the growing population and irrigation not only depletes it, but there is also danger of caving in the ground due to vacuum created by the depletion of water. Conservation of resources. Use of renewable resources such as solar power, wind energy, tidal energy, geothermal energy not only reduces the pollution but also saves the non-renewable fossil fuels like coal and petroleum. Use of alternate sources of energy like CNG, biogas, biofuel, gas oil, ethanol, hydrogen gas, algal fuel, etc. can also help in conservation of the fossil fuel and wood as a source of energy in rural areas. Using biofertilizers and biopesticides instead of chemicals will prevent degradation of soil and even stop contamination of groundwater. Stop all activities leading to deforestation. Start afforestation programs in cities, rural areas and forest. Social forestry and agroforestry must be carried out. Stop soil erosion but not allowing cutting of trees and control overgrazing. Stop unnecessary wastage of water and water pollution. Trickle drip irrigation and using recycled water for irrigation. Use of carpool and public transport. Use of 4R policy of refuse, reduce, reuse and recycle.
Rainwater harvesting is an age-old method of water conservation. The rainwater is collected in traditional rainwater harvesting systems like Johad, Kund, tanks, temple ponds, etc. or modern rooftop water harvesting system. Conserving our genetic resources in situ and ex situ. Wildlife is an essential component of the ecosystem. It makes the ecosystem stable. Any activity that disturbs them brings adverse changes in the biosphere. Two main strategies to conserve wildlife are in situ conservation. It means conservation of wildlife in its natural surroundings or in its natural habitat. It ensures protection of the ecosystem of the original habitat and include protected areas like national park, wildlife sanctuaries and biosphere reserves. Ex situ conservation. It refers to the protection of the species outside their natural habitat in artificial conditions under human care. Examples are botanical garden, zoo, aquarium, park, agriculture research center, gene banks, tissue culture and DNA banks, etc. Wildlife protected area, that is in situ conservation. Objectives. The objectives of the protected areas, whether a national park, wildlife sanctuary or biosphere reserve, are common. They are protection of natural habitat through controlled limited use of species, maintenance of viable number of species, establishment and protection of areas through legislation for the conservation of wildlife, educating the public or wildlife protection. Conducting research in specific areas of wildlife. National park. National park is an area assigned by the government strictly for the betterment of the wildlife. Human activities like forestry, grazing or agriculture is not permitted. Example, Jim Corbett National Park in Uttarakhand is famous for tigers, elephants, leopards and many other species of deer. Kaziranga National Park in Assam is famous for rhinoceros, Indian bison, swamp deer, pygmy hawk, etc. Sundarban National Park in West Bengal is famous for Bengal tigers. Kanha National Park in Madhya Pradesh is famous for tigers, Barasingha, deers, etc. Wildlife sanctuary. Wildlife sanctuary is a protected area that is reserved for the conservation of wildlife, plants and animal species. Human activities like harvesting of timber, collection of minor forest product and private ownership rights are allowed. Bharatpur Bird Sanctuary in Rajasthan also attracts migratory birds in winter. Gir Lion Sanctuary in Gujarat is famous for Asiatic lions. Kedarnath Sanctuary in Uttar Pradesh is famous for brown antlered deer. Biosphere Reserve. Biosphere Reserve is a special category of protected area of land or coastal environment which aims at conservation of ecosystems and genetic resource contained in them. Multiple land use is permitted by designating various zones. These are natural or core zone. This is the innermost zone where no human activity is allowed and is legally protected. As you can see in the figure 9.1, three zones of a biosphere reserve where you can see the core or natural zone, buffer zone. This is the middle zone of resource use strategies where limited human activities are allowed. Transition zone. This is the outermost area of active cooperation between management and the local people. In these zone, activities like settlements, cropping, forestry, recreation and economic uses continue in harmony with conservation goals. Captive breeding, ex situ conservation. It refers to breeding of animals that are endangered in restricted or captive areas such as zoo, aquariums, research centers, etc. For example, the Nandankanan Zoological Park in Odisha is famous for captive breeding of white tigers and ghadial. Threatened with extinction, ex situ conservation of endangered species is a good choice. The zoo not only serves as a place of entertainment but also as a place where ex situ conservation is carried out. Advantages of captive breeding. It helps in conserving rare and endangered species.
It helps in reintroduction of species in their natural habitat where their number is less. It provides necessary conditions for breeding of animals where their habitat is destroyed, altered, or affected by diseases. It helps in preserving the gene pool to avoid problems of interbreeding. It protects the carrying mother and offspring from predators and natural calamities. It provides food which might have been scarce in its habitat. Conservation strategies at national and international levels. Wildlife Protection Act 1972. An act to provide for the protection of wild animals, birds and plants and for matters concerned therewith. Aims: appointment of authorities under the act such as directors, chief wildlife warden and other officers. Constitution of Wildlife Advisory Board. Allocation of duties of Wildlife Advisory Board. Prohibition of hunting. Maintenance of record of wildlife killed and captured. Hunting of animals to be permitted in certain areas. Prohibition of picking, uprooting, etc. of specific plants. Declaration of Sanctuary, National Park, Biosphere Reserve. Constitution of Central Zoo Authority. Prohibition of dealing in trophies, animal articles, etc. derived from scheduled animals. Punishment for wrongful seizures and offences. Rights scheduled tribes to be protected. Project Tiger 1972. Project Tiger was launched with the support from WWF in 1973 as centrally sponsored scheme of Government of India. The main aim was to protect the tigers maintained in a viable number and its habitats. Initially, the Project Tiger started with 9 tiger reserves covering an area of 16,339 square kilometer with a population of 268 tigers. At present, there are 27 tiger reserves covering an area of 37,761 square kilometer with a population of 1498 tigers. Many NGOs and corporate have joined hands to save the tigers since then. A tiger reserve consists of a core or critical tiger habitat which is to be managed as an inviolate area where no human activities are allowed and a buffer or peripheral area immediately abutting a core area which may be accorded a lesser degree of habitat protection having conservation oriented land use. IUCN, the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. IUCN is the world's oldest and largest global environmental organization. IUCN was founded in October 1948 as International Union for Protection of Nature IUPN. Following an international conference in Fontainebleau, France, the organization changed its name in 1956 with the acronym IUCN. Its mission is to influence, encourage and assist societies throughout the world to conserve the integrity and diversity of nature and to ensure that any use of natural resources is equitable and ecologically sustainable. It is supposed to be world's authority on biodiversity conservation, nature-based solutions and environmental governance. It has 3 key areas: valuing and conserving nature, effective and equitable governance of nature's use, deploying nature-based solution to global challenges in climate, food and development. The Ramsar Convention on Wetlands 1971. The Ramsar Convention, that is the Convention on Wetlands of international importance, especially as waterfowl habitat. It is an international treaty for the conservation and sustainable utilization of wetlands, that is to stop the progressive encroachment on and loss of wetlands now and in the future, recognizing the fundamental ecological functions of wetland and their economic, cultural, scientific and recreational value. It is an intergovernmental treaty that provides
the framework for national action and international cooperation for the conservation and wise use of wetland and their resources. Conservation on international trade in endangered species of flora and fauna, CITES. It is an international agreement between governments of different countries signed on 3rd March 1973. Its aim is to ensure that international trade in specimen of wildlife animals and plants does not threaten their survival. CITES protect approximately 5,000 species of animals and 28,000 species of plants against overexploitation through international trade. The major reason that contribute to the signing of this convention was the large-scale killing of elephants for their tusk, rhinoceros for their horns, tigers for their skin, and overexploitation of fish and plant resources by illegal trade to obtain large-scale profits in international market. The worst case was in poverty-stricken Africa, where elephants were poached to such an extent that the number of elephants came down drastically. However, poaching of elephants was reduced greatly because of international pressure and the decision of CITES to ban ivory sale at a meet in 1989. Energy conservation. Energy is essential part of our existence as it helps us to do work and also provide light. इस चैप्टर में हम एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमें पता है कि एनर्जी इज द एसेंशियल पार्ट, ये एक बहुत ही जरूरी पार्ट है हमारी लाइफ का। एनर्जी की वजह से ही हम सारे काम करते हैं और हमें लाइट या ऊर्जा मिलती है। नाउ इट कैन नीदर बी क्रिएटेड, ना हम इसको एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पर हम उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जो फर्स्ट पावर प्लांट था वो वाटर पावर या कोल के ऊपर डिपेंड था। फॉसिल फ्यूल भी एक प्राइमरी सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का। नाउ सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व फॉसिल फ्यूल 67%। आजकल पूरे वर्ल्ड में जितने भी एनर्जी सोर्सेज हैं उसमें 67% फॉसिल फ्यूल यूज होता है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक, विंड, सोलर और बायोमास का जो यूजेज है वो 16% है। न्यूक्लियर पावर 13% यूज हो रहा है एंड अदर सोर्सेज जो है वो 3% है। द मेजॉरिटी ऑफ फॉसिल फ्यूल यूजेज फॉर द जनरेशन of electricity was coal, gas, oil was 5.5% as it is the most expensive to produce electrical energy. Now coal is the largest source of energy for the generation of electricity worldwide as well as one of the largest anthropogenic sources of carbon dioxide release. Anthropogenic sources का मतलब होता है स्पेशली जब हम पॉल्यूशन या पॉल्यूटेंट के टर्म्स में बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग जो प्रोड्यूस करते हैं या मैन मेड सोर्सेज होते हैं। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोल, नेचुरल गैस या पेट्रोलियम है इन हॉट गैस टर्बाइन आर ड्रिवन डायरेक्टली बाय गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ नेचुरल गैस और ऑयल। गैस टर्बाइन प्लांट्स आर ड्रिवन बाय बोथ स्टीम एंड नेचुरल गैस। जो भी गैस टर्बाइन प्लांट्स होते हैं उसमें हम स्टीम भी यूज कर सकते हैं और नेचुरल गैस भी यूज कर सकते हैं। दे जनरेट पावर बाय बर्निंग नेचुरल गैस इन अ गैस टर्बाइन and use residual heat to generate additional electricity from steam। जो गैस टर्बाइंस हैं उसमें हम स्टीम के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और नेचुरल गैस के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक कोल, nuclear, oil and natural gas are available in limited supplies in nature. This is usually due to the long time it takes for them to be replenished. अब यहाँ पे सबसे पहले हमें रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बीच में जो एक बहुत ही मेजर या सिग्निफिकेंट डिफरेंस है उसको हमें समझना है। जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं जो हम यूज कर रहे हैं मोस्टली जैसे फॉसिल फ्यूल हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस हैं, इनकी जो अवेलेबिलिटी है एक
लिमिटेड अवेलेबिलिटी है और इनको अगर ये एक बार एग्जॉस्ट हो जाएं, इनको रिप्लेनिश करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, जबकि रिन्यूएबल सोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड नेचुरली और रिप्लेनिश्ड ओवर रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे सोलर एनर्जी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, वो एक कंपैरेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम उनको फिर से रिसाइकिल कर सकते हैं। 5 मेजर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बायोमास एंड जियोथर्मल। नाउ नेक्स्ट इज न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी कैन बी referred as the use of sustained nuclear fission to generate heat and electricity। जब हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं तो दो प्रोसेसेस होती हैं, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। नाउ न्यूक्लियर एनर्जी ओरिजिनेट्स फ्रॉम स्प्लिटिंग ऑफ यूरेनियम एटम और अदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन अ प्रोसेस कॉल्ड फिजन। अब जो न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस है उसमें हम यूरेनियम एटम को यूज करते हैं। इस यूरेनियम एटम का फिजन यानी कि ब्रेकडाउन होता है जब इसके ऊपर न्यूट्रॉन्स की बॉम्बार्डिंग या न्यूट्रॉन्स स्ट्राइक करते हैं। एट द पावर प्लांट मतलब कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं वहां पर हम फिजन को यूज करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट करने के लिए। तो द फिजन प्रोसेस इज यूज टू जनरेट हीट फॉर प्रोड्यूसिंग स्टीम विच इज यूज्ड बाय अ टर्बाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जब यहाँ पर यूरेनियम एटम के ऊपर न्यूट्रॉन्स का बॉम्बार्डमेंट होता है तो बहुत स्टीम प्रोड्यूस होती है, बहुत ज्यादा स्टीम प्रोड्यूस होती है जिसको टर्बाइन्स के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। Now it is non-polluting। ये एक नॉन पोल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी है एज कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल। अगर हम कोल पेट्रोलियम गैस के कंपेयर में बात करें तो न्यूक्लियर एनर्जी नॉन पोल्यूटिंग है एंड इट हेल्प्स कंजर्व फॉसिल फ्यूल। न्यूक्लियर एनर्जी फॉसिल फ्यूल को कंजर्व करने में हेल्प करती है एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल रिलीज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज ये है कि हम बहुत कम रेडियो एक्टिव मटेरियल को यूज करके एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट देयर इज अ कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस हैं न्यूक्लियर एनर्जी के। अब डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं कि इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन एंड नेग्लिजेंस में रिजल्ट इन वर्स्ट डिजास्टर। न्यूक्लियर एनर्जी के साथ सबसे बड़ा एक रिस्क फैक्टर ये है कि यहाँ पर अगर हम कोई भी इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन अगर ले लिया या कोई भी किसी भी तरह की नेग्लिजेंस हो जाए तो उसकी वजह से बहुत बड़े बड़े डिजास्टर हो सकते हैं जिनको हम बाद में अभी स्टडी करेंगे। द न्यूक्लियर वेस्ट जनरेटेड मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली बिकॉज दे डू नॉट लूज देयर रेडियो एक्टिविटी फॉर ईयर्स एंड डज अ ग्रेट हेल्थ हैजर्ड। जो न्यूक्लियर वेस्ट है, न्यूक्लियर एनर्जी जब प्रोड्यूस होती है तो न्यूक्लियर वेस्ट भी प्रोड्यूस होते हैं, उनको डिस्पोज ऑफ करना बहुत जरूरी है, प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करना, क्योंकि इनकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो कई सालों तक खत्म नहीं होती है और ये हमेशा से ह्यूमन बींग्स के लिए एक बहुत बड़ा हेल्थ हैजर्ड है। न्यूक्लियर प्लांट हैव अ लिमिटेड लाइफ। अब न्यूक्लियर प्लांट्स की एक लिमिटेड लाइफ होती है। द इन्वेस्टमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यूक्लियर प्लांट इज वेरी हाई एंड मस्ट बी रिकवर्ड इन नो टाइम, दस इट इज कॉस्टली। न्यूक्लियर पावर प्लांट को स्टैब्लिश करना एक बहुत ही कॉस्टली होता है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है और न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो लाइफ होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। अगर हमने एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में अगर हमने उतनी न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट कर ली है जिससे इसकी कॉस्ट निकल आए तो ये बहुत यूजफुल होता है, अदरवाइज ये इसका डिसएडवांटेज है। सेफ्टी इश्यूज, कुछ सेफ्टी इश्यूज हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी के साथ एसोसिएटेड हैं। द सेफ्टी इश्यूज ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन अराइज ड्यू टू द पोटेंशियल हैजर्ड ऑफ एक्सीडेंट्स एंड एक्सपोजर टू रेडिएशन फ्रॉम जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन। अब जब हम न्यूक्लियर पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं
तो बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल हैजर्ड्स होते हैं, जैसे एक्सीडेंट के चांसेस बहुत हो सकते हैं, रेडिएशन का एक्सपोजर हो सकता है, एंड इट इज़ वेरी हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस बिकॉज द रेडिएशन कैन कॉज सोमैटिक एज वेल एज जेनेटिक वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन और जेनेटिक वेरिएशन की हम बात करते हैं। सबसे पहले जेनेटिक वेरिएशन का मतलब ये है कि जो हमारे न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल यानी कि जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स में जो जीन्स हैं उसमें म्यूटेशन हो जाते हैं, मतलब कि सडन चेंजेस हो जाते हैं, और बहुत ही ट्रेस अमाउंट ऑफ अगर चेंजेस होते हैं हमारी जीन में तो उसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस, जो रिजल्ट्स होते हैं, आउटर अपीयरेंस में रिजल्ट्स होते हैं, वो बहुत ही हार्मफुल हो। सोमैटिक वेरिएशन का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी में डिफॉर्मिटी हो सकती है, किसी भी तरह की डिफॉर्मिटी हो सकती है, कोई बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। देयर हैव बीन 3 मेजर एक्सीडेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ सिविल न्यूक्लियर पावर: 3 Mile आइसलैंड, चेरनोबिल एंड फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर। फर्स्ट वॉज कंटिन्यूड विदाउट हार्म। जो ये सबसे पहले 3 Mile आइसलैंड जो था उसमें कोई इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज या कोई इतना ज्यादा हार्म नहीं हुआ था। जो सेकेंड डिजास्टर था, चेरनोबिल डिजास्टर, it involved an intense fire without provision for containment, and the third severely tested the containment, allowing some release of radioactivity. So these are the only major accidents to have occurred over 15,000 culminative reactor years of commercial nuclear power operation in 33 countries। जो अभी तक के जो नॉन न्यूक्लियर डिजास्टर्स हैं वो ये मेजर 3 हैं। नाउ द एविडेंस ओवर 6 decades shows that nuclear power is safe means of generating electricity। अगर हम पिछले 60-70 साल में न्यूक्लियर पावर जितना भी यूज हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, तो अगर हम एक कंक्लूजन निकालें तो ये एक सेफ मीन है। बट द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स इन न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लो and also declining with better reactor design and safety measure। जैसे जैसे एडवांसमेंट बढ़ रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और न्यूक्लियर रिएक्टर के जो डिजाइन में जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स में भी कमी आती जा रही है। रेडियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑन पीपल ऑन एनी रेडियो एक्टिव रिलीज कैन बी अवॉइडेड। तो हम ये कह सकते हैं कि इस वजह से, मतलब कि टेक्नोलॉजी को यूज करके और प्रॉपर न्यूक्लियर रिएक्टर की डिजाइन को चेंज करके, मॉडिफाई करके, हम जो रेडियो एक्टिव रिलीज की जो इंटेंसिटी है उसको हम डिक्रीज कर सकते हैं और उसको हम अवॉइड भी कर सकते हैं। चेरनोबिल डिजास्टर। द चेरनोबिल डिजास्टर अकर्ड ऑन 26 April 1986 in Ukraine as a result of flawed reactor design that was operated with inadequately trained personnel। देखिए, जो चेरनोबिल डिजास्टर था उसके 2 मेन रीजंस थे। सबसे पहला रीजन ये था कि उस रिएक्टर का जो डिजाइन था वो फॉल्टी डिजाइन था, वो इस तरह से नहीं था कि वो किसी भी तरह के एक्सीडेंट को कंट्रोल कर सकता। और दूसरी चीज ये थी कि जो अनट्रेन्ड, जो इनएफिशिएंट पर्सन थे जो वहां पे काम कर रहे थे, उनकी वजह से द रिजल्टिंग स्टीम एक्सप्लोजन एंड फायर्स रिलीज एटलीस्ट 5% ऑफ द रेडियो एक्टिव रिएक्टर कोर इनटू द एटमॉस्फेयर एंड डाउनविंड। जब ये डिजास्टर हुआ तो उस समय 5% रेडियो एक्टिव रिएक्टर जो था, जो टोटल परसेंटेज था 5%, वो पूरा ब्लास्ट हो गया और जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस थे वो पूरे एटमॉस्फेयर में और विंड में मिक्स हो गए। द एक्सप्लोजन एंड फायर थ्रू हॉट पार्टिकल्स ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जैसे कि सीजियम 137, आयोडीन 131, स्ट्रोंशियम 90, जो ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स थे, इनके पार्टिकल्स पूरे एयर में फैल गए एंड अदर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड्स इनटू द एयर एंड द रेजिडेंट्स ऑफ सराउंडिंग एरिया ऑब्जर्व द रेडियो एक्टिव क्लाउड। जब ये डिजास्टर हुआ तो उसके आसपास के जितने भी लोग रह रहे थे उन्होंने रेडियो एक्टिव क्लाउड को एक्सपीरियंस किया ऑन द नाइट ऑफ द एक्सप्लोजन। जैसे ही एक्सप्लोजन हुआ, जैसे ही रेडियो एक्टिव रिएक्टर की वॉल में एक्सप्लोजन हुआ, वैसे ही ये सारे रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स एयर में मिक्स हो गए और उन्होंने एक रेडियो एक्टिव क्लाउड बना लिया। 2 चेरनोबिल प्लांट वर्कर्स डाइड ऑन द नाइट ऑफ द एक्सीडेंट। यहाँ पे कैजुअलिटी हुई थी कि 2 जो
वर्कर्स थे वो उसी समय उनकी डेथ हो गई थी। एंड द एक्सीडेंट डिस्ट्रॉयड चेरनोबिल 4 रिएक्टर, जो रिएक्टर नंबर 4 था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था, किलिंग 30 ऑपरेटर्स एंड फायरमैन विद इन 3 months ऑफ सेवरल डेथ लेटर। तो यहाँ पे कुछ कैजुअलिटीज हुई थी और काफी टाइम के बाद भी डेथ रिपोर्ट की गई थी। द एक्सप्लोजन एंड फायर रिलीज लार्ज क्वांटिटीज ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स इनटू द एटमॉस्फेयर व्हिच स्प्रेड ओवर मच ऑफ द वेस्टर्न यूएसएसआर एंड यूरोप। Long-term effects such as cancer and deformities are still seen occurring. अभी भी कैंसर और कुछ जो डिफॉर्मिटीज हैं, जो बॉडी डिसऑर्डर्स हैं, वो अभी भी दिखाई देते हैं। फूड एंड मीट ऑल्सो वर कंटामिनेटेड विद द रेडियो एक्टिव रेडिएशन। जब ये डिजास्टर हुआ था उस समय रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हैं वो वहां के आसपास की सॉइल में, पूरे यूरोप की सॉइल में, और जो फूड स्टोर्स थे या जो फूड आइटम्स थे उसमें ये मिक्स हो गए थे। नाउ नेक्स्ट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। एनर्जी इज जनरेटेड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। अभी हमने देखा कि एनर्जी न्यूक्लियर फिजन के थ्रू भी जनरेट होती है और न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू भी जनरेट होती है। अब इन फ्यूजन में क्या होता है, जो फ्यूजन प्रोसेस होती है इसमें दो छोटे न्यूक्लियाई, कंपैरेटिवली स्मॉल न्यूक्लियाई, व्हेन दे जॉइन टुगेदर एंड दे फ्यूज टुगेदर एंड दे फॉर्म अ बिगर न्यूक्लियाई। तो in fusion reaction, two light atomic nuclei fuse to form a heavier nuclei. The term is nuclear power is commonly used to refer to potential commercial production of net usable power from a fusion source. The leading design for controlled fusion research use magnetic or inertial, that is laser confinement of a plasma. देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन में एक डिफरेंस ये है कि न्यूक्लियर फ्यूजन, पहले हम न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करते हैं जहां पे दो लाइट एटॉमिक न्यूक्लियाई फ्यूज होने के बाद एक हेवियर न्यूक्लियाई बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। पर जो न्यूक्लियर फ्यूजन को हम किस तरह से हार्नेस कर सकते हैं, किस तरह से यूज कर सकते हैं, कॉमर्शियली यूज कर सकते हैं, अभी उसके ऊपर रिसर्च चल रही है। बोथ अप्रोचेज आर स्टिल अंडर डेवलपमेंट। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन दोनों में ही बहुत ज्यादा रिसर्च हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। फ्यूजन रिएक्टर्स आर नाउ इन एक्सपेरिमेंटल स्टेज। जैसा कि हमको पता है कि न्यूक्लियर फिजन हम यूज कर रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, पर जो न्यूक्लियर फ्यूजन है अभी वो एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है। बहुत सारी लैबोरेटरीज में काम चल रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में और पूरे वर्ल्ड में। नाउ कमिंग टू द एडवांटेजेस, नाउ दे विल यूज अबंडेंट सोर्सेज ऑफ फ्यूल। इसमें जो फ्यूल सोर्सेज हैं बहुत ज्यादा हैं एंड दे विल नॉट लीक रेडिएशन अबव नॉर्मल बैकग्राउंड लेवल। तो इससे जो रेडिएशन लीक होता है वो इतना ज्यादा लीक नहीं होता है रेडिएशन, एंड दे विल प्रोड्यूस लेस रेडियो एक्टिव वेस्ट देन करंट फिजन रिएक्टर। तो ये जो एडवांटेजेस हैं वो न्यूक्लियर फ्यूजन के एडवांटेजेस हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और इससे अगर हम कंपेयर करें न्यूक्लियर फिजन से तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो एज अ वेस्ट रिलीज होते हैं वो इतने ज्यादा नहीं होते हैं, और ये रेडिएशन को भी इतना ज्यादा रिलीज नहीं करते हैं। तो ओवरऑल अगर हम कंपेयर करें तो न्यूक्लियर फ्यूजन इज बेटर देन न्यूक्लियर फिजन, पर न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। नाउ कमिंग टू द सस्टेनेबल एनर्जीज ऑफ द फ्यूचर। तो सस्टेनेबल एनर्जी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सोलर एनर्जी की हम बात करते हैं। इट इज द एनर्जी ऑफ द सन दैट सस्टेन्स ऑल लाइफ ऑन अर्थ, harnessing the light and heat of sun using ever evolving technique is called solar energy. It is a renewable form of energy. Solar energy जैसे कि renewable energy sources जो होते हैं वो sustainable energy sources होते हैं। Solar power is the conversion of sunlight into electricity. Solar power जो है वो simply electricity में conversion है sunlight का, either directly using photovoltaic PV और indirectly using कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर। तो हम सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में दो तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम फोटोवोल्टिक सेल के थ्रू कर सकते हैं डायरेक्टली, ये डायरेक्ट कन्वर्जन है, और इनडायरेक्टली हम
जो सोलर पावर कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर पैनल्स जो होते हैं उनके थ्रू कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर जो है उसके थ्रू हम यूज कर सकते हैं. So it can be used for working of device like water heater, solar cooker, electricity production and street lighting. Lenses or mirror are used to focus the sun's light onto the device to produce heat, and this is the working principle of the above mentioned device. तो जब हम सोलर एनर्जी को हार्नेस करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को हार्नेस करने के लिए या तो हमें एक फोटोवोल्टिक सेल चाहिए होता है. अगर हम इसकी बात करें डायरेक्टली, अगर हम हार्नेस कर रहे हैं तो फोटोवोल्टिक के थ्रू कर सकते हैं, और इनडायरेक्टली कॉन्सेंट्रेटेड सोलर power. Now solar cell or photovoltaic cell is a device that converts light into electric current using the photoelectric effect. The first solar cell was constructed by Charles Spitz in the year of 1980 and the photovoltaic cells are used to light up the street lamp. तो इसका सबसे जो important use है वो स्ट्रीट लैम्प्स को लाइट करने में है, यूज करने में है इस वहां पर. कमिंग टू द एडवांटेजेस, इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और जो भी रिन्यूएबल सोर्स होता है एनर्जी का वो सस्टेनेबल होता है. सस्टेनेबल होने का मतलब ये है कि ये नॉन पॉल्यूटिंग होता है. एंड सोलर एनर्जी हेल्प्स इन कंजर्वेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल. सोलर एनर्जी जो नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको कंजर्व करने में हेल्प करती है. And once the installation cost is met, the energy production is free of cost. देखिए इसमें क्या होता है कि जो इनिशियल इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है वो ज्यादा होती है, पर उसके बाद जो टोटल जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो एक तरह से कुछ टाइम के बाद वो फ्री हो जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है. एंड इट रिड्यूसेस द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कॉस्ट टू द हाउस होल्ड. जितना भी हमारा फॉसिल फ्यूल के थ्रू जितना भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, कंपैरेटिवली उससे कम इलेक्ट्रिसिटी बिल सोलर एनर्जी के थ्रू आता है. एंड ट्रांसमिशन कॉस्ट रिड्यूसेस एज इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम्ड एट द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन इटसेल्फ. जो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करते हैं थर्मल पावर प्लांट में, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बहुत बड़े बड़े हम टावर्स लगाते हैं, मतलब कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है या कह सकते हैं कि ट्रांसमिशन होता है, जिससे उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है. सोलर एनर्जी में क्या होता है कि हम जहां पर हमको यूज करना है वहीं हम उसको प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, तो इसीलिए इसकी जो ट्रांसमिशन कॉस्ट होती है वो कम होती है. सोलर एनर्जी इज मोर अफोर्डेबल देन फॉसिल फ्यूल. तो ऑब्वियसली ये फॉसिल फ्यूल से ज्यादा अफोर्डेबल है, यानी कि बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक है. अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं सोलर एनर्जी के. इनिशियल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड इंस्टॉलेशन इज हाई. इसके जो इनिशियल कॉस्ट है और जो इक्विपमेंट है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, वो हाई होती है. देयर कैन बी शॉर्टेज ऑफ स्पेस फॉर इंस्टॉलिंग लार्ज सोलर पैनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. सोलर पैनल्स ऑब्वियसली उसका जो साइज होता है वो काफी बड़ा होता है, तो अगर हमारे पास इंस्टॉलेशन की स्पेस कम है तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इसके पैनल्स जो होते हैं बहुत लार्ज होते हैं, तो वी नीड लार्ज स्पेस. Solar electricity storage technology has not reached its potential yet. अब यहाँ पे इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर हम देखें तो ये सोलर एनर्जी जो है बहुत इकोनॉमिक है फॉसिल फ्यूल से, पर यहाँ पे इसके साथ एक जो कह सकते हैं कि जो नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसकी जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल का मतलब ये है कि जिससे हम बड़े बड़े इक्विपमेंट्स, बड़े बड़े अप्लायंसेस हम रन कर सकें, तो अभी इतना पोटेंशियल नहीं है. इसीलिए सोलर इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज टेक्नोलॉजी, क्योंकि अब देयर इज अ नीड टू स्टोर द सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी आपको पता है कि हम इसको स्टोर नहीं कर सकते, इमीडिएटली इसको यूज कर सकते हैं. अगर हम सोलर एनर्जी को कहीं स्टोर कर लें तो उसकी पोटेंशियल भी बढ़ जाएगी. इट वर्क्स वेल ओनली व्हेन द सन इज शाइनिंग. When there is no solar energy to be collected, you will have to have adequate battery backup to get you through the nights and rainy days. अगर सोलर एनर्जी अगर सनलाइट प्रॉपर नहीं है, क्लाउडी है, रेनी है, तो हमें यहाँ पे एक बैटरी बैकअप चाहिए. Now solar panels do not work well in warm temperature. जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा होता है, बहुत गर्मी होती है, तो उस समय भी सोलर पैनल्स ठीक से काम नहीं करते हैं. एंड सोलर पैनल्स डिग्रेड विद टाइम, क्योंकि सोलर पैनल्स जो हैं उनका इंस्टॉलेशन ओपन में होता है,
तो धीरे धीरे वो डिग्रेड हो जाते हैं. नाउ नेक्स्ट सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज विंड एनर्जी. The energy obtained from the wind is called wind energy, and wind power is the conversion of wind energy into useful form of energy, such as using wind turbine to produce electricity or for mechanical power, which can be used for pumping water. Wind energy में क्या होता है कि यहाँ पर wind energy को हम mechanical energy में convert करते हैं और फिर उस mechanical energy से electricity produce की जाती है. Wind energy, the energy obtained from the wind is called wind energy. Wind power is the conversion of wind energy into useful form of energy, such as using wind turbine to produce electricity or for mechanical power, which can be used for pumping water. Now the wind farm is a group of wind turbine in the same location used for production of electricity. अब देखिए यहाँ पे जो wind farms होते हैं, एक एरिया होता है ओपन एरिया जहाँ पे बहुत सारे wind turbines इंस्टॉल होते हैं, तो उस जगह को the group of wind turbine is known as wind farm. A large wind farm may consist of several hundred individual wind turbines distributed over an extended area. एक बहुत बड़े wind farm में अगर हम देखें तो वहाँ पे hundreds of wind turbines होती हैं. So India too has started wind farm project in Maharashtra, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh and other states. तो विंड फार्म की अगर हम बात करें तो हमें महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पर विंड फार्म्स हैं. एडवांटेजेस ऑफ विंड एनर्जी, इट कंज्यूम्स नो फ्यूल, क्योंकि ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है तो इसमें फ्यूल नहीं यूज होता है. एंड इट एमिट्स नो एयर पोल्यूशंस. अब जब ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, फ्यूल यूज नहीं होता है, तो इसमें एयर पोल्यूशन भी नहीं होता है. And no significant impact on environment. In other terms, it is a eco-friendly source of energy. तो ये सारी चीजें अगर हम देख रहे हैं कि ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, सस्टेनेबल है, तो ऑब्वियसली ये इको फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी भी है. एंड इट रिड्यूसेस द डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल. ये फॉसिल फ्यूल के डिपेंडेंस को रिड्यूस करती है, फॉसिल फ्यूल को सेव करती है. वंस द इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज मेट with the wind with the energy is free of cost. जैसे ही इंस्टॉलेशन कॉस्ट पूरा हो जाता है कि जब तो हम ये जो हम कह सकते हैं कि जो विंड एनर्जी है वो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है. एंड इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. तो जो विंड एनर्जी है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है. नाउ कमिंग टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ विंड एनर्जी, विंड फार्म नीड लार्ज एरिया फॉर इंस्टॉलेशन. विंड फार्म के इंस्टॉलेशन के लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है, बहुत बड़े बड़े फील्ड्स चाहिए होते हैं. एंड डिपेंड्स ऑन फास्ट मूविंग विंड, हेंस कैन नॉट बी सेट अप एट ऑल प्लेसेस. जैसे कि सोलर एनर्जी के साथ एक रिस्ट्रिक्शन थी कि जहां पर अगर सोलर एनर्जी है प्रॉपर तो हम उसको विंड पैनल्स को, सोलर पैनल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं. इसी तरह से यहाँ पे विंड टर्बाइंस को हम इंस्टॉल कर सकते हैं जहां पर फास्ट मूविंग विंड होती है. मे यूज वैल्यूएबल एग्रीकल्चर लैंड. विंड फार्म को इंस्टॉल करने में बहुत जो वैल्यूएबल एग्रीकल्चर लैंड है उनका यूज हो जाता है. बर्ड एंड बैट मोर्टेलिटी इंक्रीजेस. जो विंड टर्बाइंस हैं उसके जो विंग्स होते हैं, बड़े बड़े विंग्स होते हैं, ब्लेड्स होते हैं, उसके थ्रू बर्ड्स और जो बैट है उनकी भी मोर्टेलिटी यानी कि उनकी बहुत ज्यादा डेथ हो जाती है, वो उससे टकरा के कट जाते हैं. टाइडल एनर्जी. टाइडल इज अ फॉर्म ऑफ हाइड्रो पावर दैट कन्वर्ट्स the energy of tides into useful forms of power, mainly electricity. So it is the energy produced by the rise and fall of ocean water, that is tides, जिसको हम tides बोलते हैं. जब rise होता है और फिर उसके बाद एकदम से fall होता है तो tides होते हैं. It is a renewable source of energy and is a non-polluting source. Renewable source है, non-polluting है. अब लिमिटेशंस ऑफ टाइडल एनर्जी आर रिलेटिवली हाई कॉस्ट. अब इसकी जो लिमिटेशन है, जो डिसएडवांटेज है वो क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की जो कॉस्ट होती है वो थोड़ी हाई होती है. लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ साइट्स, जहां पे टाइड्स आते हैं, जो कोस्टल एरिया होते हैं, वहीं पर हम टाइडल एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं विद सफिशिएंटली हाई टाइड रेंज और फ्लो वेलोसिटीज, thus constricting its total availability. तो यहाँ पे ये जो उसकी टाइडल एनर्जी को हार्नेस करने की जो अवेलेबिलिटी है,
पॉसिबिलिटी है, थोड़ी सी एक तरह से रिस्ट्रिक्टेड हो रही है. टाइडल पावर कैन हैव इफेक्ट ऑन मरीन लाइफ बिकॉज टर्बाइंस कैन एक्सीडेंटली किल स्विमिंग सी लाइफ विद द रोटेटिंग ब्लेड्स. जो रोटेटिंग ब्लेड्स होते हैं उसकी वजह से जो मरीन लाइफ है या मरीन हम कह सकते हैं कि जो इकोसिस्टम है उसको भी हार्म होता है. नेक्स्ट इज जियोथर्मल एनर्जी. Geothermal energy is thermal energy generated and stored in the earth. It is being used to generate geothermal power, and geothermal power is cost effective, reliable, sustainable and environmentally friendly. तो जियोथर्मल एनर्जी का मतलब ये है कि जो एनर्जी कोर ऑफ द अर्थ में स्टोर है उसको हम हार्नेस करते हैं. ये जियोथर्मल एनर्जी, इसके जो एडवांटेजेस हैं, ये इकोनॉमिक है यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव है, रिलायबल सोर्स है, सस्टेनेबल सोर्स है और इको फ्रेंडली यानी कि एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है. नेक्स्ट इज बायोगैस. बायोगैस typically referred to as a gas produced by the breakdown of organic matter in the absence of oxygen. तो जो बायोगैस है वो कैसे प्रोड्यूस होती है कि जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनका जब ब्रेकडाउन होता है और वो भी ऑक्सीजन की एब्सेंस में. सो इट इज एन इको फ्रेंडली, ये भी एक इको फ्रेंडली बायोफ्यूल है. And biogas is produced by fermentation of biodegradable materials such as cow dung, sewage, plant waste, crop, etc. And biogas comprises mainly of methane and carbon dioxide and may have small amount of hydrogen sulfide also. So biogas is one of the alternative renewable sources of energy. So biogas जैसे कि हमने देखा यहाँ पर कि जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं उसमें जितना भी जैसे कि काउ डंग है, सीवेज है, प्लांट वेस्ट है, क्रॉप्स हैं, उसमें जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है अगर हम उनका एनारोबिक डिग्रेडेशन करें यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर हम उनका ब्रेकडाउन करें तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अमाउंट हाइड्रोजन सल्फाइड का रिलीज होता है. तो बायोगैस जो है एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है. नाउ नेक्स्ट इज द प्रिपरेशन ऑफ बायोगैस. सो काउ डंग इज मिक्स्ड विद वाटर टू फॉर्म अ स्लरी एंड इंट्रोड्यूस इनटू द डाइजेस्टर टैंक. अब यहाँ पे क्या होता है कि एक डाइजेस्टर टैंक होता है जिसमें कि काउ डंग या और भी जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनको हम उसमें डालने के बाद पानी डाल देते हैं जिससे कि एक स्लरी बन जाती है एंड अलाउड टू फर्मेंट विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंडर एनारोबिक कंडीशन. अब क्या होता है कि यहाँ पर हम उसको फर्मेंट होने के लिए रख देते हैं जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से वो एनारोबिक ब्रेकडाउन होता है उसका and this results in the breakdown of organic matter thereby releasing biogas. अब यहाँ पे जो organic matter है उनका breakdown हो रहा है और biogas release होती है. The gas is released through the outlet pipe and stored directly used in chula in rural areas. अब हम उसको या तो जो भी biogas release हो रही है उसको हम या तो store कर सकते हैं या directly हम उसको use कर सकते हैं rural areas में, villages में, चूल्हे में यूज कर सकते हैं, खाना बनाने के लिए यूज कर सकते हैं. द रेजिड्यू इज रिमूव्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ गैस स्टॉप्स. जैसे ही गैस का फॉर्मेशन रुक जाता है तो रेजिड्यू जो है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं और उस रेजिड्यू मतलब कि जो भी लेफ्ट ओवर मटेरियल है उसको हम बायो मैन्योर के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, मतलब कि बायो फर्टिलाइजर की तरह हम उसको यूज कर सकते हैं. क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं बायोगैस के? इट इज लो कॉस्ट, इको फ्रेंडली, नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल. द रॉ मटेरियल मतलब कि ये जो काउ डंग है, सीवेज है, प्लांट वेस्ट है, क्रॉप है, इज इजीली अवेलेबल इन रूरल एरियाज. जो विलेजेस हैं, रूरल एरियाज है, वहां पर ये इजीली अवेलेबल है. इसके बाद एक और एडवांटेज ये है बायोगैस का कि इट कंजर्व्स एंड रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल की डिपेंडेंसी ये कम करती है and it also reduces the use of firewood in rural areas. रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा फायरवुड यानी कि लकड़ी का यूज किया जाता है डोमेस्टिक कुकिंग के लिए. तो ये बायोगैस फ्यूल वुड को भी रिड्यूस करती है, उसको भी सेव करती है एंड इट कन्वर्ट्स वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर इनटू यूजफुल प्रोडक्ट. जो भी लेफ्ट ओवर या रेजिड्यू होता है बायोगैस बनने के बाद उसको हम बायो मैन्योर या बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज कर सकते हैं.
The gas produced has a good calorific value and can be used for burning चूल्हा. इसकी जो कैलोरिफिक वैल्यू होती है, यानी कि जो हीट कंटेंट होता है वो बहुत अच्छा होता है, एक अच्छा अमाउंट होता है जिससे हम चूल्हा बर्न कर सकते हैं, मतलब कि हम खाना बना सकते हैं. And it produces rich organic manure which can supplement or even replace chemical fertilizer. जो बायो मैन्योर है, जो भी रेजिड्यू बच रहा है उसको हम एज अ बायो मैन्योर यूज कर सकते हैं, जिससे कि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज को रिड्यूस कर सकते हैं. इट ऑल्सो सेव्स women and children from drudgery of collection and carrying of firewood, exposure to smoke in the kitchen and time consumed for cooking and cleaning of utensils. तो इसका मतलब ये है कि जो भी वर्क था, जो भी पहले था कि हम जंगल से लकड़ियां काट के ला रहे हैं, जो इस तरह के काम थे जिसमें टाइम बहुत वेस्ट होता था, लाइक कलेक्शन एंड कैरिंग ऑफ फायरवुड, एक्सपोजर टू स्मोक, तो ये सारी चीजें जो हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं, उससे हम अपने women और children को बचा सकते हैं. Now next is disadvantages of biogas. So this is not feasible at all the location, especially in urban areas, as raw material is not available on industrial scale. अगर हम ये देखें कि अगर हम बायोगैस को अर्बन एरिया में यूज करें तो इट्स नॉट feasible, क्योंकि अर्बन एरिया में यानी कि सिटीज में रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल नहीं है, एंड इट इज डिफिकल्ट टू एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ बायोगैस सिस्टम. जो बायोगैस सिस्टम की एफिशिएंसी है उसको एनहांस करना, उसको इंक्रीज करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि जो डाइजेस्टर होता है उसमें रस्टिंग होने लगती है. बायोगैस, ये जो डाइजेस्टर है, ये दिस पोर्शन, यहाँ पर क्या होता है कि ये मेटल का होता है, इसके अंदर मेटल होता है, और जब ये ऑर्गेनिक मैटर के साथ रिएक्ट करता है तो इसके अंदर रस्टिंग होने लगती है, तो ये धीरे धीरे डाइजेस्टर जो है ये खराब होने लगता है. नाउ बायोगैस कंटेन्स सम गैसेज एज इम्प्योरिटीज विच आर करोसिव टू द मेटल पार्ट्स ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन, जो हमने यहाँ पे बात की. द प्रोसेस इज नॉट वेरी इकोनॉमिकल एज कंपेयर टू अदर बायोफ्यूल ऑन अ लार्ज. अगर हम इस प्रोसेस को देखें तो ये इतनी इकोनॉमिकल नहीं है. नाउ कमिंग टू द ऑल्टरनेटिव फ्यूल. अब और भी कौन से ऐसे ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं, और ये जो ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं दे आर नोन एज नॉन कन्वेंशनल और एडवांस्ड फ्यूल. नाउ दे आर एनी मटेरियल और सब्सटेंसेस दैट कैन बी यूज्ड एज फ्यूल अदर देन कन्वेंशनल फ्यूल. कन्वेंशनल फ्यूल का मतलब है जो फॉसिल फ्यूल है. नाउ सम वेल नोन ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स इंक्लूड बायोडीजल, बायो अल्कोहल में मिथेनॉल है, इथेनॉल है, ब्यूटेनॉल है. केमिकली स्टोर्ड इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी को बैटरी में स्टोर कर सकते हैं, फ्यूल सेल में स्टोर कर सकते हैं. हाइड्रोजन है, नॉन फॉसिल मीथेन है, नॉन फॉसिल नेचुरल गैसेस हैं, वेजिटेबल ऑयल है, और अदर बायोमास रिसोर्सेज. तो ये और दूसरे ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं. नाउ अल्कोहल फ्यूल, मिथेनॉल and ethanol fuel can be used in internal combustion engine as alternative fuel. अब मिथेनॉल और इथेनॉल को भी हम यूज कर सकते हैं इंटरनल कंबशन इंजन में, जैसे कि ऑल्टरनेटिव फ्यूल के फॉर्म में, मतलब कि हम उसको मेन जो हमारा फ्यूल है उसमें हम थोड़ा सा उसकी ब्लेंडिंग कर सकते हैं. इथेनॉल फ्यूल मिक्सचर्स हैव ई नंबर. अब ये ई नंबर से हम ये देखते हैं विच टेल्स द परसेंटेज ऑफ इथेनॉल फ्यूल इन द मिक्सचर बाय वॉल्यूम. लो इथेनॉल ब्लेंड्स फ्रॉम E5 to E24 are also known as gasohol is being used in automobile. तो जैसे कि E5 से E25 है, तो हम ये देख सकते हैं कि कितना परसेंटेज इथेनॉल का है पूरे टोटल मिक्सचर में. Coming to the advantages of alcohol fuel, it is a renewable source of energy, it saves fossil fuel, it is easily obtained from sugar or starch in crop and other agriculture products such as grain, sugar cane, sugar beets, etc. Alcohol fuel है, ये बहुत ही easily available हो जाता है क्योंकि ये sugar से मिलता है, sugar starch है crops में, या जो ग्रेन्स हैं या शुगर केन है, शुगर बीट है, इससे ये प्रोड्यूस होता है. सो इट इज लेस पॉल्यूटिंग, एड्रेसेस द प्रॉब्लम ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज. जो अल्कोहल फ्यूल है वो लेस पॉल्यूटिंग होता है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट और क्लाइमेट चेंज को भी रिड्यूस करता है, वो जो प्रॉब्लम है उसको भी रिड्यूस करता है, सॉल्व करता है. कमिंग टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ अल्कोहल फ्यूल, इट इज नॉट इजीली अवेलेबल फॉर यूज इन ऑटोमोबाइल. ऑटोमोबाइल में इतना ज़्यादा अभी अवेलेबिलिटी नहीं है क्योंकि अभी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है, एंड इट नीड्स ऑल्ट्रेशन ऑफ द इंजन. अगर हम अल्कोहल फ्यूल को यूज़ कर रहे हैं
तो हमें इंजन में ऑल्ट्रेशन करना पड़ेगा, इंजन में चेंजेस करने पड़ेंगे. एंड डिबेट बिटवीन फूड और फ्यूल. अब क्योंकि यहाँ पे देखिए जो रॉ मटेरियल है अल्कोहल फ्यूल का, तो बेसिकली ये एग्रीकल्चर क्रॉप से तो है, ग्रेन्स हैं, शुगर केन है, शुगर बीट है. तो अगर हम अल्कोहल फ्यूल को ज्यादा कॉमर्शियली प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे पास फूड की प्रॉब्लम हो जाएगी, खाना नहीं मिलेगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कम हो जाएंगे. तो देयर इज अ डिबेट बिटवीन फूड और फ्यूल कि हमको फूड चाहिए कि फ्यूल चाहिए. बायोडीजल इज renewable source made from animal fat or vegetable oil from plants such as soybean, sunflower, corn, olive, peanut, palm, coconut, safflower, canola, sesame, cottonseed, etc. The fat or oils are filtered from their hydrocarbons and then combined with alcohol like methanol. अब हम बायोडीजल की बात करें तो यहाँ भी जो इसके रॉ मटेरियल हैं वो भी सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, एडिबल प्रोडक्ट हैं. Advantages of biodiesel. Biodiesel will release a smaller number of its pollutant, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है या हाइड्रोकार्बन्स हैं. तो वो ये जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं थोड़े कम, वो उनके इनका जो रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में कंपैरेटिवली कम होता है. देन कन्वेंशनल डीजल या पेट्रोल से अगर हम इसको कंपेयर करें तो उससे कम होता है. बायोडीजल बर्न्स बोथ क्लीनर एंड मोर एफिशिएंटली. जो बायोडीजल है जो बर्न होता है वो क्लीन फॉर्म में बर्न होता है और ये बहुत एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी है. बायोडीजल रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन. बायोडीजल अगर हम यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम होगा, डिफॉरेस्टेशन कम होगा एंड द रेट ऑफ बायोडिग्रेडेशन. So there is a reduction in greenhouse gas emission, deforestation and the rate of biodegradation. Now it is much better lubricant in comparison to petroleum and diesel due to the presence of esters. जो एस्टर्स होते हैं उसकी वजह से ये एक बहुत ही अच्छा ल्यूब्रिकेंट है अगर हम कंपेयर करें पेट्रोल और डीजल से. तो जो बायोडीजल है ये बहुत ही अच्छा ल्यूब्रिकेंट है. कमिंग टू द डिसएडवांटेजेस. सेंसिटिव इकोसिस्टम्स are destroyed to clear land for oil, palm, soybean and sugarcane plantation. तो अब हम देखें, जैसे हमें पता है कि इसके जो रॉ मटेरियल हैं वो क्या है, शुगर केन है, सोयाबीन है, ऑयल पाम है. तो उससे क्या होता है, अब जो सेंसिटिव इकोसिस्टम, मतलब कि अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो एरिया, ऐसे एरिया जो बायोडाइवर्सिटी रिच एरियाज हैं उनको हम क्लीन कर देते हैं बिकॉज वी नीड ऑयल पाम, सोयाबीन, शुगर केन प्लांटेशन चाहिए क्योंकि हमको बायोडीजल या अल्कोहल फ्यूल वहां पर चाहिए होता है. सो मोरओवर कंट्रीब्यूट टू वर्ल्ड हंगर एज arable land is no longer used for growing food. तो हम ये कह सकते हैं कि ये जितने भी सस्टेनेबल या जो बायोडीजल या अल्कोहल फ्यूल हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि वर्ल्ड हंगर प्रोड्यूस हो जाए, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में एक तरह से खाने की कमी हो जाए. Now biodiesel viscosity remains higher than that of diesel and the engine may not be able to use the fuel at low temperature. अब ये जो बायोडीजल होते हैं वो विस्कस होते हैं, मतलब कि थोड़े थिक होते हैं. तो अगर जो टेम्परेचर लो होगा तो हम उसको बहुत एफिशिएंटली यूज नहीं कर पाएंगे जैसे कि हम डीजल यूज करते हैं. सो इट इज समवॉट मोर एक्सपेंसिव देन फॉसिल फ्यूल. तो अगर हम इसको पूरा कंपेयर करें तो ये फॉसिल फ्यूल से थोड़े ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकते हैं. Now next is hydrogen. Hydrogen has been claimed to be a good alternative to fossil fuels since 1970s. But hydrogen's potential has not been realized even partially because of storage and commercial production difficulties. Hydrogen जो है एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, एक बहुत ही अच्छा रिप्लेसमेंट हो सकता है फॉसिल फ्यूल का, पर इसके साथ भी कुछ लिमिटेशंस हैं क्योंकि एक तो इसकी स्टोरेज थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक है, स्टोर करने में प्रॉब्लम आती है और इसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन यानी कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है. सो रिसर्च इज बीइंग डन ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक हाइड्रोजन फॉर क्वाइट सम इयर्स. इट इज यूजफुल एज अ कॉम्पैक्ट एनर्जी सोर्स इन फ्यूल सेल्स एंड बैटरीज. Many companies are working to develop technologies that can efficiently exploit the potential of hydrogen energy. तो इसको हम कॉमर्शियली यूज नहीं कर रहे हैं, लार्ज स्केल में अभी हाइड्रोजन यूज नहीं हो रहा है, पर अभी कुछ टाइम से हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी बढ़ गई है, उसका यूजेस होने लगा है. पर इसके बाद भी हाइड्रोजन को और भी दूसरे फॉर्म्स में यूज किया जा रहा है, जैसे कि बैटरीज के फॉर्म में यूज करा जा रहा है, फ्यूल सेल के फॉर्म में यूज किया जा रहा है.
Now, many companies are working to develop technologies that can efficiently exploit the potential of hydrogen energy. Now, the hydrogen fuel is a zero emission fuel which uses electrochemical cells or combustion in internal engine to power vehicle and electric devices. हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन फ्यूल जो है एक तरह से जीरो एमिशन फ्यूल है. नासा हैज यूज्ड लिक्विड हाइड्रोजन सिंस द 1970s टू प्रोपेल द स्पेस शटल एंड अदर रॉकेट्स इनटू ऑर्बिट. नाउ कमिंग टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स, सारे जितने भी ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं उनका हम अगर एक डिसएडवांटेज देख लें तो इट कवर्स द कॉस्ट ऑफ मॉडिफाइंग द इंजन. एक तरह से जो इंजन में मॉडिफिकेशन है उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है. इट माइट नॉट बी एज एफिशिएंट ऑन रोड. अगर हम उनकी एफिशिएंसी देखें फॉसिल फ्यूल से तो ये इतने एफिशिएंट नहीं है रोड पर, माइलेज कम होता है, जनरली गिव्स लेस माइलेज, ऑफन कॉस्टलियर देन द फॉसिल फ्यूल एंड इट इज नॉट इजीली अवेलेबल इन ऑल सिटीज. तो हम अगर जितने भी ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स का देखें तो ये इंजन मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, एफिशिएंसी कम होती है, माइलेज कम होती है, थोड़ा सा कॉस्टलियर होता है और ये सारी सिटीज में इजीली अवेलेबल भी नहीं है. Now next is CNG, that is compressed natural gas. Is methane stored at high pressure which is naturally occurring to less than 1% of the volume. So it occupies at standard atmospheric pressure and it is being widely used in automobile. CNG का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है ऑटोमोबाइल में. एडवांटेजेस क्या क्या हैं? इट इज एन ऑल्टरनेटिव टू फास्ट डिप्लीटिंग फॉसिल फ्यूल. तो अगर हम देखें तो ये जो फास्ट डिप्लीटिंग फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोल, पेट्रोलियम गैसेस हैं, उसका एक बेटर ऑल्टरनेटिव है. इट इज एन एनवायरमेंटली क्लीन ऑल्टरनेटिव फ्यूल विच डू नॉट रिलीज ग्रीन हाउस गैसेज. एक क्लीन सोर्स है, ग्रीन हाउस गैसेस भी नहीं रिलीज करता है. CNG रन व्हीकल आर लो मेंटेनेंस देन द रेगुलर फॉसिल फ्यूल रन. यहाँ पे इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो CNG ड्रिवन व्हीकल्स होते हैं उनका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होता है एंड CNG इज चीपर देन द पेट्रोल एंड डीजल. तो CNG अगर हम देखें तो पेट्रोल और डीजल से भी चीप है. नाउ CNG इंक्रीजेस द लाइफ ऑफ ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल यूज्ड इन द व्हीकल. ये भी इसका एक एडवांटेज है. एंड CNG मेक्स द इंजन क्लीनर एंड मोर एफिशिएंट. अब इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं CNG के. CNG इज नॉट अवेलेबल इन ऑल सिटीज. फिलिंग स्टेशंस हैव लिमिटेड अवेलेबिलिटी. का एक और डिसएडवांटेज ये है कि द व्हीकल्स नीड इंजन मॉडिफिकेशन. तो CNG में इंजन मॉडिफिकेशन करना पड़ता है. CNG के जो फिलिंग स्टेशंस हैं सारे सिटीज में नहीं है, नंबर ऑफ स्टेशंस बहुत कम है और CNG needs more storage space than the conventional petrol, that is it needs space to keep the cylinder. CNG के जो सिलेंडर्स होते हैं उनको रखने के लिए ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ती है and there is a probability of accidents related to catching fire if there is a leakage in the cylinder. अगर सिलेंडर में कहीं लीकेज हो जाए तो एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है. एंड द CNG व्हीकल्स डू नॉट गिव गुड स्पीड. अगर हम फॉसिल फ्यूल से कंपेयर करें, माइलेज को कंपेयर करें तो CNG व्हीकल्स माइलेज कम होता है, स्पीड कम होती है. तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं. सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, एनर्जी कंजर्वेशन. एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट. ग्लोबल एनवायरमेंटल पोल्यूशन. Who is responsible? Developed or developing countries? The developing countries have a strong feeling that environment protection is only related to pollution. The developing countries have a notion that environmental issues are caused by industrialization and rich developing countries should be concerned with the environmental issues because environmental problems are very much caused by poverty. Global environmental pollution के लिए कौन responsible है? Developed countries और developing countries. दो कैटेगरीज होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और द एडवांसमेंट. द डेवलपिंग कंट्रीज हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इज ओनली रिलेटेड टू पॉल्यूशन. जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, पुअर डेवलपिंग कंट्रीज हैं या रिच डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो ये सोचते हैं कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जो है वो पॉल्यूशन से रिलेटेड है. अगर हमने पॉल्यूशन को कम कर दिया, जैसे एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, तो हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. डेवलपिंग कंट्रीज का एक परसेप्शन ये भी होता है कि एनवायरमेंटल इश्यूज जो हैं वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से होते हैं, कि अगर हमारे कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, डेवलपमेंट होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, तो एनवायरमेंटल इश्यूज भी क्रिएट होंगे.
एंड रिच डेवलपिंग कंट्रीज शुड बी कंसर्न विद द इन्वायरमेंटल इश्यूज, और वो ये मानते हैं, जो पुअर डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका ये सोचना है कि जो रिच डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको इन्वायरमेंटल इश्यूज के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं दे आर कॉज्ड बाय पॉवर्टी। वो ये मानते हैं कि पॉवर्टी ही सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की रूट कॉज है। नो, पॉवर्टी किस तरह से रिलेटेड है? Environmental problems is caused by increasing poverty and when accompanied by overpopulation. अगर किसी कंट्री में पॉवर्टी है और उसकी पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है तो ये एक बहुत ही थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फ्यूल वुड, द ग्रेजिंग ऑफ मार्जिनल लैंड, ओवर यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज, माइग्रेशन टू द टाउन आर ऑल प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय पॉवर्टी। डेवलपिंग कंट्रीज ये सोचते हैं कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि माइग्रेशन है, माइग्रेशन मतलब अर्बनाइजेशन, जहां पर लोग विलेजेस से टाउन या बड़े सिटीज की तरफ मूव करते हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन और ओवर यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज और वाटर बॉडीज हैं, ग्रेजिंग प्रॉब्लम है, ओवर ग्रेजिंग है, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, डिफॉरेस्टेशन है फ्यूल वुड के लिए। इन सारी प्रॉब्लम्स की जो रूट कॉज है वो क्या है? पॉवर्टी। जिस कंट्री, अगर पॉवर्टी है कंट्री में तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, या हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंटल इश्यूज बहुत ज्यादा क्रिएट होंगे। इन द प्रोसेस ऑफ एक्सिलरेटिंग डेवलपमेंट, द डेवलपिंग कंट्रीज जेनरेट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है डेवलपिंग कंट्रीज में, तो वहां पर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी रेज होती हैं, इंक्रीज होती हैं। The government escalate industrialization to improve economy, which leads to depletion of resources and pollution. डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो इन्वायरमेंटल, जैसे उनके यहाँ डेवलपमेंट होता है तो उनके साथ इन्वायरमेंटल कंसर्न से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी एसोसिएट हो जाती हैं। उनको अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन करती है, डेवलपमेंट करती है, जिसकी वजह से वहां पर उनके जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो डिप्लीट होते हैं और पॉल्यूशन इंक्रीज होता है। During the process of industrial development, the developing countries need a lot of energy, which result in excess use of fossil fuel and building of dams, which we know submerge a lot of land. डेवलपिंग कंट्रीज में जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है तो उनकी एनर्जी कंजम्पशन भी उनका बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है और इसकी वजह से एक्सेसिव यूज होने लगता है फॉसिल फ्यूल का। फॉसिल फ्यूल हमको पता है कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं कि अगर एक बार ये डिप्लीट हो गए, सो वी कैन नॉट रिप्लेनिश और वी कैन नॉट टेक बैक देम अगेन इन अ रिक्वायर्ड पीरियड ऑफ टाइम। तो जैसे कि अब एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि बिल्डिंग ऑफ डैम्स विच वी नो सबमर्ज अ लॉट ऑफ लैंड। अगर डैम्स बन रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पर तो जितने भी आसपास के एरिया होते हैं, लैंड होता है, वो सबमर्ज हो जाता है। In order to repay the loans offered by World Bank and International Monetary Fund, IMF, the developing countries fall into debt trap and overexploit natural resources like forest, thus causing environmental degradation. डेवलपिंग कंट्रीज के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है डेब्ट ट्रैप की। जो वर्ल्ड बैंक या IMF उनको लोन्स प्रोवाइड करता है, उनको रीपे करने के लिए पुअर कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो इनके ट्रैप में फंस जाती हैं और जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं जिन्होंने उनको लोन दिया होता है वो उनके नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं। जैसे फॉरेस्ट है, उनको वो ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे और इसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल डैमेज होता है। पुअर कंट्रीज दे हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑन क्लाइमेट चेंज अग्रीमेंट। पुअर कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। द इश्यू फॉर रिच कंट्री इज environmental. Greenhouse gases must be reduced in the atmosphere, preferably through the use of binding objectives established by the Intergovernmental Panel on Climate Change. जो रिच कंट्रीज हैं उनके लिए वो ये सोचते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है,
उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज होने से रोकना चाहिए या बहुत कम कर देना चाहिए। और इसके लिए वो ये सोचते हैं कि जो एग्रीमेंट्स होते हैं, जो ट्रीटी होती हैं, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो सफिशिएंट हैं। वो अगर एक बार बन जाएं तो ग्रीन हाउस गैसेस, या हम कह सकते हैं कि हम एनवायरमेंट डिग्रेडेशन को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। For developing countries, the problem is one of fairness and history. Rich countries are responsible for 2/3 of the carbon put into the atmosphere. जो rich countries हैं, they are responsible for the 2/3 of the carbon emission. Poor countries therefore think emission per head, not absolute emission, should be standard. जो पुअर कंट्रीज हैं वो ये सोचते हैं कि जो कार्बन एमिशन है वो पर हेड काउंट होना चाहिए, ना कि एब्सोल्यूट एमिशन काउंट होना चाहिए। मतलब कि डेवलप्ड कंट्रीज जितना कार्बन एमिशन करती हैं वहां पर जितनी पॉपुलेशन है पर हेड के अकॉर्डिंग कार्बन एमिशन को काउंट करना चाहिए, ना कि टोटल कार्बन एमिशन को एक स्टैंडर्ड मानना चाहिए। Economic development and environmental degradation need for mutual cooperation. The Rio Declaration on Environment and Development, often shortened to Rio Declaration, was a short document produced at 1992 United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), informally known as the Earth Summit. रियो डिक्लेरेशन जो 1992 में हुआ था, जिसको हम शॉर्ट में, या दिस इज मोस्ट पॉपुलरली नोन एज अर्थ समिट, यहां पर एक डिक्लेरेशन हुआ था जिसमें कि एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस किया गया था। और इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग यहां पर 27 प्रिंसिपल्स थे इंटेंड टू गाइड फ्यूचर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अराउंड द वर्ल्ड, कि पूरे वर्ल्ड में सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरह का होना चाहिए। इसके ऊपर उन्होंने 27 पॉइंट्स दिए थे, या जिसको हम कह सकते हैं कि 27 प्रिंसिपल्स थे दैट वर मेंट टू गाइड फ्यूचर ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ वन ऑफ द प्रिंसिपल्स स्टेट्स that the right to development must be protected in order to meet the developmental and environmental demand of current and future generations in an appropriate manner. इसके अकॉर्डिंग ये था कि जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है, प्रेजेंट में डेवलपमेंट हो रहा है या जो फ्यूचर डेवलपमेंट होगा, ऑल डेवलपमेंट शुड बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, थिंकिंग अबाउट द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन. In order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process chain and cannot be considered in isolation from it. The special situation and needs of developing countries, particularly the least developed and those most environmentally vulnerable, shall be given special priority. International actions in the field of environment and development should also address the interest and need of all countries. If we want to, according to this paragraph, if we want to achieve sustainable development, in this case, like basically we want development, but the development should be sustainable. जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है पूरे वर्ल्ड में वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, या हम कह सकते हैं कि एक वाइज डेवलपमेंट होना चाहिए जो हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रख के करते हैं. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मस्ट बी ट्रीटेड एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस चेन. अगर डेवलपमेंट हम कर रहे हैं तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, एंड इट शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस. The unique circumstances and requirement of the developing countries, particularly the least developed and most environmentally fragile country, must be given preferences. इस कंडीशन में जितने भी बहुत ही सेंसिटिव कंट्रीज हैं, या हम कह सकते हैं कि जो इन्वायरमेंटली फ्रेजाइल कंट्रीज हैं, उनको प्रेफरेंस देनी चाहिए.
हमें उनकी नीड को समझना चाहिए, या हम ये कह सकते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको डेवलपिंग कंट्रीज या पुअर कंट्रीज की जो इन्वायरमेंटल नीड्स हैं उनको समझना चाहिए. Now, states shall cooperate in spirit of global partnership to convey, protect and restore the health and integrity of the health ecosystem. In view of the different contributions, the global environment degradation, states have common but differentiated responsibilities. The developed countries acknowledge the responsibility that they bear in the international pursuit of sustainable development in view of the pressure that societies place on the global environment and the technologies and financial resources they command. Now, states must work together according to this paragraph. States must work together in a manner of global partnership to maintain, protect and restore the earth ecosystems, health and diversity. जितने भी स्टेट्स हैं, या हम कह सकते हैं कि जितनी भी कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज में जितने भी स्टेट्स हैं, उनको एक साथ काम करना चाहिए, या हम कह सकते हैं कि एक ग्लोबल पार्टनरशिप होनी चाहिए टू मेंटेन, प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर द अर्थ इकोसिस्टम. अर्थ के इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एक ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोग्राम होना चाहिए. Now, states have common but different duties in view of their various contributions to global environmental degradation. अब हम ये नहीं कह सकते कि जितना भी global environmental degradation हो रहा है उसके लिए कोई एक state या कोई एक country responsible है. जितने भी states हैं उन सभी को equal responsibilities लेनी चाहिए. In view of demands their societies put on the global environment as well as the technologies and financial resources they control, developed nations understand their role in the international goal of sustainable development. जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है या जितना भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है उसके लिए डेवलप्ड कंट्रीज की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए और डेवलप्ड कंट्रीज को डेवलपिंग कंट्रीज की डिमांड को, उनकी नीड को समझना चाहिए. नाउ डेवलपिंग कंट्रीज count sustainable development as a sharp tension between developing and developed countries due to their divergent point of view on how to approach sustainable development. अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि डेवलपिंग कंट्रीज दे काउंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज अ शार्प टेंशन बिटवीन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज. जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज ये सोचती हैं कि ये एक बहुत बड़ा एक टेंशन का सब्जेक्ट है, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज के अलग अलग व्यू पॉइंट होते हैं कि किस तरह से हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच करना है. डेवलपिंग कंट्रीज व्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज अ मीन ऑफ सोशो इकोनॉमिक अपवर्ड मोबिलिटी दैट विल हेल्प सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स विद पॉवर्टी. कन्वर्सली, developed countries view sustainable development as a quality of life issue that requires immediate protection of the environment. अब यहाँ पे डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं. डेवलपिंग कंट्रीज ये सोचते हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है उसको वो सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जो उनकी पॉवर्टी से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा. ऑन द अदर हैंड, जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं वो ये सोचते हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हांस करेगा एंड दैट रिक्वायर्स इमीडिएट प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट. वो लॉन्ग टर्म के लिए इतना ज्यादा वरीड नहीं होते हैं. उनका जो मेन एम होता है वो इमीडिएट प्रोटेक्शन या इमीडिएट अप्रोच होती है. It is seen that the developing nations try to enhance their economic development by setting up new industries, scientific and technological innovations. This consume more natural resources, thus depleting them. This process leads to environmental degradation. Now, it is clear that developing countries are attempting to improve their economic development. It is quite obvious कि developing countries हैं and they need development, and
they try to improve their economic development through establishing new sectors. वो अलग अलग बहुत सारे सेक्टर्स में काम करना चाहते हैं क्योंकि उनको डेवलपमेंट चाहिए. डेवलपमेंट क्यों चाहिए? क्योंकि उनके यहाँ बहुत ज्यादा पॉवर्टी है, ओवर पॉपुलेशन है. इन सब चीजों से उनको अगर आगे बढ़ना है तो डेवलपमेंट इज द नेसेसरी प्रोसेस. एंड अब वो क्या करते हैं कि वो अलग अलग सेक्टर में डेवलपमेंट करते हैं. साइंटिफिक सेक्टर में डेवलपमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजीज, एडवांस टेक्नोलॉजीज वो अडॉप्ट कर रहे हैं. And this depletes natural resources by consuming more of them. So this is the development is directly related to the consumption of natural resources. जितना ज्यादा डेवलपमेंट होगा उतना ही ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का कंजम्पशन होगा. एंड दिस प्रोसीजर इम्पैक्ट्स नेगेटिवली ऑन द इकोसिस्टम. और इस प्रोसेस में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके इकोसिस्टम के ऊपर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, या हम कह सकते हैं कि दिस प्रोसेस लीड्स टू environmental degradation. Some of the developing countries think that the environmental problem is due to the influences of other countries, especially the exploitation of their resources by the multinational companies for the purpose of supplying high consumption lifestyle of the developed industrialized nations. Developing countries का ये मानना है कि जो environmental problems या environmental issues हैं जो उनकी countries में हो रहे हैं, उसका एक मेन रीजन ये है कि डेवलप्ड कंट्रीज से रिलेटेड जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज या मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है वो उनकी कंट्री में आते हैं और उनका इंटरफेरेंस होता है और वो उनके कंट्रीज के नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं या ओवर कंज्यूम करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन जो उनकी रेवेन्यू का होता है वो अपने डेवलप्ड कंट्रीज में ही जाता है. Whereas the developed nations point out that the rapidly growing population of the poor and developing nations is the primary contributor of the environmental problem. Developed nations क्या सोचते हैं कि developing countries क्योंकि वो poor countries हैं, उनके यहाँ बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं पर उनके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है और उनके यहाँ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ है या पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो वो भी एक प्राइमरी कंट्रीब्यूटर हैं एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए. ऑल्सो द डेवलपिंग कंट्रीज बिलीव दैट सिंस डेवलप्ड कंट्रीज हैव हिस्टोरिकली बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन देमसेल्व्स, डेवलप्ड कंट्रीज should bear more of the cost and burdens of sustainable development than developing countries. Developing countries ये भी बिलीव करते हैं या उनका ये भी मानना है कि डेवलप्ड कंट्रीज का तो ये एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है, क्योंकि वो रिच कंट्रीज हैं, डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन देमसेल्व्स. तो डेवलप्ड कंट्रीज को भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी कॉस्ट या जो भी इश्यूज हैं उसको बेयर करना चाहिए. डेवलपिंग कंट्रीज टेंड टू बिलीव ओवर कंजम्पशन कॉजेज मोर हार्म. डेवलपिंग कंट्रीज ये बिलीव करते हैं कि ओवर कंजम्पशन जो उनकी कंट्री में हो रहा है उसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है. So thus developed countries with higher per capita consumption cause more harm and should bear a greater share of the cost and burdens of sustainable development. तो डेवलपिंग कंट्रीज ये कहते हैं कि भाई डेवलप्ड कंट्रीज में पर कैपिटा कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, तो उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो कॉस्ट और बर्डन है उनको बेयर करना चाहिए. It is assumed that 1,000 babies born in developed countries consume 3 to 4 times as much of the earth resources as 9,000 babies born in developing countries. एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नेचुरल रिसोर्सेज के ओवर कंजम्पशन का डेवलप्ड कंट्रीज में, कि डेवलप्ड कंट्रीज में 1,000 बेबीज जितना नेचुरल रिसोर्स कंज्यूम करते हैं उतना ही नेचुरल रिसोर्स डेवलपिंग कंट्रीज या पुअर कंट्रीज के 9,000 बेबीज कंज्यूम करते हैं. द डेवलप्ड कंट्रीज
contest that the developing countries have rapid population growth leading to greater consumption of resources as compared to developed countries with relatively stable population growth. डेवलप्ड कंट्रीज अब ये कहते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज में पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रहा है, और क्योंकि हमारे यहाँ यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज में तो पॉपुलेशन एक स्टेबल हो गई है, तो इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज के यहाँ वो जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है. दस डेवलपिंग कंट्रीज should share in the cost and burdens of sustainable development since they are partially responsible for environmental harm. तो डेवलप्ड कंट्रीज का ये मानना है कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से डेवलपिंग कंट्रीज भी रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि वहां के जो सिटीजन है या वहां की जो पॉपुलेशन है वो भी नेचुरल रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रही है, तो उनको भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए. डेब्ट ट्रैप, an incentive structure that lure individuals into long-term debt obligations under condition that strongly favor the lender. अब डेब्ट ट्रैप क्या होता है कि ये एक इंसेंटिव बेस्ड स्ट्रक्चर होता है जो पुअर कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज को जो अपने यहाँ डेवलपमेंट करना चाहते हैं, अपने यहाँ इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश करना चाहते हैं, उनको अट्रैक्ट करता है कि आप डेवलप्ड कंट्रीज से लोन लीजिए, और ये जो लोन होता है वो डेवलप्ड कंट्रीज अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर ही देते हैं. और इसकी वजह से 1980s और 1990s में बहुत ज्यादा सिवियर फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी. जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं जैसे कि ब्राजील है, मैक्सिको है, अर्जेंटीना है, नाइजीरिया, वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी. और मैक्सिको ने तो डिक्लेयर कर दिया था कि हम वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो हमने लोन लिया है हम उसको रिपे नहीं कर पाएंगे. द गवर्नमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज वर अनेबल टू रिपे द डेब्ट, सो फाइनेंशियल रेस्क्यू ऑपरेशंस बिकेम नेसेसरी. तो उन्होंने कहा कि हमको रेस्क्यू ऑपरेशन चाहिए, हमको एक पैकेज चाहिए so that we can repay at least the interest to developed countries, loan from the developed countries. To encounter this problem, the IMF and the World Bank started macroeconomic tightening and structural adjustment. तो इस प्रॉब्लम को इनकाउंटर करने के लिए या इसको फेस करने के लिए वर्ल्ड बैंक और IMF ने मैक्रो इकोनॉमिक टाइटनिंग, मतलब कि अब जो उन्होंने लोन देना शुरू किया वो ये देखा कि पुअर कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज उसको कितने टाइम में रीपे कर सकते हैं. तो इसके लिए उन्होंने कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी किए. डेवलपिंग कंट्रीज इजीली फेल प्रे टू डेब्ट ट्रैप. फॉर एग्जाम्पल ब्राजील, मैक्सिको, अर्जेंटीना, नाइजीरिया एंड अदर वर वंडरफुल कस्टमर बोरोइंग हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस. जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज या जो पुअर कंट्रीज हैं वो एक कह सकते हैं कि एक बहुत ज्यादा एक बिगेस्ट ग्रुप ऑफ कस्टमर होता है जो वर्ल्ड बैंक से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से या डेवलप्ड कंट्रीज से लोन लेता है. डेवलप्ड वर्ल्ड की एक मोनोपोली होती है ग्लोबल मनी से रिलेटेड कि उनके पास बहुत ज्यादा रेवेन्यू होता है, बहुत ज्यादा पैसा होता है, तो वो डेवलपिंग कंट्रीज या पुअर कंट्रीज को अपने डेब्ट ट्रैप में ले लेते हैं. और इसके बाद जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं वो अपने वैल्यूएबल रिसोर्सेज को उनसे कहते हैं कि भाई आप ठीक है, अब हमारे वैल्यूएबल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करिए या कंज्यूम करिए, जिससे कि हम आपका जो डेब्ट है या लोन है उसको हम रीपे कर सकें. The developing countries feel that the high rate of deforestation in Brazil and Indonesia is because of the debt servicing necessary to pay off the debt taken from World Bank, IMF combined. डेवलपिंग कंट्रीज ये सोचते हैं कि ब्राजील और इंडोनेशिया में जितना भी डिफॉरेस्टेशन हुआ है उसका मेन रीजन ये है कि उनको वर्ल्ड बैंक और IMF का जो डेब्ट था उसको रीपे करना था. उसकी वजह से उन्होंने उनके नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया या कंज्यूम किया. द डेवलपिंग कंट्रीज सेल ऑफ
their wood or natural resources as a low price to pay off their loans which leads to environmental degradation. तो अब क्या होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं वो अपने वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस को बहुत लो प्राइस में डेवलप्ड कंट्रीज को सेल ऑफ कर देते हैं जिससे कि वो लोन को पे कर सकें. नाउ अनफेयर international trade practices of the developed countries is one of the major reasons for both poverty and environmental degradation in developing countries. जो unfair international trade practices हैं, unfair का मतलब है कि कुछ ऐसी trade practices जो developed countries के terms and conditions पर ही होती हैं, वो एक major reason है पॉवर्टी और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का डेवलपिंग कंट्रीज में या पुअर कंट्रीज में. नाउ रोल ऑफ मल्टीनेशनल्स. मल्टीनेशनल कंपनीज का क्या रोल होता है? द कॉर्पोरेशन दैट हैज इट्स फैसिलिटीज एंड अदर एसेट्स इन एटलीस्ट वन कंट्री अदर देन इट्स होम कंट्री. मल्टीनेशनल कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनके एसेट्स या प्रॉपर्टीज उनकी होम कंट्री में भी होता है और दूसरी कंट्रीज में भी होता है. सच कंपनीज हैव ऑफिस एंड और फैक्ट्रीज इन डिफरेंट कंट्रीज एंड यूजुअली हैव अ सेंट्रलाइज्ड हेड ऑफिस वेयर दे कोऑर्डिनेट ग्लोबल मैनेजमेंट. जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके हेड ऑफिस उनके होम कंट्री में होता है और उनके और जो ऑफिसेज या फैक्ट्रीज होती हैं वो डिफरेंट कंट्रीज में होती हैं और उनका एक सेंट्रलाइज हेडक्वार्टर होता है जहां से वो पूरे ग्लोबल मैनेजमेंट यानी कि पूरे जो वर्ल्ड में उनकी जितने भी ब्रांचेस हैं उसको कोऑर्डिनेट करते हैं. द कंट्री वेयर द हेडक्वार्टर या हेड ऑफिस इज लोकेटेड इज कॉल्ड द होम कंट्री. मल्टीनेशनल कंपनीज के जो हेडक्वार्टर या हेड ऑफिस जिस भी कंट्री में होता है उसको कहते हैं होम कंट्री. Whereas the other countries where operational branches are located are called the host countries. और उनके दूसरे कंट्रीज में जो ऑपरेशनल ब्रांचेस होती हैं उन कंट्रीज को कहते हैं होस्ट कंट्री. तो यहाँ पे दो चीजों का कॉन्सेप्ट है. एक कॉन्सेप्ट है होम कंट्री का. होम कंट्री मतलब कि जहां पर मल्टीनेशनल कंपनीज का हेडक्वार्टर या हेड ऑफिस होता है और होस्ट कंट्रीज वो कंट्रीज होती हैं जहां पर उनकी दूसरी ब्रांचेस या ऑपरेशनल ब्रांचेस होती हैं. दे पे एन इंपॉर्टेंट रोल इन ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इवन नोटेबल इन्फ्लुएंसेस इन अ कंट्रीज इकोनॉमी एज वेल एज द वर्ल्ड इकोनॉमी. ये जितनी भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं नोकिया, वोडाफोन, फिएट, फोर्ड मोटर्स, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, पेप्सी एटसेट्रा. इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ग्लोबलाइजेशन में, इंटरनेशनल रिलेशंस में और जिस कंट्री में इनकी ब्रांचेस होती हैं या जो इनके होस्ट कंट्रीज होती हैं उसकी इकोनॉमी में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. Now next is advantages of multinational companies in developing countries. Developing countries में जो मल्टीनेशनल कंपनीज की ब्रांचेस होती हैं क्या एडवांटेजेस होता है या क्या बेनिफिट्स होते हैं? Although they often poor wages, they pay poor wages and they bring employment to the local area. सबसे पहला एडवांटेज हम कह सकते हैं ये एडवांटेज है कि ये एक तो सबसे बड़ी चीज कि जहां पर इनकी ब्रांचेस होती हैं वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, पर ये अपने एम्प्लॉइज को बहुत ही कम वेजेस देती हैं. नाउ एजुकेशन टू हेल्प इंप्रूव द एनवायरनमेंट. ये एजुकेशन भी प्रोवाइड करती हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड या एनवायरमेंटल अवेयरनेस से रिलेटेड जो भी टाइम टू टाइम एजुकेशन या जो भी हेल्प होती है वो प्रोवाइड करती हैं. ये मल्टीनेशनल कंपनीज दे कैन हेल्प विद बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स, वाटर सर्विसेज, हेल्थ केयर एंड अदर नेटवर्क. अब ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं क्योंकि इनके पास रेवेन्यू सोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं तो ये जिस भी कंट्री में इनके
होस्ट ऑफिसेज होते हैं या जो होस्ट कंट्रीज होती हैं या जब ब्रांचेस होती हैं वहां पे ये बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि उनके ऑफिसेज बहुत अच्छे होते हैं, स्कूल बनाते हैं, हेल्थ केयर सेंटर्स बनाते हैं, या वाटर सर्विसेज अच्छी होती हैं, मतलब कि पोर्टेबल वाटर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व करते हैं, हेल्थ केयर और भी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ये प्रोवाइड करते हैं. नाउ multinational companies reduces technological gap between developed and developing countries. ये एक एडवांटेज है क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इनके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होती है, और डेवलपिंग कंट्रीज या पुअर कंट्रीज के पास, क्योंकि उनके पास रेवेन्यू नहीं है तो उनकी टेक्नोलॉजी भी कंपैरेटिवली इतनी अच्छी नहीं होती है. तो ये मल्टीनेशनल कंपनीज टेक्नोलॉजिकल गैप फुलफिल करते हैं या उसको बहुत कम कर देते हैं. ये डेवलपिंग कंट्रीज में भी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं. Ways by which multinational companies cause environmental degradation in the developing countries. मल्टीनेशनल कंपनीज किस तरह से डेवलपिंग कंट्रीज में एनवायरनमेंट को डिग्रेड करती हैं वो अब हम यहां देखेंगे. लिस्टेड बिलो आर 5 ways by which multinational companies cause environmental degradation and they are: number 1, multinational companies may acquire land which may be used for agriculture, grassland or precious forest area, thus destroying the ecology. जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज में लैंड को एक्वायर करती हैं, और ये लैंड एग्रीकल्चर लैंड भी हो सकता है, ग्रासलैंड भी हो सकता है, या बहुत ही वैल्यूएबल फॉरेस्ट एरिया भी हो सकता है. तो हम ये कह सकते हैं कि ये मल्टीनेशनल कंपनीज एक तरह से डेवलपिंग कंट्रीज की इकोलॉजी को डिस्ट्रॉय कर देती हैं. Second point is they over-exploit resources of the country which is available at a cheaper rate to their advantage. अब ये एक फैक्ट है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज या पुअर कंट्रीज हैं उनके पास बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं. कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, बहुत रिच नेचुरल रिसोर्सेज हैं. मल्टीनेशनल कंपनीज उन नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट करती हैं, या उनको, क्योंकि वो वहां पर बहुत ही चीप रेट में होते हैं या बहुत ही सस्ते रेट में उनको मिल जाते हैं. दे कॉज डिफॉरेस्टेशन टू फुलफिल देयर डिमांड ऑफ वुड और लैंड. मल्टीनेशनल कंपनीज डिफॉरेस्टेशन भी करती हैं, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट होता है क्योंकि उनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना है और उनको वुड की डिमांड होती है, लैंड की डिमांड होती है, तो इसके लिए वो डिफॉरेस्टेशन भी करती हैं. Next point is they consume much of energy produced, leading to more demand of energy which might be produced by using fossil fuel like coal. मल्टीनेशनल कंपनीज की जो एनर्जी कंजम्पशन से रिलेटेड डिमांड्स होती हैं वो बहुत हाई होती हैं, और इसके लिए वो डेवलपिंग कंट्रीज के जो भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, गैस है, उसको वो कंज्यूम करती हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज दे डैमेज द एनवायरनमेंट बाय air pollution by setting up their factories in the developing rather than their home country. मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो बहुत ही अब जैसे एयर पॉल्यूशन है, एक टॉक्सिक एयर पॉल्यूशन के थ्रू वो डेवलपिंग कंट्रीज के एनवायरनमेंट को डैमेज करती है, क्योंकि वो अपनी जो फैक्ट्रीज, जो इस तरह की फैक्ट्रीज होती हैं जो एनवायरनमेंट को डैमेज कर सकती हैं, या जो एनवायरमेंटल हैजर्ड से रिलेटेड फैक्ट्रीज होती हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स बनाना है, इंसेक्टिसाइड्स बनाना है या केमिकल बनाना है, तो वो अपनी फैक्ट्रीज को अपने नेटिव कंट्री के बजाय वो ऐसी कंट्रीज में डेवलप करते हैं जो पुअर कंट्रीज होती हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज द इफ्लुएंस फ्रॉम देयर फैक्ट्रीज में बी लेड इनटू द वाटर बॉडीज, पॉल्यूटिंग देम एंड कॉजिंग बायोमैग्निफिकेशन एंड रिलीज इल इफेक्ट टू द एक्वेटिक लाइफ. इनके जो इफ्लुएंट्स होते हैं, इफ्लुएंट मतलब कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल होता है उनकी फैक्ट्री से जो रिलीज होता है, वो उनको अपने आसपास के जो वाटर सोर्सेज होते हैं उसमें ये रिलीज करते हैं, और इसकी वजह से वाटर बॉडीज पॉल्यूट होती हैं और बायोमैग्निफिकेशन होता है. एंड दे ऑल्सो रिलीज इल इफेक्ट टू द एक्वेटिक लाइफ. जितनी भी एक्वेटिक लाइफ होती है उसके ऊपर ये बहुत इल इफेक्ट पड़ता है, बहुत बुरा असर पड़ता है.
कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज उसको फॉलो करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, जिसकी वजह से डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है और एक्सप्लॉयटेशन होता है नेचुरल रिसोर्सेज का। ट्रेड पॉलिसीज इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि वो डेवलपिंग कंट्रीज या पुअर कंट्रीज को बुली करें या उनको डोमिनेट करें कि भाई हम आपकी कंट्री में आएंगे, डेवलपमेंट करेंगे और बदले में हम आपके जितने भी वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। मल्टीनेशनल कंपनीज जब किसी डेवलपिंग कंट्री में एंटर करती हैं तो उससे पहले वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करती हैं और इसके लिए वहां के डेवलपिंग कंट्रीज के जितने भी जो भी वैल्यूएबल लैंड होता है उसको ये एक्वायर कर लेती हैं। The condition put forward by the government of developing countries for multinational companies to fulfill before their entry into their market are as follows. अब डेवलपिंग कंट्रीज ने कुछ रूल्स बना दिए हैं, कुछ कंडीशंस हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज दे पुट फॉरवर्ड। वो ये कहती हैं कि भाई कुछ उनकी कंडीशंस हैं कि भाई आप हमारे मार्केट में एंट्री करने से पहले इन कंडीशंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट इज स्टेक इन द कंपनी, कि उनका डेवलपिंग कंट्रीज का भी कुछ स्टेक या कुछ शेयर होगा कंपनी में। एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लोकल वर्कफोर्स, अगर मल्टीनेशनल कंपनी डेवलपिंग कंट्री में अपना सेटअप कर रही है तो मैक्सिमम लोकल लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट देगी। गुड रेम्यूनरेशन टू द वर्कफोर्स, उनके जो सैलरी है या जो डेली वेजेस हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। यूज ऑफ लोकल रॉ मटेरियल्स, मल्टीनेशनल कंपनीज लोकल रॉ मटेरियल को यूज करेंगी। कॉम्पनसेशन इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स और डेथ वाइल ऑन ड्यूटी, मल्टीनेशनल कंपनी उनके एम्प्लॉइज को कॉम्पनसेशन देंगी अगर कोई एक्सीडेंट होता है या डेथ होता है ड्यूटी के टाइम। इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेबिलिटी, वो ये इंश्योर करेंगी कि जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनकी इकोनॉमिक और सोशल स्टेबिलिटी हो। Now next is the contribution or advantages of multinational companies towards the environment. अब multinational companies क्या contribution करती हैं environment के लिए? Although they often pay poor wages, multinational companies they bring employment to the local area and they also provide education to help improve the environment. They can help with better infrastructure like building, water services, healthcare and other network. So these are the advantages or the contributions of multinational companies towards the environment. Now coming to the major disadvantages or major drawbacks of the multinational company. So MNCs tend to profit motivated and careless for environment and social considerations. Over exploitation of natural resources, increased air, water and land pollution. Local resources of developing countries are exploited for companies' benefit. Now these are the following, these are the major drawbacks of multinational companies. So multinational companies, they are typically profit driven companies with little consideration for environmental or social issues, and they increase air, water and land degradation as a result of over exploitation of natural resources, local resources of developing countries, and all the natural resources and local resources are being utilized by the developed or multinational companies for the benefit of their own country or the own company. Now next topic is Bhopal gas tragedy or Bhopal gas disaster. Now on the night of December 2, 1984, Union Carbide, a pesticide plant in Bhopal, India, leaked methyl isocyanate, MIC in short, gas and other chemicals, creating a dense toxic cloud over the region and killing more than 8,000 people in just the first few days. It is considered to be the world's worst industrial disaster. Now Union Carbide, a pesticide company in Bhopal, they spilled methyl isocyanate, that is MIC gas, and other chemicals on the
night of 2nd December 1984, and they causing a dense deadly cloud over the region, and they killing over 8,000 people. Now these are the symptoms: coughing, severe eye irritation, a sense of suffocation, burning in the respiratory tract, dry eye, breathlessness, stomach aches, and vomiting were the first symptoms of the exposure. Choking, circulatory collapse, and pulmonary swelling were the leading causes of mortality or the death. Now, premature death increased up by the 300%, and neonatal mortality rate by about 200%. Neonatal mortality rate means the child mortality rate increased by about 200%. Towards a sustainable future. In this chapter, there are few main topics: global interdependence, international cooperation, role of non-governmental organizations, technology that sustains satellite imagery, that is in this chapter we'll study about the remote sensing satellite. Now coming to the explanation part, the first is global interdependence. Now before we start, let me explain the meaning of sustainable development. So according to United Nations, sustainable development is the development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Sustainable future या sustainable development का जो मतलब है, यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग कि जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है वो डेवलपमेंट हम बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के, हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज न करें या हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को किसी तरह का हार्म न पहुंचाएं, इस तरह का डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट है. Now, first topic is global interdependence. Now, what is global interdependence? It means mutual dependence at a global level. One country depends on another country for something, which in turn depends on third country for something. Global interdependence का मतलब है कि जितने भी countries हैं world में, वो एक दूसरे के ऊपर interdependent हैं. एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है तो दूसरा कंट्री किसी तीसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है, और ये चेन चलती रहती है. एक क्लासिक एग्जाम्पल यहां पर दिया हुआ है कि जापान जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स को फॉर एग्जाम्पल एक कार बेच रहा है, और यूनाइटेड स्टेट अपनी टेक्नोलॉजी को सऊदी अरेबिया को एक्सपोर्ट कर रहा है, और सऊदी अरेबिया अपने ऑयल्स को जापान को एक्सपोर्ट कर रहा है. So this is the classic example of global interdependence कि यहाँ पर तीन कंट्रीज का एग्जाम्पल दिया है जो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं. Now nations of the world are mutually dependent on each other for economic development and are mutually responsible for the problems of environmental pollution and degradation. The nations of the world must work cooperatively to solve these problems. अगर सारी कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो इसका मतलब ये है कि ड्यूरिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो भी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है उसके लिए भी सारे कंट्रीज एक दूसरे के लिए म्यूचुअली रिस्पॉन्सिबल हैं. ग्लोबल इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस हैज ग्रोन एक्स्ट्राऑर्डिनरीली as a consequence of enormous technological progress and policies aimed at opening national economics internally and externally to competition. So the global economic interdependence जो है, अगर सारे कंट्री एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं तो उन कंट्रीज की इकोनॉमी भी एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होती है, और ये जो इंटरडिपेंडेंस है कुछ सालों से या कह सकते हैं कि कुछ दशकों से बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और ग्लोबलाइजेशन हैज ब्रॉट बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर मेनी पीपल इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि जब सारे कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली डिपेंडेंट हो जाते हैं, जहां पर कम्युनिकेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ट्रांसपोर्टेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इंटरनेशनल ट्रेड बहुत इजीली हो रहा है, तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक तरह से सबके लिए बेनिफिट लेकर आता है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है. Inequality between countries and within countries has also increased, and global environmental risk have increasingly become a matter of global concern.
एंड कॉन्सिक्वेंटली अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी उतनी ही तेजी से इंक्रीज हो रहा है। प्रमोटिंग अप्रोच to policy making through greater coherence and coordination is essential to ensure that the benefits of globalization are expanded and spread more broadly and that its potentially negative effects are diminished. इस ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस में सारे कंट्रीज को, स्पेशली जो एडवांस या इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं, उनको ये ध्यान देना होगा कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। डेवलपिंग कंट्रीज या पुअर कंट्रीज को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और सबको एक जैसा बेनिफिट मिले और किसी के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। Over the past 15 years, the UN held a series of major UN conferences and summits to coordinate cooperation amongst countries to solve the global economic and environmental problem and bring the developed and developing countries at a platform of mutual concern. पिछले 15-20 साल की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशंस ने बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस की हैं और बहुत सारे समिट्स किए हैं। कॉन्फ्रेंसेस और समिट्स का मतलब ये है कि बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस या समिट्स एनवायरनमेंट के ऊपर हैं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर हैं, हाउ टू डिक्रीज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन या जो भी बर्निंग एनवायरमेंटल इश्यूज हैं उसके ऊपर बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, समिट्स हुई हैं, प्रोटोकॉल्स बने हैं, ट्रीटी हुई है, एग्रीमेंट हुआ है। और ये जो जितनी भी सारी चीजें हैं वो उनका सिर्फ एक ही एम है कि हाउ टू सॉल्व ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम एंड ब्रिंग द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज एट अ प्लेटफॉर्म ऑफ म्यूचुअल कंसर्न, बिकॉज देयर इज अ ग्रेट डिबेट between developed and developing countries regarding the environmental issues और दोनों कंट्रीज एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। तो यूनाइटेड नेशन का ये अप्रोच है कि वो इन सारे कंट्रीज को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए और उनके बीच में जो भी एनवायरमेंटल इश्यूज हैं या जो भी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो उन सबको सॉल्व करें। इट ऑल्सो वर्क्स ऑन इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के जितने भी बेनिफिट्स हैं, जितने भी अपॉर्चुनिटीज हैं, उसकी इक्वल शेयरिंग होनी चाहिए बिटवीन द टू कंट्रीज, डेवलप्ड और इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज और डेवलपिंग और यू कैन से द पुअर कंट्रीज। इट ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हु आर वर्किंग फॉर द सेम कॉज। तो ये इनका एक एम ये भी है कि जो एनजीओज हैं जो इसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको भी ये सपोर्ट करता है। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस which is the second component of sustainable future. Now what is economic interdependence? तो ये वो ऐसा सिस्टम होता है जहां पर बहुत सारी कंपनीज एक दूसरे के ऊपर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ये वो ऐसा सिस्टम है जहां पर बहुत सारे देश और उनकी इकोनॉमीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं किसी प्रोडक्ट के लिए, गुड्स के लिए। जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है बहुत सारे गुड्स या प्रोडक्ट्स के लिए। इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली ओवर द पास्ट सेंचुरी विद द डॉन ऑफ द एज ऑफ कंप्यूटराइजेशन, कम्युनिकेशन, ट्रैवल, कन्वीनियंस एंड शिपिंग। इंटरनेशनल ट्रेड अगर हम 21st सेंचुरी और लास्ट सेंचुरी के बीच में कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। देयर इज अ ट्रिमेंडस इंक्रीज और सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द इंटरनेशनल ट्रेड। और ये कैसे हुआ है? कंप्यूटराइजेशन की वजह से, कम्युनिकेशन की वजह से, ट्रैवल इतना इजी हो गया है, या हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इतने इजी हो गए हैं। तो इस वजह से इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की अगर हम बात करते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज अ डिपेंडेंस ऑफ कंट्रीज ऑन वन अनदर
रिसोर्सेज, नॉलेज एंड लेबर। एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर लेबर के लिए डिपेंडेंट हो सकता है, नॉलेज के लिए डिपेंडेंट हो सकता है, उसके रिसोर्सेज की वजह से डिपेंडेंट हो सकता है। नाउ ऑल दिस हैज टेकन अ न्यू फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल एंड मार्केटिंग इंटीग्रेशन। सो देयर हैज बीन शार्प इंक्रीज इन ग्लोबल बॉन्ड फाइनेंसिंग एंड इंटरनेशनल बैंक लोन्स। इस वजह से इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस और ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो वर्ल्ड बैंक है या IMF है, उसने बहुत सारे लोन्स भी देने शुरू किए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि देयर इज अ शार्प इंक्रीज इन ग्लोबल बॉन्ड फाइनेंसिंग। बहुत तरह तरह की फाइनेंसिंग हो रही है। सेल्स ऑफ 500 MNCs grew more than 7 times between 1971 to 1991। टॉप 500 MNCs को अगर हम कंपेयर करें, उनकी सेल्स को कंपेयर करें, तो 1971 और 1991 के बीच में उनकी सेल्स 7 टाइम्स ज्यादा हो गई है। सिंस द 90s, क्रॉस कॉन्टिनेंटल मर्जर्स हैव इंक्रीज्ड एंड मेजर ब्रांड्स नेम्स हैव नाउ एस्टैब्लिश्ड ग्लोबली लाइक पेप्सी, नाइके, मैकडोनल्ड, रेनबैक्सी एंड सम एग्जाम्पल्स। इसी 1990s के टाइम में बहुत सारे मर्जर्स हुए, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज नई नई ग्रो हुई। तो ये जो कंपनीज हैं आज एक हाउस होल्ड नेम बन गई हैं, जैसे कि पेप्सी, मैकडोनल्ड की अगर हम बात करें, रेनबैक्सी की बात करें, तो ये कुछ ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनको आज हर एक कंट्री में सब लोग जानते हैं। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की वजह से फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन आर इन ट्रिलियंस पर डे वर्ल्ड वाइड, स्टॉक एंड अदर फॉर्म और ट्रांजैक्शन इवन फास्टर। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की वजह से फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन जो है वो इंक्रीज हुआ है, स्टॉक्स इंक्रीज हुए हैं, या हम कह सकते हैं कि जितना भी ट्रांजैक्शन है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो गया है। ऑल सच ट्रांजैक्शंस आर ग्लोबल इन कैरेक्टर। दिस एक्सिलरेशन इज रूटेड इन कंप्यूटराइजेशन। और ये जो ट्रांजैक्शन है, जो इंक्रीज हो रहा है, ट्रांजैक्शन इतनी तेजी से हो रहा है, this is just because of the computerization. The next type of interdependence is the environmental interdependence, which is the third component of sustainable future. Now, environment provides resources to the economy. So we can say the environmental interdependence and economic interdependence are interrelated with each other, because environment provides land, water, air, energy resources, coal, oil, forest, minerals and many metals. So many other natural resources which are essential for the economic development of the economy. So environmental concern may be local in nature, for example ecological degradation due to mining at a certain place, air pollution and water pollution in a city due to the particular factory or industrial zone, or hunting and poaching of certain animal species like tigers, rhinoceros, deforestation on particular forest like Amazon rainforest in Brazil. Environmental interdependence दो तरह की हो सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले लोकल एनवायरमेंटल इंटरडिपेंडेंस की बात की गई है कि इकोलॉजिकल, अगर हम एनवायरमेंटल कंसर्न की बात करें लोकली, तो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन आ सकता है। और ये जो इकोलॉजिकल या इकोसिस्टम डिग्रेडेशन होता है वो एयर पोल्यूशन की वजह से हो सकता है, वाटर पोल्यूशन की वजह से हो सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि उस सिटी में कोई पर्टिकुलर फैक्ट्री या इंडस्ट्रियल जोन है, हंटिंग या पोचिंग हो रही है एंडेंजर्ड या रेयर एनिमल्स की, जैसे टाइगर्स है, राइनोसेरस है, या डिफॉरेस्टेशन हो रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया में। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है अमेज़न रेन फॉरेस्ट का। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो इकोलॉजिकल या इकोसिस्टम डिग्रेडेशन के एग्जाम्पल्स हैं लोकली। बट दीज लोकल एनवायरमेंटल इश्यूज हैव अ ग्लोबल। अब ये जो लोकल एनवायरमेंटल इश्यूज हैं वो ग्लोबल कब हो जाते हैं? जैसे क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें, एसिड रेन की बात करें, ओजोन डिप्लीशन की बात करें, तो ये ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज हैं। Thus, there is need for global international cooperation for global climate and biodiversity. So again, there is a need for, अब यहाँ पे एक जरूरत है कि global international cooperation की, जो global climate और global biodiversity के बारे में सोचे या उससे रिलेटेड कुछ issues के बारे में सोचे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए।
The pollution of oceans and overfishing also need global concern and cooperation. ओशन पॉल्यूशन या ओवरफिशिंग की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये भी एक ग्लोबल कंसर्न है. नाउ नेक्स्ट इज ग्लोबल एनवायरमेंटल हेल्थ. नाउ व्हाट इज ग्लोबल एनवायरमेंटल हेल्थ? सो वी डिपेंड ऑन द एनवायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल्स नीडेड टू सस्टेन लाइफ, जैसे कि क्लीन एयर है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, या हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिशियस फूड है. तो हम एनवायरमेंट के ऊपर एनर्जी और मटेरियल्स के लिए डिपेंडेंट हैं. WHO defines environmental health as all the physical, chemical and biological factors external to a person and all the related factors impacting behaviors. WHO ने environmental health की एक definition दी है. उन्होंने ये कहा कि all the physical, chemical and biological factors external to a person, जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, और जितने भी फैक्टर्स उनके बिहेवियर से रिलेटेड हैं, सो दिस ऑल आर इंक्लूडेड इन एनवायरमेंटल हेल्थ. जैसे कि पॉल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज है, रिसोर्स ओवर यूज है, दे हैव सीरियस इम्प्लीकेशंस फॉर ह्यूमन हेल्थ. इनका ह्यूमन हेल्थ के ऊपर बहुत एडवर्स इम्पैक्ट होता है. Like pollution can lead to asthma और कैंसर. क्लाइमेट चेंज की वजह से बाढ़ आ सकती है, सूखा पड़ सकता है, और रिसोर्स ओवर यूज की वजह से न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है. सो these are the factors, these are the environmental factors which have serious implication for human health. It is targeted towards preventing disease and creating health supportive environment. This definition excludes behavior not related to environment as well as behavior related to social and cultural environment and genetics. Now, the relationship between human health and the environment is dynamic and it is ever growing or ever going relationship. Some of the most important or most profound global changes are occurring in the poorest country of the world, where many of the major detriments of health arise from pressing environmental health issues. कुछ जो बहुत पुअर कंट्रीज हैं, वहां पर कुछ इस तरह के environmental issues हैं जिनको ज्यादा लाइट नहीं किया जाता है, लाइमलाइट में नहीं लाया जा सकता है, तो उसकी वजह से वहां पर हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हैं. A fact sheet from WHO on climate change and health list the following effects of climate change on human. अब WHO के अकॉर्डिंग उन्होंने एक फैक्ट लिस्ट रिलीज की है. उसके अकॉर्डिंग इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ह्यूमंस के ऊपर क्लाइमेट चेंज के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं. क्लाइमेट चेंज अफेक्ट्स द सोशल एंड एनवायरमेंटल डेट्रीमेंट्स ऑफ हेल्थ, clean air, safe drinking water, sufficient food and secure shelter. Climate change की वजह से social और environmental issues होते हैं. हेल्थ के ऊपर क्लीन एयर नहीं मिलती है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर की कमी हो जाती है, सफिशिएंट फूड नहीं मिल पाता है, शेल्टर नहीं मिल पाता है अगर क्लाइमेट चेंज होता है, या हम कह सकते हैं कि environmental issues या environmental degradation होता है. Now the next effect of climate change on human health is global warming that has occurred since 1970, caused over 1,40,000 excess death annually by the year 2004. Global warming ये जो फिनोमिना है वो 1970 में सबसे पहले हाईलाइट हुआ था, और 2004 तक ये एस्टिमेट है कि इसमें अभी तक 1,40,000 लोगों की डेथ हो चुकी है. नेक्स्ट इफेक्ट इज द डायरेक्ट डैमेज कॉस्ट टू हेल्थ, एक्सक्लूडिंग कॉस्ट इन हेल्थ determining sectors such as agriculture and water and sanitation is estimated to be between $2 to 4 billion per year by 2030. अगर हम डायरेक्ट डैमेज कॉस्ट की बात करें, अगर हम इसमें जो हेल्थ डिटरमाइनिंग सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर हैं या वाटर सैनिटेशन को एक्सक्लूड कर लें, अगर हम उसको हटा दें, तो ये 2030 तक $2 to 4 billion पर ईयर हो सकती है.
Many of the major killers such as diarrheal diseases, malnutrition, malaria and dengue are highly climate sensitive and are expected to worsen as the climate changes. बहुत सारी ऐसी diseases हैं जैसे डायरिया है, मलेरिया है, डेंगी है, या हम कह सकते हैं कि मेल न्यूट्रिशन एक बहुत ज्यादा क्लाइमेट सेंसिटिव होते हैं, और जैसे जैसे क्लाइमेट चेंजेस बढ़ते जाते हैं या कह सकते हैं कि वर्ड्स होते जाते हैं, वैसे वैसे ये सारी डिजीजेस भी स्प्रेड होती हैं. एरियाज विद वीक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मोस्टली इन डेवलपिंग कंट्रीज विल बी द लीस्ट एबल टू कोप अप विदाउट असिस्टेंस टू प्रिपेयर एंड रिस्पॉन्ड. जो डेवलपिंग कंट्रीज या पुअर कंट्रीज हैं जहां पर वीक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है और उनको कोप अप करने में बहुत टाइम लगता है, और बिना किसी के असिस्टेंस के या किसी और प्रिपरेशन के उनको इन सब चीजों से कोप अप करने में बहुत टाइम लग जाता है. रिड्यूसिंग एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस थ्रू बेटर ट्रांसपोर्ट, फूड एंड एनर्जी यूज चॉइसेस कैन रिजल्ट इन इम्प्रूव्ड हेल्थ. अब हम ग्रीन हाउस गैसेस को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? अगर हम ट्रांसपोर्ट, अपने ट्रांसपोर्ट को वाइजली चूज करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, फूड अगर हम अच्छे से चूज करें, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस करें, या एनर्जी यूजेस चॉइसेस का मतलब है कि हम फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस करने की कोशिश करें और रिन्यूएबल सोर्सेस की तरफ स्विच करें, तो हम अपने हेल्थ को और एनवायरनमेंट की हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज इंटरनेशनल कोऑपरेशन, एंड फर्स्ट इज द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. So Montreal Protocol, basically it is the connection between ozone layer depletion and ultraviolet beta radiation. So this is the main point related to the Montreal Protocol: ozone layer depletion and ultraviolet beta radiation. Now the ozone layer is a belt of naturally occurring ozone gas that sits 15 to 30 kilometers above Earth and shield from the harmful ultraviolet beta radiation emitted by the sun. जो अगर हम ये बात करें कि स्ट्रेटोस्फेयर है, it is a layer of Earth atmosphere and it is the second layer. अगर हम first layer की बात करें तो troposphere is the lowest layer or the first layer. Just above the troposphere there is a layer called stratosphere, and the next higher level above the stratosphere और एक और layer है mesosphere. तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है. तो ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में सिचुएटेड है, और ये जो लेयर है वो हम कह सकते हैं कि अर्थ से अप्रोक्सीमेटली 15 to 30 किलोमीटर्स ऊपर है. और ये जो सोलर रेडिएशंस के थ्रू अल्ट्रावायलेट बीटा रेडिएशंस जो बहुत हार्मफुल होते हैं वो एमिट होते हैं, उससे ये हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करती है और ये उसको पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करती है, अल्ट्रावायलेट बीटा रेडिएशन के पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करती है. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, chemicals found mainly in spray aerosol heavily used by industrialized nation for the past 50 years are the primary cause of ozone layer breakdown. अगर हम इंडस्ट्रियलाइज नेशन या डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एमिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और अदर केमिकल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द depletion of ozone layer. Reductions in stratospheric ozone level will lead to higher level of ultraviolet beta radiation reaching the Earth's surface. Ultraviolet beta radiation is a band of ultraviolet radiation with wavelength from 280 to 320 nanometers produced by the sun. So this is the specification of ultraviolet beta radiation. Now human activities have lead to the depletion of ozone layer. अब बहुत सारी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, लाइक अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था कि जो स्प्रे है, जो हम डिओड्रेंट यूज करते हैं, या और भी जितने भी तरह के स्प्रे यूज होते हैं, स्प्रे एरोसोल्स होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है. और बेसिकली ये जितनी भी एरोसोल्स, इस तरह के स्प्रे एरोसोल्स यूज होते हैं, वो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री मोस्टली यूज करते हैं. नाउ स्टडीज हैव शोन दैट इन अंटार्कटिक द अमाउंट ऑफ अल्ट्रावायलेट बीटा measured at the surface can double during the annual ozone hole. Another study also confirmed the relationship between reduced ozone and increased ultraviolet beta radiation in Canada during the past year. यहाँ पे दो examples दिए हैं कि there is a
significant hole in the Antarctic region, and there is a reduced ozone hole layer. जब अल्ट्रावायलेट जैसी ओजोन लेयर रिड्यूस हुई या उसकी डेंसिटी रिड्यूस हुई, यहाँ एग्जाम्पल है कनाडा में कुछ सालों से, तो अल्ट्रावायलेट बीटा रेडिएशन का पेनिट्रेशन भी ज्यादा बढ़ गया. मतलब कि अल्ट्रावायलेट बीटा रेडिएशन हमारे अर्थ सरफेस पर बहुत ज्यादा आने लगी. Now, effects on human health. Epidemiological studies show that ultraviolet beta radiation causes skin cancer and plays a major role in malignant melanoma development. जो अगर हम इसके इल इफेक्ट्स की बात करें अल्ट्रावायलेट बीटा रेडिएशन की, तो इसकी वजह से स्किन कैंसर हो सकता है, आई इरिटेशन हो सकता है, स्किन और भी बहुत तरह के कैंसर हो सकते हैं. In addition, ultraviolet beta radiations have been linked to cataract in the eye. ये कैटरेक्ट से भी रिलेटेड है. Now coming to the Montreal Protocol. The Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer was designed to reduce the production and consumption of ozone depleting substances in order to reduce their abundance in the atmosphere and thereby protect the Earth's fragile ozone layer. तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, इसका मेन एजेंडा यही था कि हाउ टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस. और ये जो ओजोन लेयर डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं या और बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, तो उनको रिड्यूस करना, उनके एमिशन को रिड्यूस करना, जिससे कि हमारी अर्थ के ऊपर जो फ्रेजाइल ओजोन लेयर है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें. The original Montreal Protocol was agreed on 16 September 1987 and was enforced on 1 January 1989. जो एग्रीमेंट हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए वो 16 सितंबर 87 को हुआ था और इसका इन्फोर्समेंट जो था वो 1 जनवरी 1989 को हुई थी. Montreal Protocol stipulates that the production and consumption of compounds that deplete ozone in the stratosphere. Montreal Protocol एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था और इसके ऊपर एम्फसाइज किया गया था कि जो ओजोन लेयर डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हेलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड मिथाइल क्लोरोफॉर्म आर टू बी फेज्ड आउट बाय 2000, by the year 2000 and 2005 for मिथाइल क्लोरोफॉर्म. तो यहां पर इस चीज के ऊपर एग्रीमेंट हुआ था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म को फेज आउट कर दिया जाएगा 2000 तक. जो भी जैसे और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं और इन्होंने एक मिथाइल क्लोरोफॉर्म को 2005 तक फेज आउट करने का टारगेट रखा था. The Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer, that is in 1985, which outlines states' responsibilities for protecting human health and the environment against the adverse effect of ozone depletion, established the framework under which the Montreal Protocol was negotiated. So, Montreal Protocol or Vienna Agreement both are related to each other. यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बेसिकली इट वाज एग्रीड ऑन 1987 और इसका इन्फोर्समेंट था वो 1989 में हुआ था. एंड इसमें ये एग्रीमेंट हुआ था कि जो भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उनको धीरे धीरे फेज आउट कर दिया जाएगा. और इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसका जो रिजल्ट था वो बहुत ही पॉजिटिव निकला और बहुत सारी कंट्रीज ने सीएफसी को बैन कर दिया एंड द अमाउंट ऑफ क्लोरीन इन द एटमॉस्फेयर इज फॉलिंग नाउ. अब ये है कि अगर हम पहले और आज को कंपेयर करें तो क्लोरीन का जो अमाउंट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है. But scientists estimate it will take another 50 years for chlorine level to return to their natural level. पर अभी भी साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं, उन्होंने ये एस्टिमेट किया है कि अभी भी बहुत टाइम लगेगा और ऑलमोस्ट 50 इयर्स तक लग सकते हैं कि क्लोरीन को अपने नेचुरल लेवल तक आने में. द ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी सपोर्ट और GEF. This GEF was established in October 1991 as a $1 billion pilot program to assist in the protection of the global environment and to promote environmental sustainable development funded by the World Bank. Global Environment Facility एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म सिस्टम है जो डेवलपिंग कंट्रीज को फंड देता है इन एसोसिएशन विद वर्ल्ड बैंक
एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या और जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं। और ये जो फंड है वो 4 मेन एरियाज के लिए दिया जाता है। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी काम होने होते हैं उसके लिए दिया जाता है, बायोडाइवर्सिटी को इम्प्रूव करने के लिए दिया जाता है, इंटरनेशनल वाटर को इम्प्रूव करने के लिए दिया जाता है, और ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं उसके लिए ये फंडिंग की जाती है। Now the GEF is a partnership where 183 countries work together with international institutions, civil society organizations and the private sector to address global environmental issues. So इस फाइनेंशियल मैकेनिज्म में ऑलमोस्ट जितने भी कंट्रीज हैं वो सारे इन्वॉल्व हैं, उन सब की पार्टनरशिप है, और ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करते हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर के साथ काम करते हैं, और इनका एक मेन फोकस होता है कि हाउ टू इम्प्रूव एनवायरमेंटल issues or how to solve environmental issues. Now since 1991, so in this paragraph is all about the funding and the main areas for funding. So I told you earlier that there are 4 focal areas: climate change, biodiversity, international water and ozone depletion. So as you can see that biodiversity, climate change में भी mitigation and adaptation है, how to minimize the effects of climate change. यहाँ पे chemicals हैं, different types of harmful or toxic chemicals related to international water, land degradation है, sustainable forest management है, ozone layer depletion है. तो ये सारे issues हैं. इन सारे इश्यूज के ऊपर ये जो फाइनेंशियल मैकेनिज्म सिस्टम है, द ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी, वो फंडिंग करती है. GEF के 3 इनिशियल पार्टनर्स हैं जो इनके प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने में बहुत हेल्प करते हैं. द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट इज UNDP, द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, दैट इज UNEP, एंड वर्ल्ड बैंक. ये 3 इनके पार्टनर्स हैं जो ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी को सपोर्ट करते हैं और जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं. 1992 में जब अर्थ समिट हुआ था, जब रियो समिट हुई थी, वहां पर इस GEF को रीस्ट्रक्चर किया गया और इसको एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में डेवलप किया गया. इसको बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस से सेपरेट करके एक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस के फॉर्म में डेवलप किया गया. In June 1992, more than 100 heads of state met in Rio de Janeiro, Brazil for the first International Earth Summit to address problems of international protection and socio-economic development. These leaders signed the Convention on Climate Change and the Convention on Biological Diversity. An important achievement was an agreement on the Climate Change Convention, which in turn led to the Kyoto Protocol. जून 1992 में अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था, एंड दिस अर्थ समिट इज ऑल्सो नोन एज रियो समिट, रियो कॉन्फ्रेंस, and it was a major United Nations conference and which was held between June 3rd to June 14, 1992. इस अर्थ समिट में बहुत सारे कन्वेंशन साइन हुए थे, जैसे कि कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन या अग्रीमेंट था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. द इश्यूज एड्रेस इंक्लूडेड, अर्थ समिट में जो इश्यूज एड्रेस या इश्यूज के ऊपर डिस्कशन हुआ था वो इश्यूज थे scrutiny of patterns of production, that is particularly the production of toxic components such as lead in gasoline or poisonous waste including radioactive chemicals. उन सारे सब्सटेंस की स्क्रूटनी करना या उनको सर्च करना या उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, और वो जो कंपोनेंट्स थे जो टॉक्सिक कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि लेड है गैसोलीन में जो होता है प्रेजेंट होता है, या पॉइजनस वेस्ट होते हैं रेडियो एक्टिव केमिकल्स में. सेकेंड इश्यू वाज द ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी टू रिप्लेस द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल विच आर कॉज ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यू डिस्कस हुआ था रियो समिट में या अर्थ समिट में वो था ऑल्टरनेट सोर्सेज को सर्च करना.
ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसको हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, और रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो एनर्जी सोर्सेज होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते हैं, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये सारे सोर्सेज which are very eco-friendly as well as non-polluting and which can replace fossil fuels, उनको ये रिप्लेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इशू था रिलायंस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ऑर्डर टू रिड्यूस व्हीकल एमिशन, कंजेशन इन सिटीज एंड द हेल्थ प्रॉब्लम्स। ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के ऊपर टोटल ट्रस्ट करना। नॉर्मली आजकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते हैं या उनको बहुत कम यूज करते हैं। इस समिट में ये भी एग्रीमेंट या डिस्कशन हुआ था कि मैक्सिमम कंट्रीज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे और उनको बहुत ज्यादा यूज करेंगे, जिससे कि व्हीकल एमिशन पॉल्यूशंस जो होते हैं, जैसे कि सल्फर या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो एसिड रेन या क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उनको हम रिड्यूस कर सकें। एंड द नेक्स्ट इशू वाज द ग्रोइंग स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। नाउ द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इज द बिग प्रॉब्लम, तो इसके ऊपर भी डिस्कशन हुआ था। नाउ अर्थ समिट रिजल्टेड इन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। जब अर्थ समिट के बाद दीज आर द फ्यू डॉक्यूमेंट्स विच आर बीइंग एग्रीड ड्यूरिंग द अर्थ समिट। Now the first document was the Rio Declaration on Environment and Development. Environment और development के ऊपर एक Rio Declaration किया गया था, जिसमें सारे कंट्रीज ने, जो भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थे, उन्होंने ये प्लेज ली थी कि वो आगे आने वाले या 21st सेंचुरी में एनवायरमेंट डिग्रेडेशन को रिड्यूस करेंगे और मिनिमाइज कर देंगे और डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। नेक्स्ट, एजेंडा 21। एजेंडा 21 बेसिकली इट इज अ नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान of the United Nations with regard to sustainable development. एजेंडा 21 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही फुल प्रूफ और बहुत ट्रस्टेबल, या आप कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा एक प्लान था, एंड इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ अर्थ समिट। एजेंडा 21 की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे ट्रीटी या एग्रीमेंट्स थे, जैसे कि अब मेन एग्रीमेंट्स या ट्रीटी थे कि टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, एनवायरमेंटल डैमेज को मिनिमाइज करना, पॉवर्टी, डिजीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, इन सबको भी कॉम्बैट करना, मिनिमाइज करना, और म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे या ट्रीटी या एग्रीमेंट साइन हुए थे एजेंडा 21 में। नाउ नेक्स्ट डॉक्यूमेंट वाज बेस्ड ऑन फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स या फॉरेस्ट से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज थी, वो किस तरह की पॉलिसीज होनी चाहिए, ये भी वहां पर डॉक्यूमेंट साइन किया गया था। इंपॉर्टेंट लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट दैट वर ओपन फॉर सिग्नेचर, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जो ओपन डॉक्यूमेंट्स थे जो सिग्नेचर के लिए रखे गए थे। एंड कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर भी एक एग्रीमेंट हुआ था। फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, एंड यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जो रियो समिट में या अर्थ समिट में रखे गए थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर याद करना है तो एजेंडा 21, UNFCCC दैट इज फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, एंड यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, CBD that is Convention on Biological Diversity. So these are the main documents जो Earth Summit में include हुए थे। Now next is United Nations International Conference on Population and Development, जो कायरो में ये summit हुई थी, and it was held in 1994 and which is also known as ICPD. And it was a milestone in the history of population and development as well as in the history of women's right. अभी हमने देखा कि अर्थ समिट या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जितने भी थे वो एनवायरनमेंट इश्यूज से रिलेटेड थे, बट जो ये ICPD जो कायरो में हुआ था वो बेसिकली पॉपुलेशन और डेवलपमेंट के ऊपर रिलेटेड था। अ टोटल ऑफ 179 गवर्नमेंट साइन अप टू द
ICPD प्रोग्राम ऑफ एक्शन 179 गवर्नमेंट ने इसके ऊपर साइन किया था. एट द कॉन्फ्रेंस the world agreed that population is not just about counting people but making sure everyone has an access to proper living. Population का मतलब ये नहीं है कि हमने सिर्फ उनके people या उनके citizens हमने count कर लिए, बट ये भी हमें मेक श्योर करना है कि उनको प्रॉपर लिविंग, मतलब कि उनको प्रॉपर शेल्टर मिले, प्रॉपर फूड मिले, मेडिसिन्स मिले, या जितनी भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो उनको मिलनी चाहिए. ICPD delegates reached a consensus that equality and empowerment of women should be a global priority. उन्होंने women empowerment के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया, बहुत ज़्यादा emphasis दिया और उसको ये एक global priority माना. This approach is not only from the point of view of universal human right but also as an essential step towards eradicating poverty and stabilizing population growth. Women empowerment या हम कह सकते हैं कि women education एक बहुत बड़ा इशू है और इस इशू को सॉल्व करके हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं या हम उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं. A woman's ability to access reproductive health and right to essential for her empowerment. उसको एक विमेन की जो एक राइट्स होते हैं वो उसके हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकते हैं और उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी होने चाहिए. नाउ कमिंग टू द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ICPD to provide universal access to family planning and sexual and reproductive health services and reproductive rights for women. Now reproductive right means legal ability to make decisions about when a woman should have a child. So this is the reproductive right. And next objective is deliver gender equality, empowerment of women and equal access to education for girls. Address the individual social and economic impact of urbanization and migration. Support sustainable development and environmental issues associated with population changes. Now let us discuss in brief the various aims or objectives or goals of ICPD. Now the first aim was to eradicate extreme poverty and hunger, followed by achieve universal primary education and promote gender equality and empower women, reduce child mortality that is death rate and improve mental health. तो ये कुछ important goals या objectives हैं जो ICPD में अप्रूव किए गए या ICPD के main objectives थे. Now next is Kyoto Treaty or Kyoto Protocol, adopted in Kyoto, Japan on 11 December 1997 and entered into force on 16 February 2005. It was a convention signed by countries to reduce the GHG, that is the greenhouse gases. It is an international agreement linked to the United Nations Framework Convention on Climate Change, which commit its parties by setting internationally binding emission reduction targets, recognizing the fact that developed countries responsible for the current high level of GHG emission in the atmosphere as a result of more than 150 years of industrial activity. The protocol places a heavier burden on developed nations under the principle of common but differentiated responsibilities. क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली एक यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर हुई थी उसी का एक एक्सटेंडेड पार्ट है और उसका जो इस क्योटो प्रोटोकॉल का जो मेन गोल या एम है वो है स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस concentration in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system. मतलब कि जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उन गैसेस का एमिशन रिड्यूस करना और उनको इस तरह से स्टेबलाइज कर देना कि वो ह्यूमन बींग्स के ऊपर कोई भी इल इफेक्ट या कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो उनका. क्योटो प्रोटोकॉल में भी इस चीज को बहुत ज्यादा इस चीज पर एम्फसाइज किया गया कि डेवलप्ड या इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज जितने भी हैं
basically they are responsible for the emission of greenhouse gases because of their industrial activity. तो इस प्रोटोकॉल में जितना भी हेवियर बर्डन मतलब कि ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप्ड नेशंस के ऊपर दी गई, उनको दी गई, और एक उनका एक प्रिंसिपल था कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिडक्शन की, वो कॉमन होगी बट डिफरेंशिएटेड होगी कि मैक्सिमम जो रिडक्शन है वो डेवलप्ड या इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज करेंगे और उसके बाद डेवलपिंग कंट्रीज या पुअर कंट्रीज उसके बारे में उसको GHG को रिड्यूस करेंगे. During the first commitment period, 37 industrialized countries and the European community committed to reduce GHG emission to an average of 5% against 1990 level by the year 2012. तो जो फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड था उसमें 37 डेवलप्ड या इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज ने और मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटी ने अपने इस गोल को अचीव किया. एंड इन दोहा कतर ऑन 8 December 2012 द दोहा अमेंडमेंट टू द क्योटो प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड. दोहा अमेंडमेंट जो क्योटो प्रोटोकॉल का ही एक फॉर्म था उसको अडॉप्ट किया गया. एंड ड्यूरिंग द सेकेंड कमिटमेंट पीरियड parties committed to reduce greenhouse gases emission by at least 18% below 1990s level in the 8-year period from 2013 to 2020. और उसके बाद ये कमिटमेंट किया गया कि आगे आने वाले टाइम में मींस कि 2013 और 2020 के बीच में जो ग्रीन हाउस एमिशन है वो एटलीस्ट 18% और कम होगा. अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज NGO इज अ लीगली constituted organization created by a person or group of people that operates independently of any government. The term usually used by government to refer to entities that have no government status. In the case in which NGOs are founded totally or partially by government, the NGO maintains its non-governmental status by excluding government representatives from membership in the organization. NGO या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं वो एक लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ काम करते हैं और किसी एक पर्सन या किसी ग्रुप के द्वारा ये बनाए गए होते हैं और पूरी तरह से ये गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट होते हैं. एनजीओस में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस तो नहीं होता है पर दे आर फंडेड मे बी टोटली और पार्शियली बाय गवर्नमेंट, पर ये गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग होते हैं क्योंकि इनका स्टेटस जो होता है वो नॉन गवर्नमेंटल स्टेटस होता है. वो इस तरह से ये मेंटेन करते हैं कि इसमें गवर्नमेंट के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव या मेंबर्स को वो अपने ग्रुप में या अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं. द टर्म इज यूजुअली अप्लाइड ओनली टू ऑर्गेनाइजेशन दैट परस्यू सम वाइडर सोशल एम बट आर नॉट पॉलिटिकली मोटिवेटेड. ये एनजीओ बेसिकली दे शुड नॉट बी पॉलिटिकली मोटिवेटेड. इनका कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन नहीं होना चाहिए और इनका मेन मोटिव होना चाहिए कि सोशल रिफॉर्म्स या सोशल एम होना चाहिए. Some of the renowned NGOs are Friends of the Earth. इसके बाद दूसरा नाम है Greenpeace. Next is World Wide Fund for Nature, that is WWF, and most importantly and very common PETA, PETA, National Green Corps, तरुण भारत संघ है, केरल साहित्य परिषद है. Now NGOs for Environmental Protection. कुछ ऐसे NGOs हैं जो environmental protection के लिए काम कर रहे हैं. There are hundreds of NGOs involved in environmental protection all over the world. The issue might be different ranging from wildlife conservation to climate change. Issue कुछ भी हो सकता है, wildlife conservation से लेकर climate change से related कोई भी issue हो सकता है, but the bottom line remains the same, that is to protect the environment from human greed and negligence. पर इनका aim जो है वो एक ही है कि एनवायरनमेंट को किस तरह से ह्यूमन ग्रीड या ह्यूमन नेग्लिजेंस से प्रोटेक्ट किया जाए. टू नेम अ फ्यू ऑफ देम आर WWF, ग्रीनपीस, बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल, फ्रेंड्स ऑफ अर्थ एंड प्लांट अ ट्री फाउंडेशन टुडे. ये कुछ ऐसे नाम हैं जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं.
Now aims of NGO in environmental protection. Environmental protection के लिए NGO का aim क्या होना चाहिए? To stop degradation of the planet's natural environment, ensure sustainable use of resources. Sustainable use means wise use है resources का, जो अर्थ के natural resources हैं, चाहे वो renewable resources हों या non renewable resources हों. कंजर्व बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना. प्रमोट रिडक्शन ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन को रिड्यूस करना. प्रमोट इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज, जितनी भी इको फ्रेंडली या सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज हैं उनको प्रमोट करना. कंजर्व वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना. एंड प्रोटेक्ट द वर्ल्ड फ्रॉम क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज मीन्स ग्लोबल वार्मिंग है या जितने भी और दूसरे इश्यूज हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, फ्लड है, ड्रॉट है या और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, उन सारे इश्यूज से वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना. रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स. रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स आर डिवाइसेस sent into the space which use sensors to collect information about Earth's atmosphere, ocean, land and ice surfaces. They orbit the Earth at varying altitude. The sensors mounted on the satellite gather electromagnetic energy which are reflected, emitted or backscattered from part of the Earth's atmosphere system below the satellite. Commonly, the information is collected in two-dimensional form, either as photographic images or as an array of digital data. Now, National Remote Sensing Center, that is NRSC, Hyderabad, is planning to launch nearly more than 30 Earth observation satellites in next 10 years. So, remote sensing satellite basically क्या होते हैं कि ये जो satellites होते हैं ये अर्थ के डिफरेंट ऑर्बिट्स पर प्लेस किए जाते हैं. ऑर्बिट मतलब कि जो भी एल्टीट्यूड्स होते हैं या जो हाइट होती है. अब जैसे एक एग्जांपल है कि लो अर्थ ऑर्बिट जो अप्रोक्सीमेटली 160 से लेकर 2000 किलोमीटर अबव द अर्थ होता है, और दूसरे तरह के ऑर्बिट्स होते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट जो अप्रोक्सीमेटली 2000 टू 35,500 किलोमीटर्स ऊपर होते हैं अर्थ से, और एक होते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट जो मोर देन 35,000 किलोमीटर अबव होते हैं. तो ये वहां पर प्लेस किए जाते हैं और वहां पर ये सैटेलाइट्स रोटेट करते हैं, और इन सैटेलाइट्स के थ्रू जो इंफॉर्मेशन होती है वो 2 डायमेंशनल फॉर्म में होती है. दो तरह से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, या तो फोटोग्राफिक इमेजेस के फॉर्म में गैदर कर सकते हैं या एरे ऑफ डिजिटल डेटा या डेटा के फॉर्म में हम उसको गैदर कर सकते हैं. उसके बाद डेटा का इंटरप्रिटेशन करते हैं. नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो हैदराबाद में है वो आगे आने वाले सालों में, आगे आने वाले 10 साल में 30 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है. Now, why is remote sensing satellite such a good tool? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के ऊपर हम रिलाय कर सकते हैं या एडवांटेजेस क्या हैं? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इज अ वेरी गुड टूल एंड यूजफुल सोर्स फॉर गैदरिंग एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन. अब हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि क्यों रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है एक बहुत अच्छा टूल है या इसके एडवांटेजेस क्या हैं. सबसे बड़ा एडवांटेज ये है डेटा कवरेज. It allows data collection in remote land, ocean and ice area where humans find it difficult to reach due to difficulty in accessibility or political reasons. बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं जैसे कोई रिमोट लैंड एरिया है, बहुत दूर तक जो लैंड एरियाज हैं, ओशन है या आइस एरिया है, जहां पर ह्यूमन बीइंग्स को डिफिकल्टी होती है कि एक तो पॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं कि वो दूसरे कंट्री में हो सकता है, या बहुत डिफिकल्ट है कि एक्सेसिबिलिटी नहीं है, वहां पर हम पहुंच नहीं सकते, अप्रोच ठीक नहीं होती है. तो इस कंडीशन में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट एक बहुत अच्छा टूल होता है. डेटा कलेक्शन इज ग्रेटली इंप्रूव्ड एंड कंप्लीट व्हेन कंपेयर टू कन्वेंशनल मेथड्स. कन्वेंशनल मेथड मतलब कि जो मैनुअल मेथड्स होते हैं उससे अगर हम कंपेयर करें तो डेटा कलेक्शन की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है
और बहुत क्विक होती है और बहुत जल्दी डेटा कलेक्ट हो जाता है अगर हम कन्वेंशनल मेथड्स की बात करें। होमोजेनिटी, दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज और बेनिफिट ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय अ सैटेलाइट सिस्टम प्रोवाइड्स अ स्पेशल कंसिस्टेंट डेटा। सैटेलाइट सिस्टम के थ्रू जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है वो एक कंसिस्टेंट डेटा के फॉर्म में होती है, and this is directly contrasted to the several methods used in ground data collection। जो हम और दूसरे कन्वेंशनल या मैनुअल मेथड्स यूज करते हैं उससे ये कहीं ज्यादा रिलायबल होती है, and it provides a spatial continuity as compared to the point or small area sample data commonly found in meteorological, oceanography and geology। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के थ्रू देयर इज अ लार्ज एरिया कवरेज, क्योंकि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स जो हैं वो लार्ज एरिया कवरेज की एक तरह से फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। एंड इसके बाद जो इनका आइडेंटिफिकेशन होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया सैंपल, लाइक अगर वो लैंड एरिया सैंपल हो या ओशन एरिया सैंपल हो या किसी भी और डेमोग्राफिक एरिया सैंपल हो, उसकी जो क्लैरिटी होती है वो बहुत एक्यूट क्लैरिटी होती है। और अगर हम उसको किसी दूसरे मैनुअल या कन्वेंशनल मेथड से कंपेयर करें तो ये कहीं ज्यादा एक्यूरेट होती है। नाउ नेक्स्ट इज कंप्यूटर प्रोसेसिंग। सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग produces digital data which are in form of suitable for direct computer processing। अभी हमने देखा कि जो डेटा हमें मिलता है, जो डेटा गैदर होता है वो या तो इमेज के फॉर्म में हो सकता है या डिजिटल डेटा के फॉर्म में हो सकता है, और ये जो डेटा है वो इजीली कंप्यूटर उसको प्रोसेस कर सकता है। इट रिड्यूसेस द वर्क ऑफ मैन एंड सेव्स द टाइम ऑफ मैनुअल कैलकुलेशन। इससे ह्यूमन लेबर भी बचता है, ह्यूमन पावर बचती है, और कैलकुलेशन में जितना जो टाइम वेस्ट होता है वो भी सेव होता है। नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा कलेक्शन। फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा कलेक्शन मतलब कि यहाँ पर हम जो फ्रीक्वेंट डेटा कलेक्शन इज पॉसिबल विद द यूज ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा कलेक्शन डिपेंड्स ऑन द टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट टू ऑर्बिट द अर्थ। जो फ्रीक्वेंसी है, हम ये कह सकते हैं कि एक दिन में हमको दो डिफरेंट टाइप्स के दो डेटा हमको मिल जाते हैं, तो हम उनका एवरेज निकालकर जो हमें डेटा चाहिए वो हम ले सकते हैं। द जियो स्टेशनरी वेदर सैटेलाइट स्कैन द अर्थ एवरी 30 मिनट। जो जियो स्टेशनरी वेदर सैटेलाइट्स होते हैं वो पूरे अर्थ को जो स्कैन करते हैं या अर्थ को जो एक अर्थ के अराउंड घूमते हैं वो 30 मिनट्स में कवर कर लेते हैं। एंड पोलर ऑर्बिटिंग वेदर सैटेलाइट्स कलेक्ट डेटा ट्वाइस पर डे। और जो पोलर ऑर्बिटिंग वेदर सैटेलाइट्स होते हैं वो एक दिन में 2 बार डेटा कलेक्ट करते हैं फॉर ईच पार्ट ऑफ द अर्थ, एंड लैंड सैटेलाइट पासेस ओवर द सेम पॉइंट ऑन द अर्थ एवरी 16th डे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डेटा कलेक्शन की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा होती है, सो वी कैन मैच आवर डेटा, और हम उससे एक्यूरेसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लेस टाइम बेस्ड। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स कवर अ लार्ज एरिया एट अ वेरी हाई स्पीड which can detect the variation in environment with great precision. For example, the Landsat thematic mapper image scan a scene of 170 km by 185 km in 25.87 सेकेंड। तो यहाँ पर जो टाइम भी हमारा सेव हो रहा है, तो एक एग्जाम्पल दिया है लैंडसेट थीमेटिक मैपर इमेज जो है एक सैटेलाइट है, वो 170 किलोमीटर बाय इंटू 185 किलोमीटर का जितना एरिया है उसको 25.87 सेकेंड में कवर कर लेता है। नेक्स्ट इज complementarily. Now measurement or information gathered from satellite are complementary to conventional observation. जो हमें डेटा कलेक्ट हम करते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के थ्रू, वो मैनुअल या कन्वेंशनल डेटा जो कलेक्शन होता है उसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है, एंड इट रिमूव्स द नीड फॉर ग्राउंड चेक एट ह्यूज कॉस्ट एंड टाइम। तो इससे हम टाइम और कॉस्ट भी हम बचा सकते हैं। Low cost means the initial cost of building and sending the satellite to space is huge, and it
एंड इज बोर्न बाय द गवर्नमेंट। जो भी इसका कॉस्ट होता है वो गवर्नमेंट बियर करती है, बट लेटर इट इज एन एडवांटेज। इनिशियल कॉस्ट तो बहुत हाई होता है, बट इसके बाद हम कह सकते हैं कि हमारे लिए एक बेनिफिट है, बिकॉज इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट फॉर सर्वे, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, फूडिंग, लॉजिंग फॉर द सर्वे टीम। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हम मैनुअली किसी डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी, सर्वे के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट होगी, फूडिंग लॉजिंग की कॉस्ट होगी, वो आगे हमारी सेव होगी। The computer compatibility of remote sensing satellite not only reduces the time but also the cost of manual computing। जो भी हमको डिजिटल डेटा या डेटा मिलता है, इंफॉर्मेशन डिजिटल डेटा के फॉर्म में मिलती है या इमेज के फॉर्म में मिलती है, ये दोनों जो मेथड्स होते हैं, दोनों मीन्स होते हैं, वो कंप्यूटर कंपैटिबिलिटी उसकी बहुत होती है कंप्यूटर से। तो इजीली वी कैन इंटरप्रेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इनटू द रिक्वायर्ड information। Now uses and application of remote sensing। तो यहाँ पर हम remote sensing के applications और uses देखेंगे। Satellite remote sensing is a powerful tool which helps in study of various factors। रिमोट सेंसिंग जो टूल है वो बहुत ही एक पावरफुल टूल है, और यहाँ पर हम अलग अलग फैक्टर्स को, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, उनको हम स्टडी कर सकते हैं, और वो फैक्टर्स जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको हम स्टडी कर सकते हैं। इट इनेबल्स पीरियोडिक एंड एक्यूरेट मॉनिटरिंग। ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के थ्रू जो मॉनिटरिंग होती है वो पीरियोडिक होती है। पीरियोडिक मतलब कि उसकी फ्रीक्वेंसी हम इंक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, और एक्यूरेट होती है। इट कैन प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन लैंड फॉर्म, सॉइल कंडीशंस, वाटर रिसोर्सेज, क्रॉप, vegetation status, air quality, rate of deforestation, flood, cyclone, etc। ये जो different types of information है, जैसे कि soil conditions कैसी है, land form कैसा है, water resources किस तरह के हैं, crop की क्या condition है, vegetation status किस तरह का है, air quality कैसी है, deforestation का rate क्या है, पहले क्या था और अब क्या rate है deforestation का, फ्लड, साइक्लोन। तो इन सब की जो इंफॉर्मेशन है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स की जो एप्लीकेशंस हैं वो डिफॉरेस्टेशन में है, लैंड डिग्रेडेशन के लिए हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, फ्लड सिचुएशन को देखने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ड्रॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, माइनिंग है या वेदर प्रिडिक्शन के लिए हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को यूज कर सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन, forests are being deforested at a very fast rate to satisfy the human needs, but at the same time it is posing a threat to the economy and ecology। Remote sensing satellites are being used to study the forest cover in the past few decades। This has helped men to study the rate of deforestation and compare the vegetation cover in the past with the present। डिफॉरेस्टेशन में हम किस तरह से यूज कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को, कि हम इस समय प्रेजेंट की सिचुएशन क्या है डिफॉरेस्टेशन की, और जो पास्ट में क्या सिचुएशन थी, या हम ये कह सकते हैं कि पहले किस तरह का फॉरेस्ट कवर था और आगे अगर हम 10 या 20 साल के टाइम को कंसीडर करें, कंपेयर करें, तो पहले किस तरह का फॉरेस्ट कवर था और 20 साल के बाद कितना फॉरेस्ट कवर बचा है। तो ये हम कंपेयर कर सकते हैं डिफॉरेस्टेशन को। लैंड डिग्रेडेशन में हम इसकी एप्लीकेशन बहुत यूजफुल है। सैटेलाइट इमेजेस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग डिग्रेडेड लैंड। जो भी सैटेलाइट इमेजेस हैं वो इससे ये पता चल सकता है कि हाँ ये जो लैंड है वो डिग्रेडेड है, एंड इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू फाइंड आउट द कॉजेज ऑफ डिग्रेडेशन फ्रॉम पास्ट इमेजेस एंड ब्रिंग देम अंडर वेजिटेशन। अगर हमने सपोज 5 साल पहले हमने सैटेलाइट इमेजेस देखी और 5 साल के बाद हमने सैटेलाइट इमेजेस देखी लैंड डिग्रेडेशन की, तो हम ये पता कर सकते हैं कि कितना डिग्रेडेशन हुआ है, और उस एरिया को हम रीफॉरेस्ट या अफॉरेस्टेशन वहां पर कर सकते हैं। फ्लड, सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग कैन बी यूज्ड टू मैप द फ्लडेड एरिया एंड आइडेंटिफाई द फ्लड प्रोन एरिया। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से हम जो ऑलरेडी फ्लडेड एरिया है उसको मैप कर सकते हैं, और जो एरिया फ्लड प्रोन है या फ्लड सेंसिटिव है उसको भी हम मैप कर सकते हैं। एंड दिस एरिया इज वेरी यूजफुल इन ऑर्डर टू टेक टाइमली एक्शन टू डिक्रीज द एक्सटेंट
डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अगर हमको ये पता चल जाए कि कौन से एरिया फ्लड सेंसिटिव या फ्लड प्रोन एरिया हैं, तो हम उस पर टाइमली एक्शन लेकर बहुत सारी प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं। बांग्लादेश फ्लड in 1988 caused inundation of 2.4 million hectares। जब बांग्लादेश में फ्लड आया था 1988 में, तो 2.4 मिलियन हेक्टेयर का जो एरिया था वो बिल्कुल पूरी तरह से डूब गया था। It was possible to assess the extent of damage to the crop and take timely action due to the information provided by Landsat and IRSIA। तो ये जो कुछ ऐसी सैटेलाइट्स हैं जो बेसिकली ये हमें इंफॉर्मेशन दे सकती हैं कि फ्लड के थ्रू ऑलरेडी कितना डैमेज हो चुका है और आगे कितना डैमेज हो सकता है, तो हम कुछ उसमें नेसेसरी एक्शन ले सकते हैं। ड्रॉट रिमोट सेंसिंग इज यूज्ड फॉर असेसमेंट ऑफ ड्रॉट कंडीशंस, स्टडिंग रेनफॉल एंड सरफेस वाटर कंडीशन फॉर अर्ली ड्रॉट वार्निंग एंड मॉनिटरिंग एग्रीकल्चरल ड्रॉट। तो हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की हेल्प से ड्रॉट कंडीशन को भी मेंटेन कर सकते हैं। अगर हमको प्रायर इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि रेनफॉल की कंडीशन क्या है, कितना रेनफॉल होगा, या सरफेस वाटर की कंडीशन क्या है, तो हम वो कंडीशंस या वो उस इंफॉर्मेशन से जो ड्रॉट कंडीशन है उसको हम बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। माइनिंग सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग इज यूज्ड टू मैप एक्टिव एंड अबंडेंट माइंस। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से हम ये देख सकते हैं कि कहां पर एक्टिव माइनिंग हो रही है या कहां पर कुछ ऐसी माइंस है जिनको अबंडेंट या ऐसे ही छोड़ दिया गया है। जब माइनिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है तो उस लैंड को अबंडेंट छोड़ देते हैं। इट इज यूज्ड टू रेगुलरली एक्सेस द इकोलॉजिकल डैमेज ड्यू टू ऑनगोइंग माइनिंग एक्टिविटीज। हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से ये भी देख सकते हैं कि कौन सी माइनिंग एक्टिविटीज इस समय चल रही हैं या इस समय पूरे वर्ल्ड में कहां हो रही हैं और उससे कितना इकोलॉजिकल डैमेज हो रहा है। प्रेडिक्ट वेदर एंड नेचुरल कैलामिटीज। The weather forecast on television news channels showing the images of India are actually possible with the help of remote sensing satellite। जो हम नेशनल टीवी में या हम जो टीवी चैनल्स में वेदर फोरकास्ट देखते हैं वो बेसिकली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स की वजह से ही वो इमेजेस हमको मिलती हैं। It shows images of cloud which make prediction of rainfall और monsoon possible। इसमें अगर इस तरह की images हैं जहां पर कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहां पे क्लाउड्स होते हैं, तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर रेनफॉल होगा या मॉनसून आ सकता है। इट ऑल्सो हेल्प इन द प्रिडिक्शन ऑफ साइक्लोन। ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट साइक्लोन को, हरिकेन को प्रिडिक्ट करने में भी काम आती हैं और हम उन लोगों को वार्निंग दे सकते हैं जो उस डेंजर एरिया या डेंजर जोन में रहते हैं, तो हम उनको पहले से वार्निंग दे सकते हैं जिससे कि वो एक सेफ प्लेस पर पहुंच जाए। Managing waste. Now, what is waste? Waste is also known as rubbish, trash, refuse, garbage, junk, litter. So we can say that waste are unwanted or unusable material which is discarded after use or is worthless, defective and of no use. So it is unwanted, useless material. So this is the biological definition of waste, where waste is defined as nitrogenous substances such as urea, sweat or feces, litter, and which has been disposed of. Waste is directly linked to human development both technologically and socially. Now here you can see that there are many waste types defined by modern system of waste management. Now there is municipal waste, includes household waste, commercial waste, demolition waste. Hazardous waste includes industrial waste, biomedical waste includes clinical waste. तो हम ये देखते हैं कि वेस्ट जो है, अगर हम उसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो वेस्ट रबिश, ट्रैश, रिफ्यूज या कोई भी अनवांटेड मटेरियल, यूज्ड एज मटेरियल, वर्थलेस मटेरियल
या कुछ ऐसी चीज जो डिफेक्टिव हो गई है और जिसका आगे कोई यूज नहीं है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को या ऐसे मटेरियल्स को वेस्ट कहते हैं। अगर हम देखें तो वेस्ट के टाइप्स कितने तरह के होते हैं, तो म्यूनिसिपल वेस्ट होता है, जिसमें कि हाउस होल्ड वेस्ट भी होता है, कुछ कॉमर्शियल वेस्ट होता है, डेमोलेशन वेस्ट होता है। डेमोलेशन वेस्ट का मतलब ये होता है कि जब कोई बिल्डिंग का डेमोलेशन होता है या कोई बिल्डिंग टूटती है तो उस तरह के वेस्ट होते हैं। या कुछ हैजार्डस वेस्ट होते हैं जिसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट भी आते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट में क्लिनिकल वेस्ट होता है। क्लिनिकल वेस्ट का मतलब कि जो हॉस्पिटल से वेस्ट निकलता है, जैसे कि बैंडेजेस होती हैं, एक्सपायर्ड मेडिसिन हैं, सिरिंजेस हैं, उस तरह के वेस्ट। नाउ व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ वेस्ट? सो देयर आर two definition of waste. First is according to UNEP, which is United Nations Environment Program. तो इसके अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है? Substances or objects which are disposed of or are intended to be disposed of or are required to be disposed of by the provision of international law. तो इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे सब्सटेंसेस या ऑब्जेक्ट्स जिनको हमें डिस्पोज करना है या जो डिस्कार्ड करना है, या जो इस तरह के मटेरियल जिनका आगे कोई यूज नहीं है, जिनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसे मटेरियल्स को हम वेस्ट कहते हैं। नाउ दिस इज द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू UNSD, दैट इज द यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक्स डिवीजन। सो देयर इज नो नीड टू गो थ्रू दिस डेफिनेशन। ये डेफिनेशन को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको एग्जाम में डेफिनेशन आती है तो आप ये वाली डेफिनेशन लिखिएगा कि वेस्ट इज अनवांटेड, unusable material which is discarded, worthless, defective, and it is also known as rubbish, trash, refuse, garbage, junk or litter. Now next is the classification of waste. Waste के classification अलग अलग तरह से define किए गए हैं। इस पे जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन है, दिस क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसा कि हमको पता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन तरह की स्टेट्स होती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग वेस्ट के भी तीन टाइप्स हैं: सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट एंड गैसियस वेस्ट। Now next come to the solid waste. So solid waste includes domestic garbage and other waste in solid state of matter, that is food leftover, decaying fruits and vegetables, and articles like cans, bottles, plastics, wrappers, body parts of dead animal. It can also originate from the industries, hospitals, restaurant, office, malls, etc. Solid waste एक बहुत ही ब्रॉड कैटेगरी है जिसमें कि सब तरह के डोमेस्टिक वेस्ट, जैसे कि लेफ्ट ओवर फ्रूट्स हैं, लेफ्ट ओवर वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट और वेजिटेबल्स की पील्स होती हैं जो ऊपर के कवर होते हैं, रॉटन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हैं, या कुछ इस तरह के आर्टिकल्स जो हैं जैसे कैंस होते हैं, बॉटल्स हैं, प्लास्टिक रैपर्स हैं, ये सारे आर्टिकल्स या इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स या मटेरियल्स होते हैं वो सॉलिड वेस्ट में आते हैं। या हम इनको ये कह सकते हैं, इनका जो मेन ओरिजिन है वो इंडस्ट्रीज हो सकता है, हॉस्पिटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, ऑफिस है, मॉल है, यहाँ से जो भी वेस्ट जेनरेट होता है उसको हम सॉलिड वेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट इज लिक्विड वेस्ट. इट इंक्लूड्स सीवेज फ्रॉम टॉयलेट्स ऑफ हाउसेज, हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट, ऑफिसेज एक्सेट्रा. Effluents from the industries, runoff from agricultural fields and oil spills. लिक्विड वेस्ट में जो भी सीवेज है, जो टॉयलेट से निकलता है, हॉस्पिटल से निकलता है, रेस्टोरेंट से निकलता है, वहां से जितना भी लिक्विड वेस्ट निकलता है, या इंडस्ट्रीज के थ्रू जो इफ्लुएंट होता है, यानी कि जो अभी वेस्ट मटेरियल होता है, लिक्विड वेस्ट मटेरियल होता है, या जो भी एग्रीकल्चर वेस्ट मटेरियल है, या ऑयल स्पिल्स है, इन सबको लिक्विड वेस्ट कहते हैं. थर्ड कैटेगरी है गैसियस वेस्ट की. सो दीज आर मेनली द गैसियस पॉल्यूटेंट्स. ये गैसियस पॉल्यूटेंट्स होते हैं which release mainly from the exhaust from automobile chimney of factories, brick kilns, burning of garbage, thermal power plants. Gaseous waste basically जो pollutants होते हैं जिनकी वजह से pollution होता है, और ये ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्शन में से निकलते हैं,
जो फैक्ट्रीज में चिमनीज होती हैं उसके थ्रू जेनरेट होते हैं, ब्रिक किल्स जो होती हैं, जो ईंटों के भट्टे होते हैं उससे निकलते हैं, गार्बेज की बर्निंग होती है, थर्मल पावर प्लांट्स हैं, इसके थ्रू जो भी गैसेस रिलीज होती हैं उसको गैसियस वेस्ट कहते हैं। एंड द गैसेस रिलीज आर मेनली, अब कौन कौन सी गैसेस रिलीज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन हैं, मीथेन है, हाइड्रोकार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये सब जो हैं वो गैसियस वेस्ट में आती हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन था, जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा, वो स्टेट ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग था, solid waste, liquid waste and gaseous waste. Now coming to the second classification of waste, which is biodegradable and non-biodegradable waste, which is according to the action of microorganisms on the waste material. तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दो तरह के वेस्ट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल्स और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल। जैसा कि डेफिनेशन से पता चल रहा है कि बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है वेस्ट दैट कैन बी डिग्रेडेड और ब्रोकन डाउन थ्रू माइक्रोबियल एक्टिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उस तरह के वो वेस्ट जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज के थ्रू, माइक्रोबियल एक्टिविटीज का मतलब है कि फंजाई या बैक्टीरिया की जो एक्शन होता है उसके थ्रू उनका डिग्रेडेशन होता है, या वो अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में, सिंपलर पार्ट्स में ब्रेक हो जाते हैं। हाउसहोल्ड एंड एग्रीकल्चर वेस्ट विच आर ऑफ ऑर्गेनिक ओरिजिन, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स हैं, दे आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। अब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में किस तरह के वेस्ट आते हैं? जो हाउसहोल्ड वेस्ट है, हाउसहोल्ड वेस्ट जैसे कि हमने पढ़ा कि मेनली सॉलिड वेस्ट होते हैं और एग्रीकल्चर वेस्ट होते हैं, जो ऑर्गेनिक, जिनका जो नेचर होता है वो ऑर्गेनिक होता है, यानी कि जो वेस्ट प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू जनरेट होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। एंड दीज वेस्ट डू नॉट कॉज हार्म टू द एनवायरमेंट, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, मतलब कि ये एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद डिग्रेड हो जाते हैं एज दे डिकम्पोज एंड मिक्स विद द नेचुरल इकोसिस्टम, और डिग्रेडेशन के बाद ये नेचुरल इकोसिस्टम में मिक्स हो जाते हैं एंड दे कैन बी कंपोज एंड कन्वर्टेड इनटू बायोमैन्योर। और इस तरह के जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको हम बायोमैन्योर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बेसिकली वो वेस्ट होते हैं जिसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है, और इसके बाद विच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मीथेन और सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स or other simple molecules by the action of microorganisms and other living things, जैसे कि composting में, aerobic digestion, इस तरह के simpler process के through ये convert या decompose हो जाते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में पेपर है, वुड, वेजिटेबल्स, फूड वेस्ट, लीव्स, प्लांट प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें आती हैं। या हम ब्रॉडली कह सकते हैं कि जो भी सॉलिड वेस्ट होता है जो हमारे घरों से निकलता है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। एंड सेकेंड इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल विच कैन नॉट बी डिग्रेडेड और ब्रोकन डाउन थ्रू द एक्शन ऑफ माइक्रोबियल एक्टिविटीज लाइक फंजाई, बैक्टीरिया, एंड दे आर नोन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल। एंड इस तरह के जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं इसमें पेट्रोलियम, प्लास्टिक, सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स, थर्मोकोल, ये सारी चीजें आती हैं। एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस तरह के जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल होते हैं जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज के थ्रू जिनका डिग्रेडेशन नहीं होता है और ये एनवायरनमेंट में बहुत लंबे टाइम तक परसिस्ट करते हैं, यानी कि वो रहते हैं, एंड दे गेट बायोमैग्निफाइड, और इनका बायोमैग्निफिकेशन होता है, यानी कि ये फूड चेन में इनका एक्यूमुलेशन होने लगता है एंड दे बिकम टॉक्सिक एंड कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स, और ये टॉक्सिक हो जाते हैं और हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। नाउ द थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ ओरिजिन। सोर्स ऑफ ओरिजिन का मतलब है कि जो वेस्ट मटेरियल कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, इनका सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है। तो सबसे पहले डोमेस्टिक वेस्ट। नाउ वेस्ट जनरेटेड ड्यू टू डोमेस्टिक एक्टिविटीज आर कॉल्ड डोमेस्टिक वेस्ट एंड ओरिजिनेट फ्रॉम आवर हाउस
अब कुछ एग्जाम्पल जैसे हमने पढ़ा यहाँ पे कि जो सॉलिड वेस्ट होते हैं यही डोमेस्टिक वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि लेफ्ट ओवर फूड मटेरियल में फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल पील्स हैं, बिट्स ऑफ पेपर पैकेट्स, बॉटल, कैंस, ग्लास पीसेस, मेटल्स, रैग्स, ये सारी चीजें जो हैं वो डोमेस्टिक वेस्ट में आती हैं। सेकेंड कैटेगरी है वेस्ट की इंडस्ट्रियल वेस्ट अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन। इंडस्ट्रियल वेस्ट generated from various types of small and large scale industries are called industrial waste। अब इन इंडस्ट्रियल वेस्ट में किस तरह के इंडस्ट्रीज जैसे कि केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं जिससे लेड और मरकरी, आर्सेनिक ये रिलीज होता है, पेंट इंडस्ट्री है, सैंड पेपर, फ्लाई ऐश, ये सारी चीजें जो हैं वो इंडस्ट्रियल वेस्ट होती हैं। और अगर हम देखें कि किस तरह की इंडस्ट्रीज के थ्रू ये वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं तो ये इंडस्ट्रीज हैं फूड प्रोसेसिंग यूनिट, पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, मेटल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री एंड न्यूक्लियर रिएक्टर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है बेसिकली industrial waste is the waste produced by industrial activity। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में ये जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं इसके थ्रू जितने भी वेस्ट है, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं बट दीज आर फ्यू इंडस्ट्रीज मेंशन्ड ओवर हियर। सो एंड दिस इंडस्ट्रीज they release effluent and they release waste material after the manufacturing process। तो ये जो वेस्ट मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बाद जो रिलीज होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं उनको इंडस्ट्रियल वेस्ट कहते हैं। नाउ द थर्ड कैटेगरी अकॉर्डिंग टू द साइट ऑफ ओरिजिन इज एग्रीकल्चर वेस्ट। सो एग्रीकल्चर वेस्ट की अगर हम बात करें तो यहां पर these are generated from the farming activities include crop residue, husk, straw, wood waste, sand dust, molasses, coconut waste product, nutshell, fruits हैं, vegetable peels हैं, manure, pesticides, insecticides, ये जितने भी waste material जो agriculture activities के through produce होते हैं उन सब को बोलते हैं industrial waste। Now most of these वेस्ट आर ऑर्गेनिक इन ओरिजिन। ये जितने भी जो मैक्सिमम वेस्ट होते हैं वो ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं और एंड कैन बी कंपोज्ड एंड यूज्ड एज बायोमैन्योर। तो इनका एक एडवांटेज ये है एग्रीकल्चर वेस्ट का कि इनको हम बायोमैन्योर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउएवर केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स लीव हार्मफुल रेजिड्यू ऑन द सॉइल एंड हैव हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द एनवायरनमेंट। तो जो मैक्सिमम तो ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं पर जो इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं या पेस्टिसाइड्स होती हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, ये एनवायरनमेंट को हार्म कर सकते हैं। नाउ पेस्टिसाइड्स आर केमिकल्स स्प्रेड ऑन द प्लांट्स और एडेड टू द सॉइल टू एलिमिनेट हार्मफुल प्लांट पेस्ट। They help to increase crop yield by killing pests, but they have harmful effect on environment and humans. Now limitation of using pesticides. So pesticides जो होते हैं वो chemicals होते हैं जो plants के ऊपर spray किया जाता है या soil पे हम उसको add करते हैं। जो plant pest होते हैं, जो इस तरह के insects होते हैं जो plant को harm पहुंचाते हैं, जो crop की yield को बहुत कम कर देते हैं, तो ये इस तरह के पेस्ट को किल करने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है। पर यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हैं पेस्टिसाइड्स के। नॉट दे आर नॉट इको फ्रेंडली। पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो इको फ्रेंडली नहीं होते हैं, मतलब कि ये एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं एंड दे ऑल्सो कॉज सॉइल पोल्यूशन, दे एंटर फूड चेन एंड कॉज बायोमैग्निफिकेशन and they pollute groundwater and they also enter water bodies and affect the aquatic life। तो ये कुछ limitations हैं pesticides की।
नाउ फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स हैं जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज किए जाते हैं। लेट अस कंपेयर बायो फर्टिलाइजर्स टू केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब यहाँ पे दो कैटेगरीज हैं। बायो फर्टिलाइजर जैसे हमें पता है कि ये इको फ्रेंडली होते हैं, नॉन पॉल्यूटिंग होते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। और केमिकल फर्टिलाइजर्स जिसमें कि केमिकल्स होते हैं, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स now they are of chemical origin synthesized by reaction of chemicals enter water bodies and cause eutrophication एक फिनोमेना है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। causes soil salinity का मतलब ये होता है कि सॉइल में जो एल्कनिटी या जो भी एल्कलाइन नेचर होता है सॉइल का, सॉइल में सॉल्ट की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है एंड मेक द सॉइल अनफर्टाइल आफ्टर हेवी एप्लीकेशन, कंटामिनेट ग्राउंड वाटर। अगर हम बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर को यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा कंटामिनेशन होगा, ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन होगा और सॉइल अनफर्टाइल भी हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड ऑर्गेनिक और बायो फर्टिलाइजर दे आर नेचुरल ओरिजिन from plants and animals and they are obtained by decomposition of plants and animal waste and does not affect the water bodies, does not affect soil fertility in long run, does not affect the ground water। अगर हम केमिकल और बायो फर्टिलाइजर या नेचुरल फर्टिलाइजर या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की बात करें तो डेफिनेटली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या बायो फर्टिलाइजर्स आर द विनर। नाउ fourth category according to the production site of production is construction waste। कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट्स के में प्रोड्यूस होते हैं मेनली ड्यू टू डिमोलिशन एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, उनको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन वेस्ट। अब जैसे कि डिगिंग ऑफ द अर्थ फॉर फाउंडेशन ऑफ हाई, वेस्ट मटेरियल फाउंडेशन, जब बिल्डिंग की फाउंडेशन होती है उसको बनाने में निकलता है और इस प्रोसेस में बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है विच आर पाइल्ड अप एंड आर नोन एज ओवर डम्प्स। These overdumps spoil the ecology of the site where they are dumped and take a long time। ये इस तरह के जो वेस्ट होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन वेस्ट मटेरियल होते हैं, ये बेसिकली उस सराउंडिंग एरिया की या उस इन्वायरमेंट की जो इकोलॉजी है उसको ये स्पॉइल कर देते हैं और इसके बाद ये बहुत टाइम लेते हैं इस डिकम्पोज होने में। एंड टाइप ऑफ वेजिटेशन, सम एग्जाम्पल ऑफ कंस्ट्रक्शन वेस्ट जैसे कि ब्रिक्स हैं, पाइप्स हैं, वुड, प्लास्टिक पीसेस, एस्बेस्टॉस, मार्बल, टाइल्स, ये डिमोलिशन वेस्ट के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ नेक्स्ट इज माइनिंग वेस्ट। अब उन वेस्ट की हम बात करते हैं जो माइनिंग वेस्ट होते हैं, जो माइनिंग एक्टिविटीज के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं वेस्ट मटेरियल। ये जो वेस्ट मटेरियल है दे आर जनरेटेड ड्यूरिंग माइनिंग ऑपरेशन, execution etc. They are called mining waste and they include tailing, slag heaps, debris। ये इस तरह के वेस्ट होते हैं and these waste spoil the ecology of the place by inundating the vegetation of the place। उस जगह की जहां पर माइनिंग एक्टिविटी हो रही है उस जगह पर जो भी वेजिटेशन होता है उसको ये बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देते हैं। The ore or minerals may reach the water bodies और ग्राउंड वाटर एंड कंटामिनेट। और इस माइनिंग एक्टिविटीज में जो ओर या मिनरल्स होते हैं वो बेसिकली ग्राउंड वाटर को या जो नियर बाय वाटर बॉडीज होती हैं उसको ये कंटामिनेट कर देते हैं। अब 6 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट इज हैजार्डस और टॉक्सिक वेस्ट। Now certain waste are classified into hazardous or toxic waste as they pose a serious threat to human health and environment। ये वो वेस्ट होते हैं जो ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ही सीरियसली इम्पैक्ट करते हैं। एंड द वेस्ट में बी लिक्विड, सॉलिड और स्लज। अब इन वेस्ट में क्या होता है कि लिक्विड वेस्ट हो सकते हैं, सॉलिड वेस्ट हो सकते हैं, ये स्लज हो सकते हैं एंड दे कंटेन केमिकल्स, हेवी मेटल्स, रेडिएशंस, डेंजरस पैथोजेंस और अदर टॉक्सिन्स। तो जो टॉक्सिक वेस्ट होते हैं
ये इसमें सब तरह के जो भी केमिकल्स होते हैं, जो टॉक्सिन्स होते हैं, लिक्विड होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, रेडिएशंस हैं, या जो भी हेवी मेटल्स हैं, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं. इवन हाउस होल्ड जेनरेट हैजार्डस वेस्ट फ्रॉम आइटम्स सच एज बैटरीज, यूज कंप्यूटर इक्विपमेंट एंड लेफ्ट ओवर पेंट्स और पेस्टिसाइड्स. अब अगर हम देखें तो हमारे जो डोमेस्टिक वेस्ट हैं या हाउस होल्ड जो वेस्ट होता है उसमें भी कुछ हैजार्डस वेस्ट होते हैं, जैसे कि बैटरीज होती हैं, यूज्ड कंप्यूटर होते हैं, उसके इक्विपमेंट्स होते हैं, लेफ्ट ओवर पेंट्स हैं या पेस्टिसाइड्स हैं, ये भी हैजार्डस वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं. एंड दीज जनरली कम फ्रॉम इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल, एग्रीकल्चर. And these may be pollutants like mercury, lead, halogenated fluorocarbons, toxins, asbestos, polychlorinated biphenyls, PCBs and vinyl chloride. तो ये इस तरह के वेस्ट में मरकरी हो सकता है, लेड है, हेलोजेनेटेड फ्लोरोकार्बन्स होते हैं, या इस तरह के बहुत सारे केमिकल्स होते हैं. एंड दीज वेस्ट नीड प्रॉपर डिस्पोजल as most of them enter the food chain. अब इस तरह के वेस्ट का अगर प्रॉपर डिस्पोजल नहीं हुआ तो ये फूड चेन में एंटर करते हैं, और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंटली ये बायोमैग्निफिकेशन एक फिनोमिना है, उसको ये प्रोड्यूस करते हैं कि हमारे फूड चेन में इस तरह के मेटल्स जो हैं वो धीरे धीरे मैग्नीफाई होते जाते हैं. एंड दे कैन बी कार्सिनोजेन. कार्सिनोजेन का मतलब ये है कि ये कैंसर कॉजिंग होते हैं, एंड दे कैन कॉज फेलियर, ऑर्गन फेलियर और इवन डेथ. तो इस तरह के पॉल्यूटेंट्स या इस तरह के टॉक्सिक वेस्ट की वजह से कैंसर हो सकता है, इसकी वजह से ऑर्गन फेलियर हो सकता है, और कभी कभी डेथ भी हो सकती है. Now next category is of biomedical waste, and these are the waste that are generated from the activities performed in hospitals and diagnostic centers. हॉस्पिटल, नर्सिंग होम या जो क्लिनिक्स होते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर होते हैं, यहाँ से जो भी वेस्ट रिलीज होता है, प्रोड्यूस होता है, जैसे सिरिंजेस होती हैं, नीडल्स हैं, प्लास्टिक बॉटल्स हैं, बैंडेज, कॉटन, ग्लव्स, प्लास्टर, पैथोलॉजिकल वेस्ट जैसे ब्लड है, टिश्यू पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी फ्लूइड है, इस तरह के जो वेस्ट जनरेट होते हैं वो बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं. तो ये जो बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं ना, दीज वेस्ट नीड प्रॉपर डिस्पोजल बिकॉज दे मे कैरी डिजीजेस अलोंग विद द पैथोजेंस एंड दे हैव द पोटेंशियल ऑफ स्प्रेडिंग डिजीजेस. तो ये जो वेस्ट मटेरियल, बायोमेडिकल वेस्ट मटेरियल होते हैं, इनको बहुत ही प्रॉपरली इनको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, क्योंकि इनके थ्रू बहुत सारी डिजीजेस भी हो सकती हैं. नेक्स्ट कैटेगरी इज ई वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. नाउ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में क्या होता है कि एनी ब्रोकन और अनवांटेड इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में टीवी है, मोबाइल है, इस तरह की चीजें होती हैं. सिंस दीज वेस्ट components of such equipment are toxic and contain substances like lead, mercury, cadmium. अब इस तरह के जो ई वेस्ट होते हैं उसमें लेड हो सकता है, मर्करी हो सकता है, कैडमियम हो सकता है, एंड दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, एंड दे रिमेन इन द एनवायरमेंट अंटिल डिस्पोज्ड बाय अ सूटेबल मेथड. जब तक हम इनको किसी सूटेबल मेथड के थ्रू डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे तो ये थ्रू आउट द लाइफ एनवायरमेंट में रहते हैं. द IT कंपनीज आर मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ सच टाइप ऑफ वेस्ट मटेरियल. जो IT कंपनीज होती हैं वो मेजर कंट्रीब्यूटर हैं इस तरह के वेस्ट मटेरियल के लिए. Now the next category of waste is radioactive waste, and radioactive waste are the most hazardous waste and need to be handled carefully as they remain dangerous for thousands of years. And they are generated from X-ray machine in hospitals and airports, nuclear power plant from diagnostic and treatment of certain diseases in hospitals and diagnostic center. तो ये इस तरह के जो वेस्ट होते हैं ये बहुत ही हार्मफुल और डेंजरस वेस्ट होते हैं. और ये जो वेस्ट हैं एंड ये जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट से जनरेट होते हैं, एक्सरे मशीन्स होती हैं जहाँ जो हॉस्पिटल्स या एयरपोर्ट में इंस्टॉल की जाती हैं उसके थ्रू जनरेट होते हैं, और इसमें इसके थ्रू
जो बहुत सारे जैसे टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन है या एटॉमिक रिसर्च सेंटर हैं, ये भी सोर्स हैं. दीज आर द सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट. रेडियो एक्टिव वेस्ट आर हैजार्डस as they cause genetic and somatic variation in human beings. तो इसकी वजह से म्यूटेशंस हो सकते हैं. म्यूटेशन का मतलब है कि सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, और जिसकी वजह से बहुत सारी जनरेशन तक कुछ डिफॉर्मिटी हो सकती है. तो ये जो है बहुत ही डेंजरस वेस्ट मटेरियल होते हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट. Now coming to the impact of waste accumulation. अगर वेस्ट का accumulation होता रहा, अगर वेस्ट का हमारे सोसाइटी में वेस्ट ऐसे ही इकट्ठा होते रहे, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारी सोसाइटी पर, हमारे एनवायरनमेंट पर. Now the accumulation of waste has various impact on human beings and the ecosystem as a whole. Human being के ऊपर और ecosystem के ऊपर waste accumulation का क्या impact होगा, and this is very important. This portion is very important. Now accumulated solid waste when left untreated or uncared start decomposing. जैसे अगर हम उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं solid waste को, तो उनमें decomposition होने लगता है. A number of disease producing bacteria, virus and fungi grow on them. तो डिजीज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई उसके ऊपर ग्रो करते हैं क्योंकि वो उनका मीडियम होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, एंड दीज बिकम द कॉज ऑफ वेरियस डिजीजेस टू ह्यूमन बींग्स. तो ये एक जो वेस्ट मटेरियल एक्यूमुलेट हो जाता है, ये ह्यूमन डिजीज का एक बहुत बड़ा रीजन है. दे ऑफन एमिट फाउल स्मेल ड्यू टू रॉटिंग. जब ये वेस्ट जो एक्यूमुलेटेड वेस्ट है, जब ये सड़ने लगता है तो इससे बहुत ही खराब सी स्मेल आती है, बहुत बदबू आने लगती है. एंड दे अट्रैक्ट फ्लाइज, इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स विच बिकम कैरियर ऑफ डिजीजेस. इनकी वजह से फ्लाइज हैं, जो मक्खियां हैं, इंसेक्ट्स हैं या रोडेंट्स हैं, चूहे हैं, ये बहुत प्रोड्यूस हो जाते हैं और ये एक तरह से कैरियर होते हैं डिजीज का. कैरियर मतलब जिनको हम वेक्टर बोलते हैं. ओपन डंप ऑल्सो ruin द नेचुरल ब्यूटी एंड एस्थेटिक्स ऑफ द लैंड. जो भी ओपन डंप्स होते हैं, जो ओपन लैंडफिल्स होती हैं, जहाँ पे खुले में ही गार्बेज को डंप कर दिया जाता है, तो उसकी वजह से नेचुरल ब्यूटी भी खराब होती है और उस लैंड की जो भी पॉल्यूशन क्रिएट होता है, पॉल्यूशन बहुत होता है उस लैंड में. द टॉक्सिक केमिकल्स कॉज सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन. ये जब भी वेस्ट एक्यूमुलेशन होता है उसके थ्रू जो केमिकल्स रिलीज होते हैं वो सॉइल और वाटर पोल्यूशन का रीजन होते हैं. एंड व्हेन दे रीच ग्राउंड वाटर, तो जब ये ग्राउंड वाटर में पहुंचते हैं तो ग्राउंड वाटर को भी कंटामिनेट करते हैं. एंड दे एंटर द फूड चेन. तो ये फूड चेन में एंटर करते हैं. दे कॉज डिजीज एंड डेथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स. नाउ वेस्ट वाटर एक फिनोमिना है जिस फिनोमिना को कहते हैं यूट्रोफिकेशन. तो जो वेस्ट वाटर है फ्रॉम द सीवेज डिप्लीट द वाटर ऑफ इट्स ऑक्सीजन कंटेंट कॉजिंग यूट्रोफिकेशन. जो वाटर बॉडीज होती हैं उसमें से ऑक्सीजन कंटेंट को ये डिप्लीट कर देते हैं, जो भी वेस्ट वाटर होता है, जो सीवेज वाटर होता है, और इसकी वजह से एक फिनोमिना है जिसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन, ये होता है. Now toxic waste accumulate in soil and water and they cause biomagnification. ये biomagnification मतलब कि जो भी मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि ये हमारी फूड चेन में बहुत ही ट्रेस अमाउंट में एंटर करते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे फूड चेन आगे बढ़ती रहती है तो ये इनका एक मैग्निफिकेशन होता है, इनका जो नंबर है वो इंक्रीज होता है, इनका अमाउंट इंक्रीज होता है, which means increase in the concentration of toxic substances along the food chain. अब ये हमारे फूड चेन में एंटर हो जाते हैं इस तरह के वेस्ट मटेरियल या टॉक्सिन्स जो होते हैं, और ये फिर इसके बाद ये इंक्रीज होने लगते हैं, इनका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो इंक्रीज होने लगता है. एंड दिस में कॉज डिजीज एंड इवन डेथ व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस बिकम लीथल. नॉट टॉक्सिक particulate matter emitted from the industries may cause diseases of the respiratory system like asbestosis, silicosis, berylliosis. ये इस तरह की जो respiratory tract से related diseases होती हैं उसको भी cause करते हैं. Now next is treatment of waste. Treatment of waste या management of waste material. Now treatment of waste के बहुत सारे methods हैं
और इनमें जो कुछ मेथड्स हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहला मेथड है ओपन डंपिंग। ओपन डंपिंग इज अ चीपेस्ट मेथड। ये बहुत ही सबसे कह सकते हैं कि सस्ता मेथड है। इसमें कोई भी रेवेन्यू ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है। इट इज़ द चीपेस्ट मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल इन विच द वेस्ट मटीरियल आर डम्प्ड इन ओपन लैंड असाइन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक ओपन लैंड को असाइन कर देती है कि अभी जितनी भी सोसाइटी का, कॉलोनी का, सिटी का जितना भी कूड़ा है, जितना भी गार्बेज है, वो वहां पर डंप होगा। और ये यूजली दे आर फार फ्रॉम द सिटी, ये सिटी से बहुत दूर होते हैं एंड इट डज नॉट नीड मच प्लानिंग। इनके लिए प्लानिंग की कोई जरूरत नहीं होती। द वेस्ट इज जस्ट कैरीड टू द साइट एंड डम्प्ड विच में लेटर बी बर्न टू डिस्पोज इट कम्प्लीटली। तो इसमें कोई इतनी प्लानिंग की जरूरत नहीं होती है। सीधे जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है पूरे सिटी से इकट्ठा किया जाता है और उसको उसी साइट पर डंप कर दिया जाता है। अब ओपन डंपिंग के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? ओपन साइट स्पॉइल द एस्थेटिक्स ऑफ द एरिया। एस्थेटिक का मतलब है जो उस एरिया की ब्यूटी होती है वो ये जो ओपन लैंडफिल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ओपन डंपिंग का सेकेंड डिसएडवांटेज ये है कि इट बिकम्स ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स। Third disadvantage is they give out foul odor which when the waste start rotting, जब सड़ना शुरू होता है तो बहुत ही खराब स्मेल आनी शुरू हो जाती है। एंड द बर्निंग ऑफ द वेस्ट इन ओपन डंप कॉज एयर पोल्यूशन। अगर हम वेस्ट को खुले मैदान में अगर उसकी बर्निंग करेंगे, उसको जलाएंगे तो उससे एयर पोल्यूशन होता है। एंड ड्यूरिंग रेनफॉल द वेस्ट मे बी कैरीड टू नियर बाय वाटर बॉडीज एंड कंटामिनेट देम। जब भी बारिश होती है तो उससे क्या होता है कि ये जो ओपन वेस्ट है जो यहाँ पे इकट्ठा हुआ है वो आसपास की वाटर बॉडीज में इकट्ठा हो जाता है और कंटामिनेट कर देता है। Now second method is landfills. So landfills, as the name suggests, is a method where the land is dug up, filled with waste and covered with soil again. Landfills का मतलब होता है कि ये यहाँ पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाते हैं और जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको इन गड्ढों में डाल दिया जाता है और इसके ऊपर उसको मिट्टी से कवर कर दिया जाता है। अब लैंडफिल्स जो हैं बेसिकली यहाँ पे एक ओपन लैंडफिल्स होती हैं जिनको हम ओपन डंपिंग बोलते हैं और दूसरी होती है सैनिटरी लैंडफिल। सैनिटरी लैंडफिल में क्या होता है कि ये जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको कुछ बड़े बड़े जो गनी बैग्स होते हैं उसमें भर के अंदर बरी कर दिया जाता है, मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है। एंड दिस मेथड इज प्रेफर्ड टू ओपन डंपिंग। ये मेथड ओपन डंपिंग से ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि ओपन डंपिंग में वेस्ट मटेरियल जो होता है वो बेसिकली उनको ऐसे खुले में इकट्ठा कर देते हैं और उसके ऊपर बस सॉइल डाल देते हैं, मिट्टी से उसको कवर कर देते हैं। अब लैंडफिल्स के एडवांटेजेस देखते हैं। द साइट इज कवर्ड विद अर्थ। अर्थ मतलब सॉइल विच प्रिवेंट्स इंसेक्ट एंड रोडेंट्स। जो लैंडफिल्स है इसमें क्या होता है कि गार्बेज को बड़े बड़े गड्ढों में डालने के बाद इसको सॉइल से या मिट्टी से कवर कर दिया जाता है। लेस चांसेस ऑफ स्प्रेड ऑफ पैथोजेनिक डिजीजेस एज वेक्टर आर नॉट एबल टू रीच द वेस्ट। इस मेथड में बहुत कम चांसेस होते हैं डिजीज स्प्रेड होने के। द वेस्ट इज डिस्पोज्ड विदाउट कॉजिंग एनी पब्लिक हेल्थ हैजार्ड। तो यहाँ पे वेस्ट का मैनेजमेंट भी हो गया, वेस्ट का डिस्पोज ऑफ भी हो गया और पब्लिक को या ह्यूमन बींग्स को, इन्वायरमेंट को कोई इतना नुकसान भी नहीं होता है। नो फाउल स्मेल ड्यू टू द रॉटिंग ऑफ गार्बेज। जब गार्बेज सड़ता है तो इस तरह से कोई खराब स्मेल भी नहीं आती है। द मीथेन गैस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट कैन बी यूज्ड एज अ नॉन पॉल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी। जब लैंडफिल्स में जो वेस्ट मटेरियल है उसका डिकम्पोजिशन होता है तो मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। जो मीथेन गैस होती है उसको एक तरह से हम एक सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में भी यूज कर सकते हैं एंड इट कैन बी यूज्ड इन बॉयलर्स। अब इस मीथेन गैस को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? बॉयलर्स में यूज कर सकते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन्स पे यूज कर सकते हैं, गैस टरबाइन में कर सकते हैं, फ्यूल सेल में कर सकते हैं। Next advantage is the land after decomposition and compaction of waste can be used for suitably. अब इसके बाद क्या होता है कि अगर
जो लैंडफिल्स होती हैं, जब लैंडफिल का टाइम कंप्लीट हो जाता है, उसका एक लाइफ स्पैन होता है, वो कंप्लीट हो जाता है, या कह सकते हैं कि जितना भी गार्बेज है उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, तो हम उस लैंड को किसी दूसरे पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ लैंडफिल्स. Now methane and carbon dioxide are two major gases. यहाँ पे जो landfills में जो gases produce होती हैं वो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं from the decomposition of organic fraction of solid waste in the landfill. तो अब जो मीथेन गैस है which has a 21-fold global warming, जैसा कि हमको पता है कि मीथेन गैस is a major greenhouse gas और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी होता है, एंड इट इज वेरी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों ही प्रोड्यूस होती हैं और दोनों ही ग्रीन हाउस गैसेस हैं जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है. एंड लैंडफिल्स हैव बीन इम्प्लीकेटेड एज अ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक मीथेन इन द वर्ल्ड. अगर हम लार्जेस्ट सोर्स ऑफ मीथेन की बात करें तो वो लैंडफिल्स होते हैं, leading to a natural phenomena called global warming, or methane gas is directly responsible for global warming. Now next disadvantage is, apart from global warming, traditional landfills like open dumps pose serious threat to aquatic environment. ग्लोबल वार्मिंग के अलावा जो ओपन डम्प्स होते हैं, जो ओपन लैंडफिल्स होती हैं, उसकी वजह से एक्वेटिक एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा खतरा होता है. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनवायरमेंटल कंसर्न एसोसिएटेड विद सैनिटरी लैंडफिलिंग इज द जनरेशन ऑफ लीचेट. ड्यूरिंग डिग्रेडेशन प्रोसेस 1 ton of landfill soil solid waste generate about 0.2 meter cube of toxic leachate. Depending on the type of waste and seasonal climate, the leachate threatens the marine environment, enter the food chain, and is lethal to some aquatic species. So जो लीचेट है बेसिकली ये कुछ इस तरह के मटेरियल्स होते हैं जो ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट करते हैं, जो मेरीन इकोसिस्टम को, एक्वेटिक इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा थ्रेट करते हैं. Now a landfill site may still produce leachate with a high concentration of ammonia for over 50 years after filling operation have ceased. अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना है कि जो लैंडफिल साइट्स होती हैं, अगर उन लैंडफिल साइट्स अगर ये कंप्लीट भी हो जाती हैं, उस पर कोई दूसरा एक्टिविटी होती है, उसके बाद भी अमोनिया जो है वो रिलीज होती रहती है और ये करीब करीब 50 साल तक रिलीज होती है. इफ नॉट प्रॉपरली ट्रीटेड, लीचेट सीपिंग फ्रॉम द लैंडफिल कैन एंटर द underlying water, groundwater, posing potentially serious hazard to the environment and to the public health. अगर इसको अच्छे से डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया, प्रॉपरली इसको मैनेज नहीं किया गया, तो ये जो लीचेट होते हैं ये ग्राउंड वाटर में एंटर कर जाते हैं और हम ये कह सकते हैं कि ये ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट कर देते हैं. The leachate often enters the agriculture field along with runoff during rainfall. जैसे जब रेनफॉल होता है तो ये जो लीचेट होते हैं जिसमें कि कुछ केमिकल्स भी होते हैं, ये एग्रीकल्चर फील्ड में मिक्स हो जाते हैं, सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, एंड दे एंटर द फूड चेन एंड अफेक्ट द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स. Now, sanitary landfills are not fit for human settlement because methane and carbon dioxide start coming out within 1 year with rapid decomposition of waste start. अब अगर हम ये कहते हैं कि ओपन डंपिंग से ज़्यादा अच्छे सैनिटरी लैंडफिल्स होते हैं, पर इसका भी एक डिसएडवांटेज ये है सैनिटरी लैंडफिल का कि 1 साल के बाद, जब डिकम्पोजिशन होने के 1 साल के बाद भी वहाँ पर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस रिलीज होती रहती हैं. Now sanitary landfills means disposal of solid waste in special structure called landfills, covering it with soil and isolating the waste from the environment until the waste is rendered innoxious through the biological, chemical and physical process of nature. Sanitary landfills require compaction of waste, daily covering of waste with soil or other material, and control and prevention of negative impacts on public health and environment. Now this is all about the sanitary landfill, which is
very good as compared to the open dumping. And there must be at least 3 meters separation between the bottom of landfill and the underlying bedrock और ग्राउंड वाटर टेबल. तो जब ये सैनिटरी लैंडफिल बनाते हैं तो कम से कम ये ध्यान रखना चाहिए कि ग्राउंड वाटर टेबल और जो भी जितनी भी डिगिंग की है उसमें कम से कम 3 मीटर का एक सेपरेशन या गैप होना चाहिए. A secure hazardous waste landfill must have two impermeable liners and leachate collection system. जो भी इस तरह की लैंडफिल्स होती हैं जहाँ पे लीचेट वगैरह का रिलीज बहुत होता है, तो इसमें impermeable लाइंस बनाई जाती हैं जो लीचेट को कलेक्ट कर देती हैं. Now collected leachate is pumped to a treatment plant in order to reduce the amount of leachate in the fill and minimize the potential for environmental damage. And impermeable cap or cover is placed over a finished landfill. A groundwater monitoring system that includes a series of deep wells drilling in and around the site is also required. Now, so this is all about the collection of leachate in order to reduce the harmful impact of chemicals included in leachate. Now the third method is composting, which is also known as biological treatment. Now composting is a disposal method employed to the organic waste. It is the aerobic decomposition of organic waste with the help of microorganisms. The waste is converted into useful material which can be used as biomanure. तो ये जो कंपोस्टिंग है बेसिकली, जिसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, इसमें क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल होता है, जो गार्बेज में जितना भी ऑर्गेनिक पोर्शन होता है, उसकी एरोबिक डिकम्पोजिशन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से. इसमें क्या होता है कि वेस्ट मटेरियल जो है वो यूजफुल मटेरियल जैसे कि बायो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है. कमिंग टू द एडवांटेजेस ऑफ कंपोस्टिंग, इट इज इको फ्रेंडली मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. इट इज अ चीप मेथड, बहुत ही रीजनेबल इकोनॉमिक मेथड है. द वेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू ह्यूमस विच इज अ गुड बायो फर्टिलाइजर. वेस्ट जितना भी होता है कंपोस्टिंग में वो ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है एंड ह्यूमस इज अ गुड बायो फर्टिलाइजर. No external energy or chemical required for the process of decomposition. क्योंकि ये जो decomposition process है ये aerobic process होता है और इसमें कोई भी external source of energy की requirement नहीं होती है, इसीलिए ये eco-friendly method है. And it does not require a large area for the disposal of waste. इस तरह कंपोस्टिंग में अगर हम देखें तो हमको बहुत ज़्यादा एरिया नहीं चाहिए, बहुत ही कम या बहुत ही लिमिटेड एरिया में भी डिकम्पोस्टिंग हो सकती है. नाउ नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपोस्टिंग. बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट या कंपोस्टिंग के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? दिस मेथड कांट बी यूज्ड फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जो कंपोस्टिंग है वो सिर्फ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल के ऊपर होती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल के ऊपर नहीं होती है. And it is not suitable method for toxic, hazardous और biomedical waste. Composting toxic, hazardous और biomedical waste के लिए बिल्कुल भी suitable method नहीं है. And the process may result in foul smell. इस process के through क्या होता है कि बहुत ही खराब सी smell आती है. Now next method is vermicomposting. The term vermicomposting means the use of earthworm. यहाँ पर हम किसका यूज कर रहे हैं? अर्थवॉर्म का यूज कर रहे हैं फॉर कंपोस्टिंग ऑफ ऑर्गेनिक रेजिड्यू. अर्थवॉर्म्स कैन कंज्यूम प्रैक्टिकली ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. अर्थवॉर्म्स जो होते हैं वो सब तरह के ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर लेते हैं एंड दे कैन ईट देयर ओन बॉडी वेट पर डे. और इतना मैटर वो कंज्यूम करते हैं अपनी बॉडी वेट के बराबर पर डे. वो जो भी वेस्ट मैटर होता है या ऑर्गेनिक रेजिड्यू होता है उसको ये कंज्यूम कर लेते हैं. द एक्सक्रीटा मतलब कि जो कास्टिंग या जो कह सकते हैं कि जो भी वेस्ट मटेरियल होता है ऑफ द वॉर्म आर रिच इन नाइट्रेट. जो भी वेस्ट मटेरियल है अर्थवॉर्म का वो नाइट्रेट रिच होता है एंड अवेलेबल फॉर्म्स इज पोटेशियम
phosphorus, potassium, calcium, magnesium. The compost takes about a month to get ready and is humus rich. ये जो वर्मी कंपोस्ट है उसको ऑलमोस्ट 1 मंथ लगता है रेडी होने के लिए एंड द कंपोस्ट टेक्स अबाउट अ मंथ टू गेट रेडी एंड इट इज वेरी ह्यूमस रिच. नाउ इट्स कंटेनिंग वाटर. अब इसमें क्या होता है, वाटर, suitable nutrients. वर्मी कंपोस्ट इज एन एक्सीलेंट न्यूट्रिएंट रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड सॉइल कंडीशनर. जो वर्मी कंपोस्ट है वो एक तरह से फर्टिलाइजर का भी काम करता है और सॉइल कंडीशनर का भी काम करता है. द अर्थवॉर्म्स ऑल्सो इंक्रीज द सॉइल एरेशन. जो अर्थवॉर्म्स होते हैं जिनको नेचुरल फार्मर्स भी बोलते हैं, वो सॉइल एरेशन को इंक्रीज करते हैं. द वर्मी कंपोस्ट also improves the water holding capacity of the soil, enhances germination, plant growth and crop yield. So these are the very good method. Now next is incineration. Next method is incineration, and incineration is the burning of waste at high temperature. इंसिनरेशन जो मेथड है बेसिकली वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है, जहां पर वेस्ट मटेरियल को बहुत ही हाई टेम्परेचर पर ट्रीट किया जाता है यूजिंग हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज इन अ क्लोज चेम्बर्ड. और ये जो क्लोज चेम्बर्ड होते हैं, चेम्बर्स होते हैं, इनको बोलते हैं इंसिनरेटर. एंड दिस मेथड इज सुटेबल फॉर non-degradable and hazardous waste material from the industries and biomedical waste. तो ये जितने भी बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं, इंडस्ट्रीज वेस्ट होते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल होते हैं, उनके लिए ये मेथड यूज किया जाता है. कमिंग टू द एडवांटेजेस ऑफ इंसिनरेशन, suitable for disposal of toxic and biomedical waste, suitable for disposal of non-biodegradable waste material which cannot be decomposed naturally. It reduces the space required for disposal of waste by conventional ways like open dumping and landfill. Incineration में क्या होता है कि space की requirement बहुत कम होती है and less time required for disposal. Time भी बहुत कम लगता है. Suitable for disposal of large quantity of industrial waste. इंडस्ट्रियल वेस्ट जो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है उसके लिए बहुत ही सूटेबल मेथड है. एंड आफ्टर बर्निंग द लेफ्ट ओवर मटेरियल लाइक गैसेस और मेटल कैन बी रिसाइकल्ड. जब इंसिनरेशन के बाद जो बर्निंग के बाद जो भी लेफ्ट ओवर मटेरियल्स निकलते हैं जैसे कि गैसेस होती हैं या मेटल्स होती हैं, उनकी रिसाइकलिंग कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ इंसिनरेशन, द इंस्टॉलेशन, operation and maintenance cost is very high, requires a lot of energy to run the incinerator. जैसे हमको पता है कि इंसिनरेटर में क्या होता है कि बहुत ही हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस किया जाता है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. इट produces a lot of polluting gases which may also contain toxic particulate. And it produce a large amount of fly ash. Fly ash बहुत ही छोटे छोटे particles होते हैं, वो भी produce होते हैं जो respiratory diseases cause करते हैं, जिनसे बहुत ज़्यादा soil pollution होता है. तो ये सारी चीज़ें. Now next method is to dispose of or to manage the waste material is segregation. Segregation का मतलब होता है separate according to some category or classification ऑफ वेस्ट मटेरियल. अब क्लासिफिकेशन जो सेपरेशन है उसके बहुत अलग अलग क्राइटेरिया हैं, जैसे कि हम वेस्ट को बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्लासिफाई करते हैं या सेग्रीगेट कर दें. हैजार्डस जो डेंजरस मटेरियल होते हैं, रिसाइक्लेबल मटेरियल को अलग कर दें, रीयूजेबल मटेरियल को अलग कर दें. एंड दे कैन बी सेपरेटेड और सेग्रीगेटेड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट बिन्स. अलग अलग बिन्स में हम उनको सेपरेट कर सकते हैं. एंड वेरियस बिन्स कैन बी यूज टू सेपरेट पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, ऑर्गेनिक वेस्ट. इसी तरह से हम अलग अलग बिन्स को भी यूज कर सकते हैं पेपर को अलग करने के लिए, प्लास्टिक को, ग्लास को, मेटल को, ऑर्गेनिक वेस्ट को अलग करने के लिए. अब
सेपरेशन या सेग्रीगेशन मेथड के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं? द एडवांटेज ऑफ सेग्रीगेटिंग waste is that it reduces the loads of waste disposal. The advantage of segregating waste is that it reduces the load of waste disposal and management by removing the biodegradable and recyclable waste material. The non-biodegradable and hazardous waste can then be disposed appropriately. It makes the waste disposal easier and cost effective. ये जो segregation method है, इससे waste का जो separation है या disposal है बहुत easy है और ये बहुत cost effective है. It makes reduce, reuse, recycling of waste easier. Now next is bioremediation. Various products जो chemical products होते हैं generated by the modern technologies are posing a great threat to the natural breakdown processes and the natural mechanisms of maintaining ecological balance as they are complex in nature and are difficult to break down. जो बहुत सारे इस तरह जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के थ्रू अब इस समय जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का टाइम है और वेस्ट मटेरियल भी अलग अलग तरह से जनरेट हो रहे हैं जो नेचुरल मैकेनिज्म जिनको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है, मतलब जिनको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है और जो इकोलॉजिकल बैलेंस को बहुत ज़्यादा थ्रेट करते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और इनका क्योंकि इनका ब्रेकडाउन बहुत मुश्किल होता है. The application of biotechnology has helped in the environmental management such as hazardous contaminants by bioremediation. And this process is बायो रेमिडिएशन की प्रोसेस को बायो रिस्टोरेशन या बायो ट्रीटमेंट भी कहते हैं. Now bio remediation involves the use of naturally existing microorganisms to speed up the breaking down of biological substances and degradation of various material. So bio remediation में क्या होता है कि जो naturally existing जो naturally microorganism होते हैं उनको breakdown की process को speed up करने के लिए use किया जाता है. The basic principle of bioremediation is the breaking down of organic waste into simple organic compounds like carbon dioxide, water, salt and other harmless products. जो एक सिंपल सा एक प्रिंसिपल है बायोरेमिडिएशन का वो ये है कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उनको सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सॉल्ट है या और दूसरे जो हार्मलेस प्रोडक्ट्स हैं उसमें उनको कन्वर्ट किया जाता है. Now next is bioremediation can help clean up the environment in two ways. अब bioremediation environment को clean करने में किस तरह से helpful है तो यहाँ पर सबसे पहले promotion of microbial growth in situ can be achieved by addition of nutrients. तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखना है कि बायो रेमिडिएशन किस तरह से एनवायरनमेंट को क्लीन कर रहा है. तो जो बायो रेमिडिएशन के थ्रू जो माइक्रोबियल ग्रोथ है, इन सीटू ग्रोथ है, इन सीटू मतलब कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट में जैसे कि सॉइल में जो ग्रोथ हो रही है माइक्रोब्स की या माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स की उनको प्रमोट करना. And over a period of time the microbes used up these compounds thus degrading them. तो अब क्या होता है कि धीरे धीरे जब ये माइक्रोब्स सॉइल में मिक्स हो जाते हैं तो जितने भी जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं उनको धीरे धीरे ये डिग्रेड करते हैं. Now second option is to genetically engineered microorganisms which can degrade organic pollutant मॉलिक्यूल्स. अब यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा कि हम नेचुरल माइक्रोब्स को यूज कर रहे हैं और दूसरा जो मेथड है उसमें हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब्स को यूज कर रहे हैं. इसमें भी बहुत सारे अलग अलग जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब्स का मतलब है कि हम उसको लैब में उनको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, उनके जीन स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो इस तरह से हम उसको यूज करते हैं. And the next way, plants are also being used to clean up metal infested site.
दिस प्रोसेस इज रिफर्ड टू एज फाइटोरेमिडिएशन। एक और टर्म है फाइटोरेमिडिएशन, जहां पर प्लांट्स को यूज करते हैं। जो कुछ ऐसी साइट्स होती हैं जहां पे मेटल्स का एक्यूमुलेशन बहुत हो जाता है, तो वहां पर प्लांट्स को यूज करते हैं मेटल को थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए। नाउ अगेन दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। Problems of solid management, solid waste management. Problems of solid waste management in India. इंडिया में सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसको हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ सेग्रीगेशन प्रैक्टिसेस। मतलब कि यहाँ पर हम जितना भी गार्बेज है, जितनी भी टाइप्स का गार्बेज है, एक ही बिन में डाल देते हैं, सेग्रीगेट नहीं करते। लैक ऑफ प्रॉपर ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी। ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट की इस तरह की हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है कि हमको सब तरह का जो ड्राई गार्बेज है वो अलग रखना चाहिए, वेट गार्बेज अलग करना चाहिए, टॉक्सिक गार्बेज अलग करना चाहिए। Now the frequency of collection of waste is not regular and often the waste remain uncleared for a long time. यहाँ पर जो frequency of collection है waste का वो भी daily नहीं है, daily waste collect नहीं होता है। तो इससे क्या होता है कि waste जो है वो एक ही जगह पर बहुत लंबे टाइम तक इकट्ठा रहता है। Inadequate labor and transport facilities to clear the garbage. यहाँ पे मैन पावर की बहुत कमी है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी की बहुत कमी है गार्बेज को साफ करने के लिए। लैक ऑफ प्रॉपर एंड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रीटमेंट फैसिलिटी। इस तरह की फैसिलिटी की भी बहुत कमी है। पुअर रेगुलेटिव मेजर्स हैं। द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बीच में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, कमिटमेंट भी नहीं है। इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। एंड इनएडिक्वेट अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अमंग द पीपल हैंडलिंग वेस्ट, inadequate pressure from society, environmental advocacy groups and organization towards improper waste disposal. Now next is treatment of waste water. Waste water का treatment यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स होते हैं। एक प्राइमरी ट्रीटमेंट है, नेक्स्ट इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट, फिर टर्शरी ट्रीटमेंट होता है, इसके बाद रिमूवल ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ कंटामिनेट्स from the wastewater released from the household and industries is referred as wastewater treatment. The objective of doing wastewater treatment is to treat it and make it clean and environmentally non-harmful before releasing into the water bodies. अब वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है? तो वेस्ट वाटर में हमको पता है कि जो अलग अलग सोर्सेज से वेस्ट वाटर कलेक्ट होता है उसमें बहुत सारे कंटामिनेंट्स होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तो जो नियर बाय वाटर बॉडी में उस पानी को रिलीज करने से पहले उसको क्लीन करना चाहिए, जिससे कि एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान ना हो, ह्यूमन बीइंग को भी कोई नुकसान ना हो। तो इसको कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। तो यहाँ पे 3 मेन प्रोसेस होते हैं इस ट्रीटमेंट के। एक होता है फिजिकल ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड केमिकल ट्रीटमेंट। नाउ द प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है कि रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड एंड पार्टिकुलेट मैटर। जो भी सीवेज में या जो भी वेस्ट वाटर में इस तरह के मैटर होते हैं, थोड़े से बड़े पार्टिकल्स होते हैं जो सस्पेंड हो जाते हैं पानी में, उनको रिमूव करना। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है कि रिमूवल ऑफ बायोलॉजिकल मैटर, जो भी बायोलॉजिकल मैटर होता है उसको रिमूव करना। इसके बाद टर्शरी ट्रीटमेंट में जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उसको रिमूव करना। तो you just go through all 3 processes and just read it once. And now the next is the removal of biodegradable organics. Biodegradable organic material जो हैं जिनमें प्लांट्स या एनिमल ओरिजिन के जो मटेरियल्स होते हैं बेसिकली उनको रिमूव करना। तो ये एक टर्शरी ट्रीटमेंट के बाद एक जो स्टेज होती है वो आती है। इसमें क्या होता है कि द प्रेजेंस ऑफ क्लीनिंग एजेंट, डिसइंफेक्टेंट। इसमें क्या होता है कि जो क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, इनको ये जो जितनी चीजें मिली होती हैं
इनको रिमूव करना, और एंटीबायोटिक्स कैन हैव डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट्स ऑन ट्रीटमेंट प्रोसेस, तो इन सारी चीज़ों को रिमूव करना. Now, activated sludge process. Activated sludge is a biochemical process for treating sewage and industrial wastewater that uses air and microorganisms to biologically oxidize organic pollutants, producing a waste sludge containing the oxidized material. In general, an activated sludge process include, जो activated sludge process है उसमें कौन कौन से steps होते हैं. An aeration tank where the air or oxygen is injected and thoroughly mixed into the wastewater. A settling tank, usually referred to as a clarifier or settler, to allow the waste sludge to settle. Part of the waste sludge is recycled to the aeration tank and the remaining waste sludge is removed for further treatment and ultimate disposal. तो शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इज अ टाइप ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर ट्रीटिंग सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर using aeration and a biological floc composed of bacteria and protozoa. Now next is policies of waste dumping. So India is the first country that has made constitutional provision for the environment in order to manage hazardous waste, mainly solid, semi-solid and other industrial waste which are not covered by the Water and Air Acts, and also to enables the authorities to control handling, treatment, transport and disposal of waste is in an environmentally sound manner. Ministry of Environment and Forest, Government of India notify the hazardous waste management and handling rules. Now next is policies of waste dumping. तो ये कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी हैं related to waste dumping, and this is just only you can read. And now coming to the objectives, the main objective of Basel Convention. यहाँ पर अगर हम बासिल कन्वेंशन जो कि स्विट्जरलैंड में हुआ था उसको अगर उसके एम्स को देखें तो ओवरऑल गोल or aim of Basel Convention was to protect the human health and environment. The provision of the convention center around the following principle: the reduction of hazardous waste generation and the promotion of environmentally sound management of hazardous waste wherever the place of disposal, the restriction of transboundary movement of hazardous waste except where it is perceived to be in accordance with the principle of environmentally sound management, and a regulatory system applying to cases where transboundary movements are permissible. तो इसका ये मतलब है जो बसील कन्वेंशन था, the overall goal of the Basel Convention is to protect human health and the environment against the adverse effects that may result from the generation, transboundary movement and management of hazardous waste and other different types of waste.